जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद When we talk about one bid at a time, what are we bidding for? We are not talking about luxury apartments. We are not talking about luxury cars. We are not talking about penthouses. Rather, we are actually speaking about something more valuable. Yes, today we are talking about the championships. And I'm very proud and I'm very happy to say that this is Jet Synthesis Presents GEPL Season 3. ये हमारा क्रिकेट है. Official partner BY Lenscard, played on Real Cricket. Strategic partner Sky Sports, Global Music Junction. And you know, this is one of the best things. I'm super happy to say this. You should hear this one. That this is the world's only franchise-based e-cricket league where every gamer, every cricket fan has a chance to dream, has a chance to compete, has a chance to be here. This is huge. And when we talk about this, हम बात कर रहे हैं हमारा क्रिकेट क्या है? What is this हमारा क्रिकेट? हमने गली नुक्कड़ में क्रिकेट देखा है, हमने इंडियन टीम को खेलते देखा है. We have seen rivalries, we have seen heroes, and GPL is just an amazing combination of all of this. This is the new generation cricket. ये हमारा क्रिकेट है. But yes, we talk about GPL. I would like to call someone very important, the man, the visionary behind GPL. I would like to call Mr. Rajan Navani. Sir, I want you to be here and explain everyone why this season is bigger, better, and amazing as always. So, welcome. Thank you. Always a pleasure to be here with all of you, and welcome to GEPL Season 3. You know, you rightly said, ये हमारा cricket है. But you know, the question is, ये हम हैं कौन? You know, you'll always say, ये हम हैं जिनका passion ही उनका profession है. If you really look at the young people, all of you sitting here, this is your profession. You know, again you say, ये हम हैं कौन? जो trend of course follow करते हैं, but they are also creators of the trends, जो trend बनाते हैं, and all of you here are creating a new trend, creating something that has never been done before. And lastly, I think if I were to think of ये हम हैं कौन, I think ये जो हम हैं are the ones who of course जो अपने screen time पे काफ़ी you know सबसे ज़्यादा समय spend करते हैं, but they also उससे ज़्यादा उससे बड़े उनके dreams और सपने हैं. They are the big dreamers, they are the creators of the future of tomorrow. And you know, and then you know we have this famous movie, right? हम आपके हैं कौन? So in that light, हम आपके हैं कौन? So हम वो लोग हैं जो आपके सपनों को हकीकत में change करेंगे. And I think that's really what I believe. This is what e-cricket, this is what GEPL, this is what new heroes of a new sport, which the world has not even seen or understood clearly yet. But we are going to create that history. And you know, as many of you know, where we started with season 1, how we have evolved to season 2. Season 3 is bigger than ever before. And we had promised that when we ended season 2. And today we are going to announce 2 new teams to join the GEPL family. And these are 2 cities and 2 locations which are very critical, not only for the players, but for the fans and all of those who are going to engage with us here. We have the Kolkata Hawks, and the ownership of that lies with none other than the legendary music star of India, Sonu Nigam. And we have the Gujarat Wolves, who is again one of the, you know, one of esports biggest names, not only in India, but in the world, Scout, who is the owner of that team. So we have now got partners and commitments from people across the spectrum, right from Bollywood to cricket to music to esports to the creator economy to new builders of India to generational businesses of India.
the entire ecosystem is now participating economically to ensure कि आपकी जो कामयाबी है will reach greater and greater heights in the years to come. So with that, I just want to say that, as was mentioned, that, let the competition begin, let the bidding begin. Of course, I think this is probably the most critical stage of the formation of a strategy that will go on to win, a trophy that I know all of you have your eyes on, and one that, all of us are so excited to share with only the best athletes that there are. We have to recognize this is a sport where all of you have put in a lot of effort, time, pasina bolte hain na, to be able to achieve the best level, and we reward that meritocracy. So this trophy will be won by those who have put in that effort, who have put in that sincerity, who have truly imbibed the spirit of e-cricket in a manner that tomorrow, as we take this from one stage to another, each of you will lead to become the best in the world in this. We are all watching FIFA, right? Aajkal hum sab dekh rahe hain, and we have 48 teams from different countries. Today we have 8 teams from different cities in India. I am telling you and assuring you, with all of you, over the years, over the next decade, jitna bhi samay lage, we will work together to make this as big as that. We will have participation from countries, we will have participation from athletes all around the world, really saying, ye hamara cricket hai. All the best to all of you. May the auction begin. Thank you so much, sir. Taaliyan ho jaye ek baar. And we talked about this, and I'm going a bit off script, but thank you so much, sir, for this. ये ना हमें एक assurity देता है that yes, we are moving towards the right path. Gaming can actually be the career. Gaming can actually be the career for you, for me, for everyone. And cricket being the center, मुझे बहुत पसंद है game, and we are here. ये हमारा cricket है, ये नए generation का cricket है. But yeah, I guess this was our worst kept secret क्योंकि sir ने आते reveal कर दिया. We have 2 new teams this time. यानी competition वो और ज़्यादा बढ़ चुका है. We are talking about 100 players. We are talking about millions in the prize pool. And now when the competition is already rising up, बहुत मजा आने वाला है. बट चलिए, लेट्स हैव अ लुक. कौन सी टीम्स हमारे पास पहले से थी, और ये जो 2 नई टीमों की हम चर्चा कर रहे हैं, एक नजर इन पर भी डालते हैं. We already have Mr. Piyush Bansal for Delhi, and then we have Mr. Prashant for Bangalore. Then साथ में we have Mr. Nikhil Kamath, साथ में we have Mr. Ankit. And Anna, हम सबके प्यारे Pune Stallions को Anna is representing there. And again we have Mr. Amit Mehta for Hyderabad Rhinos. Then we have Mr. Arjun, Mr. Gopal, and Mr. Madhusudan. And with that we have Ms. Sara Tendulkar here. ये भी बहुत मजा आने वाला, because पिछले साल मुंबई ने बहुत tough competition दिया था. But एक second, हमने 2 नई टीम्स की बात की ना, वो 2 नई टीम्स कहाँ है? Let's have a look on those new teams. And फिर उसका चर्चा उन 2 टीमों के ऊपर भी करते हैं. Let's see, वो 2 टीमें कौन सी हैं? Ooh, Gujarat Wolves and Mr. Scout Tanmay Singh. I believe जिसने भी e-sports देखा है वो जानता है इस खिलाड़ी को. He's very competitive, and Scout always says कि he's playing to win. So might be this time Gujarat you have a very good chance. But एक और team भी तो थी. We have talked about one more. Did he mention Kolkata Hawks? Let's have a look on that also. Kolkata Hawks के भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, because वहाँ भी, like Mr. Rajan said, we have a legendary singer there. Yes, we are talking about Kolkata Hawks, and साथ में we are talking about Mr. Sonu Nigam. One of the legendary stars out there. So again, I think हम e-sports से लेके entertainment से लेके music तक हर एक industry cover कर चुके हैं. We have everyone here with us, and now I believe it's time to start the show. But before that, we are talking about teams. We're talking about the competition, and we need to talk about a lot of more stuff. But I believe ये सब करने के लिए मेरे पास एक और बेहतरीन व्यक्ति है मेरे पास. But उससे पहले let's have a look on the new team which we are talking about. Yes, we are talking about Kolkata Hawks. Let's have a look on that. बाज की नजर चाहिए. सोनू निगम है यहाँ पे विद कोलकाता हॉक्स. सो आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस वन. अगर आपने सीजन 1 फॉलो किया था तो आपको पता है कोलकाता सीजन 1 में भी थी. इस बार देखते हैं कि कितना कमाल किया जाएगा कोलकाता हॉक्स के द्वारा. बट अगेन लाइक आई मेंशन्ड, इट्स टाइम टू स्टार्ट द डे. इट्स टाइम टू स्टार्ट द ऑक्शन. एंड
You know, to start the auction, I have to call someone जो आपके जेब से पैसा निकलवाना बहुत ऐसे जानता है. No, I'm not talking about your ex, guys. Don't worry about that. I have Mr. Lucifer here, जो आपकी जेब से पैसा खर्चा कराएंगे, and you will be happy for that. थैंक यू सो मच, थैंक यू. देखिए, मैं इनके जेब से खर्च नहीं करने वाला हूँ. Okay. It's just me with this gavel saying going once. Rest जो भी है इनका emotion और anxiety का खेल है. Talk about the devil, Mr. Lucifer. I know you are very smart. इतना आसान नहीं होने वाला. आप इनके इमोशंस को बहने देंगे और आप पैसे भी निकलवाने वाले हैं इनसे बहुत. देखिए, इसके साथ ओनर्स है ना, एक और चीज बोलेंगे, that एक और बिड, ये तो रुकने नहीं वाला है आज. I think we gamers, we always go for this कि एक और game and owners go for एक और bid. Yes. But you know, tell me why this auction is very important. Tell me why this GPL season 3 auction is tougher than the previous one. You saw season 2 जहाँ पे 6 teams थी, and that itself in the auction there was a bidding war जहाँ पे teams अपने finalize करने के लिए set of players they took time. Some of them did go to the next level and then figure out कि वहाँ पे team build होगा, and eventually जो team जीती, everybody thought that is one strong squad. But इस बार the competition level has raised because of which 8 teams, मतलब 8x और मुश्किल होने वाला है इस bidding में. I believe आज का दिन जब खत्म होगा ना तो या तो सारे ओनर्स बोलेंगे कि यार this was our decision, हम तो जीनियस थे ही, या फिर दिल से कि जो सोचा था ना उससे भी अच्छी टीम बना ली. They will end up explaining their decision. But I think now it's time to start the show. So Lucifer, take it away. Start the auction. Thank you so much. Okay guys, इसके साथ I'm pretty sure with us having our 8 teams ready, 8 franchises right in front of us, it's time to go towards the bidding. But bidding शुरू करने से पहले you all need to understand the rules of it. तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे. We know already the 8 teams, we just saw them when the introduction was being done by Sardar ji. And उसके साथ हम अब देखने वाले हैं कि उनको represent करते हुए marquee players, they are the ones who are going to be very crucial. अपने owners के साथ strategy बना के team managers के साथ आ चुके इस auction में, mainly to get the best 8. तो marquee players के बारे में हम बात कर रहे थे. As we mentioned, there are 8 teams, there are 8 marquee players respectively for every team. बात करते हैं वो marquee players के बारे में. आप देख सकते हो from the previous season winning champion Sukhpreet Singh Chennai Falcons को represent करते हुए, Manmeet Singh for Bengaluru Badgers, Surjit Singh for Kolkata Hawks, the newest addition along with Akshat Kondal for Delhi Sharks. हमारे साथ Davinder Singh भी है for Mumbai Grizzlies. Saurabh Jain यहाँ पे Pune Stallions को represent करते हुए as a marquee player. JD Barrett for the newest addition जो हमें देखने के लिए मौका मिल रहा है, Gujarat Wolves. Last but not the least is going to be Mukesh Dodwani जो हैदराबाद राइनोस को marquee player के हिसाब से represent करते हुए नजर आए. So these players are going to be very crucial to establish the playing 7 along with them. ठीक है? अभी I'm pretty sure everybody watching online also have an idea of who will be bidding for their respective owners for the franchise अपने managers के साथ with the strategies being discussed. अब बात करते हैं कि कितने players है, how this entire auction is going to unfold. 8 franchises के बारे में हमने already बात कर लिया है. In the pool of players, हमारे पास 100 है, meaning 100 players who are divided into 3 different tiers. Tier A, Tier B and Tier C. But हमें हर एक franchise में there's a minimum criteria जो आपको fulfill करना पड़ेगा. Okay? You can see from category A, आप एक बार ध्यान दे दो इस सारे players की screens पे, because that's when you will have an idea कि किसके ऊपर bidding करना है. But the order of the player, right as of now you see, is not going to be the same. कभी भी कोई भी player आपके tier A, tier B या tier C categories में आ सकते हैं. And now starting it off, मैंने जैसे बोला tier A से minimum आपको 2 player लेना पड़ेगा. Tier B से and C से minimum 1 player each. That makes a total of 4 players. बचे 3 player. बाकी कोई category से भी you can get players. Maximum अगर आप category A के बारे में बात कर रहे हैं, which is our tier A, you can get a maximum of 3 players in one franchise. इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, because if you don't keep an eye on this and if you end up overspending, आपका जो bid है will become invalid. So make sure you keep an eye on your purses. जैसे हम purse के बारे में बात कर रहे हैं, for everybody who's watching online, 10 लाख का total auction purse सारे franchise के पास है, and वो auction purse से marquee players already have 2 lakhs, which is positioned for themselves. बाकी बचे 8 लाख. इस 8 लाख में they have to look at the auction pool and bid accordingly. As you can see, हमारे tiers सामने है. Tier A has rank 1 to 25, meaning 25 players. When you go to Tier B, it's the next set of rank, that is a total of 35 players. Tier C has 40 players. Base price also you can see there.
Now when you talk about tier A, आप जैसे देख सकते हो base price of 1 lakh, which has an increment of 10,000 per bid. But जैसे हम grew tier B and tier C के बारे में बात करेंगे, the increments of the base price at 60,000, 30,000 are going to be 5,000 per bid. But once we reach 1 lakh, the bid will increase in 10,000. I hope everybody has an idea. सबको इसका idea भी हो चुका है? Any doubts from any of the franchisees? Silence, I understand that there's no doubts. Okay? Now, whenever a bid is being made, ध्यान दीजिए, you have to put your paddles up. You don't increase or tell me the increments, जैसे आप auction pool में दिखा दिया था. That's how the entire auction increments are going to be. Now, you might have an idea कि increments तो हो गया, but paddles. I have all the 8 franchises right in front of me. Whoever I end up seeing first, their increment will be the first to be accounted. अगर आपको उस bid को और continue करना है या बढ़ाना है, you keep your paddles up or you can put it down. In case you want to keep fighting, as I said, keep an eye on your auction purse. If that auction purse reduces, तब आपको problem होगा. So make sure you do not go beyond what is your limit of 8 lakhs because आपको 7 players in total अपने तरफ, अपने team में बिठाना पड़ेगा to make the best squad for GEPL season 3. All of these sold are going to be independently validated. अगर आपको लगता है आपका कहीं ना auction purse में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, don't worry, our compliance officer is already keeping an eye on it. He will instantly let us know कि आपका जो bid है valid है या invalid है. You don't have to worry about it. Every paddle, every decision and every pause matters. So I hope everybody is ready for it. ठीक है? Tier by tier we are going to go. But one thing for everybody to keep an eye out is, अगर excuse me, tier A में players बच जाते हैं, we are going to move them to tier B. And if tier B में players बच जाते हैं, we are going to move them to tier C. And now you might have a question, अगर ऐसे move हो रहा है, क्या उनका base price भी change होने वाला है? Yes. From 1 lakh, it'll come to 60,000. From 60,000, it'll go down to 30,000. This is how it will be. चले एक बार ध्यान दे देते हैं हमारे जो auction purse है, सब franchises के. Let's take a look at it and see where currently we stand at. क्योंकि अभी तक कोई auction नहीं हुआ है. We have not sold going once, going twice at all. Everybody has a total purse of 8 lakhs. 8 teams, 8 lakhs. One जो player दिख रहा है is the marquee player. I hope that's clear. And just as I said, when I go going once, you still have an option to bid. When I say going twice, you still have an option to bid. But when this gavel drops and it is said sold, that player auction is closed. He will be sold. In case one of the players are make unsold, जैसे मैंने बोला, the cascading rule will come into play. They'll be moved to the later tiers. I hope that's clear. Can we start the auction now? It is going to be a fair, transparent auction. Everybody get your paddles ready. Do we have our category A players also ready that we can start the auction for? Let's go. I want everybody to put your paddles up so that I know everybody is ready for the auction. Can I see all the 8 franchises with your paddles up? It seems everybody is ready. Paddles are ready. Let's build the best squads for GPL season 3. Let's bring in our category A players and see who are the set. And marquee players, take your eyes towards the screen to see कौन आ सकता है इस category A के bid से. First up, it seems we are going with Aditya Soti with a base price of 1 lakh. Pune coming up with the first base 1 lakh 10,000. Increment Delhi Sharks going at 120. 120 for Aditya Soti. Pune going back 1 lakh 30. 1 lakh 30. Delhi Sharks back 1 lakh 40. 1 lakh 50. Pune Stallions seems like they're not going to back out of this. 1 lakh 50 from Pune Stallions going once. Pune Stallions still have Aditya at 1 lakh 50 going twice. Any bids? Oh, Kolkata with the last dive coming through. 1 lakh 60. Current bid 1 lakh 60. 1 lakh 60 going once for Kolkata Hawks. 1 lakh 60 going twice.
1,60,000 sold for Kolkata Hawks. The first player of GEPL Season 3 is sold to Kolkata Hawks. Congratulations. That's 1,60,000. That's our very first player of Category A. Seems like the newest entrants of this season are the very first to get their player. Really happy. Sold to our Kolkata Hawks at 1,60,000. Congratulations, Surjit Singh, for getting the player. This is the very first of the auction. Pehla player ja chuka hai. Keep an eye out, guys. Ye bahut crucial hai to build your squad, to figure out whether it's going to be a batting lineup ya aapki bowling lineup ko strong karne ke liye. And you guys are the better judge of it. Pehla player ja chuka hai, meaning now the bars have risen. ठीक है? Are we ready for the next player? Can we bring up the next player for the auction? Second player from category A, tier A, base price of 1 lakh. Can we have the next player up on our screens? Can we have the next player up on our screens? There we go. It's going to be Kamal Parida, our next player, and immediately Bengaluru with their paddle. 1 lakh is where we are sitting at. Pune comes into increment at 1,10,000. Kolkata Hawks increases, goes to 1,20,000 for Kolkata Hawks. Bengaluru back in 1,30,000. Bengaluru have at 1,30,000 going once. Bengaluru Badgers 1,30,000 going twice. Do I see any more paddles up? Oh, Mumbai come in at the last moment. 1,40,000 is where the current bid stands. Mumbai have it. Pune take it back. 1,50,000. Bengaluru, they take it at 1,60,000. All the way in the back at 1,60,000 right now. Bengaluru Badgers once. Bengaluru Badgers have it right now at 1,60,000 going twice. Do I see Mumbai Grizzlies for Kamal coming in once again? Is going to be 1,70,000 right now for Mumbai Grizzlies. Pune Stallions coming in from the back. 1,80,000. Pune Stallions 1,80,000 going once. Do I see the paddle from Bengaluru? They are shaking their head saying no, nahi, isse zyada nahi karne wale. 1,80,000 Pune Stallions have it right now going twice. 1,90,000 before the hammer could be dropped. 1,90,000 for Bengaluru Badgers. They increase the increment. 1,90,000. Bengaluru Badgers going once. Bengaluru Badgers at 1,90,000 for Kamal going twice. 1,90,000 for Bengaluru Badgers sold. That is 1,90,000. It seems like every bid for every player is increasing up the ranks. Congratulations, Bengaluru Badgers. You get your first player. So far, we have Kolkata with 1 and Bengaluru with 1 as well. So, meaning they already have taken an initial step जो है अपने players को fulfill करने में. But the other 6 squads, get ready, because as we've said, minimum criteria of 2 players from category A is what you have to bid. Some of you might be smart कि इनको पैसा खर्च करने दो, हम last में बहस में उठा लेंगे. Let's move to our next player and let's see if anybody is going to be able to get a steal deal. So far it's not happened. It's going to be Funny Kiran, जो हमारा next है. Delhi Sharks immediately raise their paddle. That's 1 lakh base price. They take it at 1,10,000. Pune Stallions, they raise the paddle. 1,20,000 for Delhi Sharks. 1,30,000 for Pune Stallions. Funny Kiran, 1,40,000 for Delhi Sharks. 1,50,000 Pune. 1,60,000 Delhi. 1,70,000. It seems like a bidding war started between these two. Delhi at 1,80,000. 90,000 for Pune Stallions. Back again. 2. We have increased 2,10,000. Funny Kiran, 2,20,000. Delhi Sharks not backing. 2,20,000. It seems like he could be the best highest sold. Delhi Sharks at 2,30,000. 2,30,000. 2,30,000 going once for Delhi Sharks. 2,30,000 going twice for Bengaluru all the way back. 2,40,000. Somebody else stepped in. 2,50,000. Bengaluru, they say no, and it's back to Delhi Sharks at 2,50,000. 2,50,000 going once. 2,50,000. 2,60,000. Oh my God, Funny Kiran. 2,60,000. 2,70,000. Seems like one of the last time when we had the highest bid player, that was JD Barrett at 2,90,000, but right now 2,60,000 for Delhi Sharks. Delhi Sharks at 2,60,000 going once. Delhi Sharks going twice for 2,60,000. Bengaluru, Pune, and it is sold to Delhi Sharks at 2,60,000, and we already have a highest
sold player here in our season 3 auction. That's a big amount of purse जो यहाँ पे Delhi Sharks ने खरीदा है. Congratulations Delhi Sharks for getting your first player as well. Now we have 5 teams who still need to find your very first player. I hope you are getting up, you're seeing how high it's going. 2,60,000. Delhi Sharks, they get this player. Congratulations to them. This is how the bidding war is going to be. There are some more players, and personally मैंने जब आप सब लोग से बात किया, you had some crucial players जो आपने ज़रूर बताया था. And I'm pretty sure most of you की खुश है कि Delhi Sharks अभी के लिए they've spent the most amount of money now that you have a chance in the bidding war. And yes, the category A has the highest chunk because they're the best in the rank in the qualification stages. ये था Delhi Sharks getting the player at 2,60,000. Congratulations for securing Funny Kiran at 2,60,000. Can we move to the next player up in the auction? The next player from category A. The next player from category A, base price as I said 1 lakh is what we're going to start at. Can we have the next player up on our screen? It's going to be Soumyadipta Biswas with a base price of 1 lakh, and Bengaluru Badge is right at the back. He's trying to get back his teammate last season with a base price of 1 lakh. Right now Bengaluru Badge is Delhi, get it at 1 lakh 10 right now. 120 is Bengaluru, what they say. 130, Delhi come back into the battle. 140, Bengaluru. 1,40,000, Delhi bring at 1,50,000. It seems like Manmeet is not backing down. 1,60,000, he's just kept the paddle up. 1,60,000, Bengaluru have it. 170 after making a big 1,80,000. Delhi, they outbid you already. They're not giving you a chance. Delhi shake their head. 1,80,000 is where we stand at for Bengaluru Badgers going once. Kolkata, 1 lakh, Kolkata is stealing away from you. 2 lakh back at Bengaluru Badgers. 2-1, 2,10,000 for Kolkata Hawks. 220, Bengaluru going all out. 230, Kolkata back in. Do is 240. Soumyadipta Biswas seems to be now breaking the ranks. It did go to 230, 240, 250 back at Bengaluru. They have at 250, 260 matching the current bid. 270 outbidding the Delhi's highest price, and Kolkata say no more. Bengaluru Badgers at 2,70,000 going once. Any more paddles? Going twice for Bengaluru Badgers at 2,70,000. Any more? I see no more paddles. Sold for Bengaluru Badgers at 2,70,000. And right now he will stand as the highest sold player of the auction. Congratulations Bengaluru Badgers. That seems like we are outright for a bidding war as we said. And now Bengaluru Badgers have a player at 2,70,000. This is how competitive our season 3 jaane wala hai, and you can already see JD from the newest team Gujarat Wolves yet to look forward to a first player. Same goes for Pune Stallions. They did come to a bidding war. Mumbai bhi aaye the zarur, but I think as of now Chennai Falcons as well as Gujarat are the only ones who, along with Hyderabad, who have not raised any more paddles. So far 4 players bid. Can we move to the next player in this bidding? $2,70,000 as we just saw. Bengaluru Badgers get 2,70,000 on Soumyadipta Biswas. A really good pick. Once he starts, nobody knows when he's going to end. And also Manmeet getting his old teammate back. He's happy, shaking his head. Okay, इसी के साथ क्योंकि उनको अपना साथी मिल चुका है, we are yet to figure out for the next 4. चलिए next player for the auction. Can we get the next player upon our screens for the auction? Okay, the next player is going to be Deepak Chaurasia. Base price 1 lakh. Do I see anybody with a paddle? Pune, take it at the base at 1 lakh. 1 lakh 10 for Chennai Falcons. The first paddle coming up from Chennai Falcons. Koyor bid. Chennai Falcons at 1 lakh 10. Pune come back at 120.
120 for Pune. Chennai take it at 130 right now. 140 for Pune. 140, 1,40,000 for Pune. 1,50,000 for Chennai Falcons. 1,50,000 for Chennai Falcons going once. 1,50,000 for Chennai Falcons going twice. Do I see any more hands? I don't see. And sold, the very first player for Chennai Falcons at 1,50,000. Seems to be a steal. And Sukhpreet बहुत खुश है कि इतने में मिल गया ये एक player category A से. That's going to be Chennai Falcons with a player at 1,50,000. Congratulations Chennai Falcons. And इसी के साथ 5 teams, 5 franchisees have their first players joining their marquee players. I hope अब सबको थोड़ा आइडिया आ रहा है. And I'm pretty sure some of them, I'm pretty sure मुकेश तो अभी तक पैडल के तरफ देखे भी नहीं है. He's not even gotten the player जो उनको चाहते हैं. But nice, congratulations Chennai Falcons, they get the very first. Okay, and इसी के साथ we'll call our Sardar ji back into this entire kerfuffle of a bidding war, जहाँ पे 2,70,000 का एक highest bid हो चुका है. सरदार जी क्या कहना है आपका? आखिरकार मुझे लगता है मेरी जरूरत पड़ी चुकी है, because we need to talk about this. It's raining outside, but here it's raining money. अच्छा खासा पैसा हमने देख लिया. We saw the highest bid, and like you mentioned, recently we saw a very good bid also. एक बहुत सही प्राइस से पिक किया. So let's get to our players. Let's talk about this कि कैसे क्या क्या हुआ है. और like you mentioned, कुछ लोग तो अभी खाता भी नहीं खोल के बैठे अपना. I can see your smile. What's the plan? क्या चल रहा है? Because there are people who are bidding, there are people who are fighting, and then I see someone who is just waiting. ये शातिर दिमाग में चल क्या रहा है? ये बताइए हमें. सबके प्लेयर्स अपने अपने सेट हैं. जैसे मेरा जो टीम बना है ना, प्लेयर्स सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, बट पॉइंट इज मेरे को मेरे टीम में कुछ पर्टिकुलर रोल्स के लिए चाहिए प्लेयर्स. मैं उसका वेट कर रहा हूँ. Okay, I think बहुत शुगर कोट करके बताया जा रहा है हमें मुकेश भाई की तरफ से कि क्या प्लान है. अगेन इनके नाम है मुकेश, so you can expect कि he is very smart with the money decisions कि कहाँ पैसा लगाना है और कैसे रिटर्न्स लेने हैं, राइट. बट इन सब के साथ we need to talk about some other things. सबसे पहले चलते हैं जल्दी से एक बार. सुजीत भाई, where are you? कहाँ पे हैं? पाजी किधर बैठे हैं? जल्दी ढूंढो. ये रहे यहाँ पे देवेंद्र पाजी, सुजीत पाजी इतने बैठे हो, जल्दी आओ. जहाँ पे सब बिड कर रहे हैं, जहाँ पे सब प्लान बना के स्ट्रैटेजी बना के. व्हाई डू आई फील लाइक कि आप ऐसा है कि मैं चलूं, मेरे पास मेरा प्लान रेडी है एंड आई एम गोइंग स्मूथ विद माय प्लान. क्या कुछ ऐसा है या फिर आप थोड़ा पैनिक कर रहे हो या यू आर रेडी विथ योर प्लान? मुझे जो प्लेयर मैंने उसके लिए बजट छोटा हुआ था, मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख सस्ता मिल गया वो प्लेयर. तो अब मैं बाकियों का काम खराब कर सकता हूँ. आई थिंक ये सबसे अच्छा डिसीजन है ना, सबसे बढ़िया निर्णय है कि जब आप अपने पास होने जितना लिख चुके तो बाकियों की कॉपी थोड़ी खराब कर दी जाए, राइट. हाँ, और मैं अपनी टीम और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ ना. मुझे एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिल जाएगा टियर 1 से. क्या किसी ऐसे प्लेयर पे आपकी नजर थी जो अब ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है? नहीं, फिलहाल तो नहीं. उनमें से कोई भी नहीं है वो, अभी वो आने बाकी हैं. ओके, लेट्स सी. जिनका वेट कर रहे हैं बाजी, क्या वो प्लेयर्स अभी आएंगे या थोड़ा भी समय और बाकी है. बट इन सब के बीच में वी हैव प्रीवियस ईयर्स चैंपियन साहब. क्या चल, देखिए ये मुस्कुराहट आप देख सकते हैं. इन्हें पता है, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि क्या हो रहा है, कैसे होना है. क्या चल रहा है दिमाग में इस पॉइंट पर? सर मुझे पता है मुझे कौन सा प्लेयर लेना है और जो डिजर्व करता है सर उसी को ले रहा हूँ. और बाकी प्लेयर भी अच्छे हैं सर, लेकिन मैं देख रहा हूँ बिड कहाँ तक जाती है. पहले खुद नहीं बिड में आता है, अगर मेरी लिमिट से ज़्यादा पहले क्रॉस हो जाता है तो बिड करता ही नहीं सर. ये दीपक अच्छा प्लेयर लिया सर मैंने, अच्छा करेगा परफॉर्मेंस सर. देखिए, I cannot say यहाँ क्या लिखा है, but all I can say is कि प्लानिंग तो बहुत तगड़ी चल रही है. नाइस, I'm waiting for this one. अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो we know कि हमें वापस आना ऑक्शन डे पे एंड ये देखना है बस कि कोई तो था जो पहले ही गेम बना चुका था. बट इन सब के पीछे वेरी सून वी आर स्टार्टिंग द ऑक्शन अगेन. क्या कोई ऐसा है रूम में जो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा है कि कैटेगरी बी आए? इज देयर समवन जो कैटेगरी बी के लिए ज्यादा वेट कर रहा है? कोई हाथ नहीं उठाएगा अभी, बट कैटेगरी बी आते ही सबसे पहले चिल्लाने की आवाज है कि सबसे पहले बिड्स ऊपर जाएंगी. अक्षत भाई, वेयर इज अक्षत? Right in the front row. कैटेगरी बी की हम चर्चा कर रहे हैं. कैटेगरी बी से तो आपने पूरी पूरी टीमें बना रखी है, तो क्या प्लान है अभी के लिए? सर मुझे जो प्लेयर चाहिए था अभी तो फिलहाल मिल गया है, बाकी देखते हैं आगे. और एक काफी महंगी बिड आपने लगाई है, तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइस आपने सोचा था उतने में आ गया, कम में आ गया, थोड़ा ज्यादा पड़ गया? नहीं सर, जितना सोचा था उतने में ही आया, ना ज्यादा ना कम. कहते हैं ना ज्यादा ना कम, बराबर जैसा चाहिए था. बट यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसिव प्लेयर्स, आपको क्या याद है पिछले सीजन का सबसे महंगा प्लेयर कौन था? वहां बैठे हमारे साथ जेडी भाई. 2.9 लाख रुपीस, 2.9. इस बार
आपको बिड लगानी है, मतलब इतना आपने पैसा कमा लिया कि अगले सीजन में आप आ रहे हो सीधा जगह लेके कि भाई अब मेरी बारी है, अब पाजी के अगेंस्ट खेलूंगा। वो तो बस लक है, मिल गई टीम अच्छी। अब देखते हैं यहाँ पे टीम कैसी बनती है। तो कोई प्लान है जेडी भाई ऐसा अभी कि क्या करना है, कैसे करना है? अभी थोड़ा वेट कर आप कैटेगरी बी आने का या कैटेगरी ए की कुछ प्लेयर्स कैटेगरी बी तक जाने का? नहीं सर, कैटेगरी ए से भी तो 2 प्लेयर लेने पड़ेंगे पहले। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे प्लेयरों की जो मुझे लेने हैं, पहले से मैंने प्लान करके रखा है। नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी बाकी लोगों ने भी बिड करनी है। देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि स्ट्रैटेजी कोई अपनी अभी रिवील नहीं करने वाला है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स, सैम आई गेस यू आर आल्सो एंजॉयिंग दिस। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, बट आपको बात करना पड़ेगा पहले मनमीत से, जिन्होंने हाईएस्ट अभी के लिए एक सोल्ड प्लेयर को लिया है 2,70,000, आउटबीडिंग एवरीबॉडी इन द पूल। क्या सोच था इसके पीछे, ये पूछना पड़ेगा आपको उनसे। व्हाट डू यू बिलीव, क्या सोच होगी? मेरा सोच है कि पैसा खर्च कराओ और कोई सोच नहीं है मेरा। पाजी क्या चल रहा है, क्या बातें सुन रहा हूं मैं? हाईएस्ट प्लेयर्स की बातें चल रही है, साथ में बातें चल रही है। अच्छा, आई वांट टू नो योर ओपिनियन। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अब तक प्लेयर से बिड लगा रहे हैं लेकिन खरीद कुछ नहीं रहे हैं, और साइड एंगल से मैं देख भी रहे बात करते हुए। तो क्या प्लान है इनका, आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस पॉइंट पर? सर वो वेट कर रहे हैं बड़े प्लेयर की, जो अभी हाईएस्ट बिड बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता वो हाईएस्ट बिड रहेगा आगे जाके, क्योंकि जो प्लेयर आने वाले हैं सब उसी की वेट में बैठे हैं। बट इस बीच में क्या हमने मुंबई वालों से चर्चा की? आई थिंक नहीं, एक नजर मुंबई वालों की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या हालचाल चल रहा है, क्योंकि ये वो खेमा जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, यू नो आई टेल यू अ सीक्रेट। सो बिफोर एवरीथिंग वाज स्टार्टिंग आई सॉ हिम कैलकुलेटिंग स्टफ, हिसाब किताब पूरा लगा के बैठे थे, सोच के ऐसे सारे नाम वाम। बट पाजी जो प्लान था चीजें वैसी जा रही है या कुछ ऊपर नीचे हो चुका है अब तक? जी अभी वेट कर रहे हैं, हमारे प्लेयर अभी आए नहीं ऑक्शन में, तो बाकी सबका स्ट्रेटजी चेक कर रहे हैं, तो आएंगे, बस वेट है उनका। आई थिंक सबका बस यही कहना है कि हमारे प्लेयर नहीं आए अब तक, सबका प्लान बस वही रहने वाला है। बट इन सब बीच में चलते हैं पीछे एक बार मनमीत पाजी के पास, क्योंकि आपने मनमीत पाजी की बात की और स्पेशली बैंगलोर पिछली बार थोड़े से आप रह गए थे, क्या प्लान है इस बार? क्योंकि पिछली बार थोड़ा रन भी किया, एक प्लेयर गलत आ गया था थोड़ा सा, अभी चेंज करेंगे सभी सर। बट पाजी कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं, क्या वो उनमें मन मुस्कुराहट में आपका नाम ले रहे हैं पाजी? हाँ जी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो प्लेयर लेने थे वो मिल गए मुझे। आई थिंक मनमीत इज द ओनली वन जिसने ओपनली एडमिट किया कि मुझे जो प्लेयर चाहिए थे मुझे मिल चुके हैं। और ऐसा कोई प्लेयर दिमाग में कोई कैटेगरी बी से कैटेगरी सी से है और एक कि हाँ ये भी एक मिल जाए तो मजा आ जाए? मतलब नाम तो मत बताना, बट ऐसा कुछ नहीं अभी इतना, अभी सबका बिड बढ़ाएंगे। कह रहे सबकी बिड बढ़ाएंगे हम, यही प्लान है हमारा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। बट अगेन बताओ पाजी क्या कर रहे? उसके बाद बच्चा क्या है बढ़ाने के लिए, 3 लाख तो बर्स है उसका। पाजी कह रहे पहले अपनी बिड संभाल ले, उसके बाद आगे की उड़ाइयो। बट चलिए इन सब चीजों के ऊपर चर्चाएं और करेंगे, एंड आई विल बी डाइविंग इन। मैं आता रहूंगा और चर्चाएं करते रहेंगे इन सब चीजों के ऊपर। बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्शन, तो लुस्वा अगेन टेक इट अवे, लेट्स स्टार्ट द ऑक्शन अगेन। थैंक यू सो मच। अभी तक कैटेगरी ए खत्म नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, वी स्टिल हैव प्लेयर्स फ्रॉम कैटेगरी ए जो आने वाले हैं आपके स्क्रीन्स में। एज आई सेड, सो फार इट्स ओनली बीन 5 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स अभी तक बिड हो चुका है, एंड सरप्राइज्ड कि 5 प्लेयर्स 5 अलग टीम में जा चुके हैं, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड द लास्ट ईयर बहुत जल्दी प्लेयर्स एक टीम में जा रहे थे। बट इसी के साथ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेयर जिसका इंतजार हम कर रहे थे, who's going to be up on your screens, and it's going to be Manish Ray. That is the player, Manish Ray. पिछले बार खेले थे हैदराबाद में। Can we take a look at the player stats before we open up for the auction? We'll take a look at the player stats. This is for every franchisee to check and see if they want to change their strategy. अपने strategy में कुछ बदलाव करना है कि इस player को हमें चाहिए. As you can see on your screens, starting with, this is the current score of their qualification. Hashtag 11 पे आप देख सकते हो, with 3,000 runs, a 296 strike rate, bowling stats की अगर बात करेंगे 181 wickets, 16 dot ball, and a win ratio of 63%. That is Manish Ray, the next player from category A to bid. Can we open up the floor for auction now? Let's open up the floor for auction. We did start from Chennai Falcons. They had their paddle up. So base price of 1 lakh. Pune Stallions, they pick it up at 1,10,000. Chennai back at 1,20,000 for Manish. 1,30,000. Pune Stallions, 1,30,000 यहाँ पे Pune Stallions की तरफ से, and Bengaluru all the way back at 1,40,000
1,40,000 Pune come back in at 1,50,000. 1,60,000 by Kolkata Hawks. 1,60,000 instantly Pune back at 1,70,000, taken away from the Kolkata Hawks. Pune Stallions 1,70,000 abhi ke liye going once. 1,70,000 for Pune Stallions going twice. Mumbai Grizzlies, they put their paddle up. 1,80,000. Do you want to go Pune Stallions? Say no. 1,90,000. 2 lakh is what Hyderabad. 2,10,000 for Manish is Pune Stallions. Again, bidding war breaking out yahan pe. 2,10,000 for Pune Stallions going once. Any more paddles? Going twice for Pune Stallions at 2,10,000. Manish coming back for Hyderabad seems like at 2,20,000. 2,20,000, 2,30,000. Everybody at category A now reaching the ranks of only 2 lakhs. Going once for Pune Stallions, 2,30,000. 2,30,000 going twice. Do I see the paddle from anybody before the buzzer beater? It is Hyderabad at 2,40,000. We've had 2 players so far reaching the echelon of 2,50,000 ke around. 2,40,000 abhi ke liye Hyderabad Rhinos ke paas hai. Going once. Hyderabad Rhinos 2,40,000 going twice. Do I see a paddle from anybody? Sold for Hyderabad Rhinos at 2,40,000. Congratulations, and it is Mukesh getting back a teammate. लग रहा है थोड़े लोग अपने teammates को वापस लेके आ रहे हैं. मनमीत से शुरू हुआ अभी, and now it is Hyderabad Rhinos. 2,40,000 is the bid that was fulfilled and sold for Hyderabad Rhinos at. Congratulations, Hyderabad Rhinos. That is Manish Ray being sold to Hyderabad Rhinos. Congratulations, and I think with that, with Manish going to Hyderabad Rhinos, we have 6 teams getting their very first player. 2 more teams, and the 2 teams that are left are Gujarat Wolves all the way at the back and Mumbai Grizzlies right in the front. And Davinder Singh seems to be in a very deep discussion to figure out which player they're going to be picking, and let's bring the new player in that discussion. Bulate, and it's going to be Golden Kumar. One of the favorites in this season, jo sab log bid karna chahte hain. Let's take a look at the player stats before we jump the auction. Don't worry, we will give you a chance to put your paddles up. Stats ki taraf chalte hain. As you can see, he is rank number 4. 2,182 runs, 98 wickets in his bowling, strike rate coming in at 260, and he is dot ball at 16%. That is what we see Golden Kumar, and everybody remembers him from the last season finale of how it ended. So he should be a high debatable and high bidding player this season. Okay, let's open up the floor for the auction. Paddles can come up now. Base price instantly for the Gujarat Wolves, instantly taken at 1,10,000. That's going to be Rhinos. I saw the Gujarat back at 120, 130 Delhi. 140 for Pune, 150 for Chennai, 160 for Pune, 170 for Delhi, 180 for Pune, 190 for Chennai Falcons, 2 lakh for Delhi, 2,10,000 for Pune, 2,10,000, 2,20,000. Golden is already in a bidding war. Delhi Sharks, no paddle going down. 2,30,000 for Pune Stallions. I was wondering if you just kept that up. 2,30,000. He's still keeping it up, guys. Pune Stallions going once. Hyderabad Rhinos have the paddle first. You continue it. So it is at 2,40,000 to 2,50,000, 2,60,000. Pune Stallions. It seems like Saurav is not going to give this player up. 2,60,000 going once. Do you see the paddle? 2,70,000. That's Kolkata Hawks. They got the very first player in the very first bid. 2,70,000 for Kolkata Hawks, matching the highest bid player so far. Going once for Kolkata Hawks. 2,80,000, increasing the threshold. Ab jo hai roof upar karte hue 2,90,000, matching the highest sold player of last year, Kolkata Hawks. 2,90,000 going once. 3 lakh Mumbai Grizzlies. हमने बोला था इस बार bigger and better, and that's what Mumbai Grizzlies. पहले bid के बाद, this is the first bid that Mumbai have placed, going once at 3 lakh for Mumbai Grizzlies. Kolkata back at 3,10,000 for Golden. Golden Kumar at 3,10,000 right now. Going once for Kolkata Hawks. 3,10,000 going twice for Kolkata Hawks. The gavel's up. I don't see any more paddles. And sold for Kolkata Hawks at 3,10,000. Surjit seems happy, and we have broken the threshold. इसी के साथ the last year's highest bid
has gotten bigger and better this season. So 3,10,000 is where we see Golden being sold. Congratulations, Kolkata Hawks. And इसी के साथ Kolkata Hawks, they get the second player of their entire play. 2 players so far is what they've gotten. And इसी के साथ let's now see if anybody more, because अभी तक जितना चर्चा मैंने प्लेयर से किया था, marquee player से before we started the auction, there are some more people that will be coming into play, जिनका auction का price अभी भी ऊपर जा सकता है. So we have seen 3,10,000, 2,70,000, 2,60,000 as well, 2,40,000 as well, and we've seen yes 1,50,000 as well. But इसके साथ, are we ready to move to the next player who is going to be coming up on the auction? और सरदार जी, आप पूछना चाहते हैं कि 3,10,000 का इरादा क्या था? I would love to know that. I'm really waiting to know कि अभी और bids ऊपर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, because the highest which we saw was 2.9 previous year, but I think this time, as we are mentioning, it's bigger and better. But I think, Sam, you need a cup of water, because जो चल रहा है ना इसके बाद मुझे तो चाहिए भाई. I have bottles and bottles everywhere. What is happening? We were talking यार, भाई ठीक है यार, ये पिछली बार से better है, पिछली बार से बड़ा है, पिछली बार से और amazing है. But 3 lakh plus bid, ये मैं expect नहीं कर रहा था. Even I did not, and especially coming in from Kolkata Hawks, आप सोचो, पहली टीम है इस बार आई है season 3 में, and the newest entrant making the newest explosion. That's what we are looking at. I'm waiting for this one कि अब क्या होने वाला आगे next, क्योंकि जिस तरीके से bids आगे जा रही हैं, पर्स खाली हो रहे बहुत लोगों के हैं. Like पाजी mentioned कि अब कुछ लोगों के पास शायद bid बढ़ाने के लिए भी बहुत कम पैसा बचने वाला है. Don't you think कि शायद यही strategy बाकी लोग use कर रहे हैं, because a lot of people are there who are just waiting. शायद they're waiting for the category B part, क्योंकि like we mentioned कि पहले आपको 2 players pick करने होंगे, and then we'll move to category B. But before going to category B, a lot of people are there जिन्होंने कैटेगरी ए में ना बहुत बढ़िया प्राइस से प्लेयर उठा लिए हैं. बट इनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे थोड़ा सा हमारी चैंपियन साहब के साथ वापस से, कि अभी तक आपने तो ऑक्शन देखा है, अभी तो काफी प्लेयर्स बाकी है कैटेगरी ए में, क्या कुछ और ऐसे प्लेयर जिन पे आपकी भी नजर है? सर ये 3-10 का भी शायद टूट सकता है, एक प्लेयर तोड़ सकता है. सागर की वेट कर रहे हैं सब, इसलिए सब अपना पर्स भी बचा के रखें, तो देखें किसकी टीम में जाता है. I think right mentioned यार, मैं इस चीज के ऊपर चर्चा करने वाला था, बिकॉज कल भी हमने बात की थी, एंड while having interviews everyone was mentioning कि एक तो सागर हो गए और दूसरे गोल्डन, ये 2 प्लेयर्स के लिए आई थिंक सब लोग वेट करने वाले हैं. क्या कोई है जो गोल्डन के लिए वेट कर रहा है एंड सागर के लिए वेट कर रहा है? लेट्स सी हु इज ऑनेस्ट हियर. गोल्डन अभी तो मिला 3,10,000. Oh, golden. So that price was for golden. Yes. Oh my God, भाई अब मुझे मजा और आ रहा है भाई. Now I'm excited for this one कि अब क्या होने वाला है, because अगर सागर का भी वेट चल रहा है, गोल्डन के लिए प्राइस ऑलरेडी लग चुका है, आगे क्या होगा आई थिंक ये सैम आपको बताना पड़ेगा हमें. चलिए तो let's bring our gavel up again, because it's time अगला प्लेयर का ऑक्शन करने के लिए. 3,10,000 अभी के लिए हाईएस्ट हुआ है. युवराज सिंह is the next player up on auction. Don't get your paddles up yet. We have to take a look at his player stats, and उसके बाद ये auction शुरू हो जाएगा. This floor will open up. In the meantime, please make sure you check out your strategies कि ये player base price के साथ आप उठा सकते हो कि नहीं. 1,901 runs coming in from Yuvraj Singh. That is his batting stats with a strike rate of 232 at a rank of #16. Bowling stats at 108 wickets. Okay, with this, I hope we are ready to start the auction. That is for Yuvraj Singh. Can I get the paddles up? Yuvraj Singh, base price of 1 lakh. Any paddles for base price of 1 lakh for Yuvraj Singh? I don't see any paddles. Again, Yuvraj Singh, 1 lakh base price, rank is #16. I'm looking for any bids at going once, twice. Unsold. Yuvraj Singh for the time being is unsold. We will again get him back in case अगर आप में जो minimum criteria है category A में, if you don't fulfill it, we'll get him back into the pool. Otherwise, he'll cascade down to the tier B for the next one. Unsold for the time being is Yuvraj Singh. Can we bring in the next player up for auction? Let's bring in the next player. And ये देखे, so far, as I said, still teams who are looking forward to being the picks. अभी के लिए सारे teams ने नहीं किया. It's only 6 teams. The next player is going to be Hemant. Hemant with a base price of 1 lakh. Let's take a look at his stats. He is at rank 20. Runs 1,248. Wickets 95 in bowling stats.
His strike rate sitting at 208. Teams, all the 8 franchisees, I hope you guys have an idea now कि ये हेमंत अब bidding floor पे आ चुके हैं. With a hammer up, do I see any paddles for Hemant? Any paddles for the base price of 1 lakh for Hemant? This is the first time जो मैं अभी देख रहा हूँ 3,10,000 के बाद कि bidding war नहीं हो रहा है. I like how much thought has gone behind. ये बताता है कि teams का strategy कितना deep है, and it is very, I think, synonymous in terms of them building a strategy with every player having a good relationship in the team to get the trophy this time. But yes, abhi ke liye, I don't see any paddles. Once, twice, nothing. He remains unsold. We will bring him back again later, either as a cascade or to fulfill the minimum criteria. Unsold is Hemant for the time being. Can we bring the next player up on our screens? The next player from our tier A, the category A. Let's bring in the next player. That is going to be Aman Vishwakarma at a base price of 1 lakh. Aman Vishwakarma at the base price of 1 lakh. Can we bring his stats up as well? Aman Vishwakarma. Let's take a look at his stats, and इसी के साथ आप भी decide कर सकते हो. Do you want to go with that player or you want to make a change? Rank 23 with a runs at 1,710, strike rate of 228, bowling stats where wickets stand at 112, and his dot ball ratio at 17%. That is Aman. Okay, let's open up the floor. इसी के साथ for Aman. Any bids coming in, and I can see all the way back coming in from Gujarat Wolves at the base price of 1 lakh. 1 lakh for Aman is the current bid, going once. Paddle coming up from Delhi Sharks, 1,10,000. 1,10,000 from Delhi Sharks for Aman. 1,10,000 going once for Delhi. That is going to be a steal if they get it. Going twice, Kolkata say that we've spent but we still have. They are looking forward to their third player, but Delhi say no, as it goes to 1,30,000. They outbid the 1,20,000 of Kolkata. 1,30,000 for Delhi Sharks. And Sujit Singh is taking a look at Akshat. Ki wapas aane wala, 1,40,000, and instantly Akshat says no, 1,50,000. Surjit has to now think because his purse right now has lost a little bit of cha-ching. So thoda sochna padega, but 1 lakh right now, 40 standing for Delhi Sharks. 1,40,000 going once. 1,40,000 going, 1,50,000 coming in from Kolkata Hawks. 1,50,000 from Kolkata Hawks. Delhi say no. That is a big bid coming in. Kolkata Hawks 1,50,000 going once. Chennai or Gujarat 1,50,000 going twice. And Aman is sold. Congratulations Kolkata Hawks. They get 3 players from tier A. And that is a really good spend. 1,50,000. Even after spending lakhs of money, they say that we still have money, abhi bhi paisa hai, to make sure that we fulfill our criteria which is necessary. And maximum jo aapka limit hai Kolkata Hawks, you have reached for the category A. So aapko abhi intezar karna padega that we move to tier B, category B, where the next set of players will be bidding. But 1,50,000 is where they win and they get their bid placed and sold for Aman. Can we have the next player upon our screens? It's going to be Rudra Sethi. Rudra Sethi, and I see every head instantly goes up on the screens. Chaliye stats dekhte hain inka. Hashtag rank 25, as we said, from rank 1 to 25 is what would the players at category A rehne wale hain. And 1,605 runs yahan pe dekhne ke liye mauka mil raha hai. 97 wickets is what he's done, and a strike rate of 255. So he seems to be a little more inclined towards the batting side. तो यहाँ पे अगर कोई भी team अभी भी अपना batting side शुरू करने के लिए या strong करने के लिए देख रही है, this is hashtag rank 25 from Rudra. And with this, let's open the floor. चलिए, do we see any bids and paddles coming in for Rudra at the base price of 1 lakh? Any paddles? 1 lakh. वहाँ पे सुखप्रीत बोल रहे हैं ले लो खर्च कर लो for Mukesh. This is the best part कि सब एक दूसरे को जानते हैं and we'll try to play for the bidding war जो अभी तक हमने देखा 3,10,000 is where we see at. But for अभी के लिए Rudra, we don't see any bids coming in once. Do I see any paddles twice? It doesn't seem to be the case, and इसी के साथ he remains unsold, and we'll bring him back later. That is going to be Rudra. Can we have the next player up on our screens? Rudra remains unsold for the time being.
Let's bring up the next player up on our screens. Netaji. This is a player I'm pretty sure JD will be very familiar with, and maybe he might start the bidding. यहाँ पे देखने वाले हैं, but let's take a look at his stats. Rank 18, runs 2,558, wickets stand at 190. His strike rate at 255. Again, a very strong batsman. And with that, let's start the auction floor. चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं for Netaji. Do I see the paddle? And instantly it is JD itself. He knows this face. Very familiar player. Has played together in the season 1. Base price of 1 lakh, and right now it is going to be with the Gujarat Wolves going once. Delhi Sharks say 1 lakh 10, 1 lakh 20. That is going to be Gujarat back again. 1 lakh 20. Akshat is thinking, and they go ahead. That is going to be 1 lakh 30 abhi ke liye. Delhi Sharks ke paas, that is Netaji. 1 lakh 30 for Delhi Sharks. 1 lakh 30 going once. 1 lakh 30 for Delhi Sharks, and Pune say no, it's going to be 1 lakh 40 as they get back into the bid. Yahan pe, that is 1 lakh 40 for Pune Stallions. They raise the bid. Going once for Pune Stallions at 1 lakh 40. Going twice at 1 lakh 40 for Pune Stallions. Do I see any more paddles before this gets sold? And with this, it is going to be sold. That is 1 lakh 40 per Pune Stallions. Congratulations, you get Netaji. That is their second player that they also managed to, sorry, very first player of category A that Pune Stallions managed to pick up. And इसी के साथ, it is only the Gujarat Wolves who are left to yet get their first category A player. Congratulations, Netaji goes to Pune Stallions. Okay, with this, let's move to the next player जो हमारी screen के सामने आने वाले हैं. Let's bring up the next player up on our screens. And it is going to be Sachin Chauhan. I'm pretty sure a very familiar face. बहुत लोगों ने साथ खेला है. He's also been close to a bidding war. Stats देखते हैं, and as you can see why there could be a bidding war. He is currently at rank number 1. 3,217 runs, a strike rate of 271, and साथ ही में bowling stats पे भी 182 wickets, a dot ball ratio of around 18%, and win ratio आप देखिए 73% देखने के लिए मौका मिल रहा है. Sachin Chauhan is going to be a very strong addition for a team. चलिए इसी के साथ let's open up the auction floor, and instantly Chennai Falcons open up the base price at 1 lakh. Chennai Falcons, Gujarat say no to it, 1 lakh 10, Pune say at 120, and it's going to be Delhi at 1 lakh 30. 130 for Delhi Sharks, and Gujarat say 1 lakh 40, Pune come back at 1 lakh 50, 1 lakh 60 for Delhi Sharks. Quick is this bid, 1 lakh 70 for Pune Stallions, 170 was Pune, and it's going to be 180 for Delhi. 180, that's going to be 190, 1 lakh 90,000, Pune say 2 lakhs, 2 lakh 10,000 is going to be Delhi Sharks, and that is the reason we said hashtag 1 is a crucial player to have. 2 lakh 10, Pune say no, and they say 2 lakh 20. They raise the increment to 10,000. Pune Stallions, they have Sachin Riders now at 2 lakh 20,000 going once. 2 lakh 30, say Mumbai Grizzlies. They take it 2 lakh 40, instantly turned around by Pune Stallions, outbidding 2 lakh 50. Getting back his teammate is what Davinder is looking forward to. 2 lakh 50, it was 2 lakh 60, it goes to. For Pune, 270 is where Mumbai take it over. 270 is Mumbai Grizzlies right now. For Sachin, 280 for Pune Stallions is where they take Sachin towards this bid. 2 lakh 80,000. Mumbai Grizzlies, do I see a bid? Do I see a pal from anybody else? Going once for Pune Stallions at 2 lakh 80,000. 2 lakh 80,000 for Pune Stallions going twice. Any more bids? Mukesh comes in at the buzzer beater, and that's going to be 2 lakh 90,000. Pune Stallions, that is the bid they've taken away from you. Hyderabad Rhinos, they take it at 2 lakh 90,000 going once. Any bids for, 3 lakh we reach before I could say twice, and that's going to be 3 lakh for Sachin for Pune Stallions. 3 lakh going once for Sachin Chauhan, at 3 lakh for Pune Stallions. And Mukesh says, before I say twice, he is going to make it 3 lakh 10,000, 3 lakh 20. Raising the bar and outbidding Bengaluru Badger's highest player at 3 lakh 20,000. Right now, Pune Stallions, 3 lakh 20,000 going once for Sachin.
3,20,000 going twice. Do I see any more paddles? Yes, says Mukesh at 3,30,000. Bidding war now breaking the roof. अब पैसा सबने खोल के अभी पूरा खर्चा करने का डिसाइड कर दिया है. And Mukesh going up with this is incredible. 3,30,000. Current bid going once. Current bid still stands with Hyderabad Rhinos for Sachin at 3,30,000 going twice. Do I see any more paddles before this gavel drops? And no, it is sold for Mukesh for Hyderabad Rhinos. Congratulations, they get Sachin at 3,30,000. Instantly the bids rake up. मैंने तो नहीं सोचा था इतना 3,30,000 सीधा बार ऊपर करके चलता रहेगा, but I think more teams, 2x, 2 more teams added, 8 more times the bidding war यहाँ पे शुरू हो चुका है. Wonderful, congratulations Hyderabad Rhinos, you get your second player from category A, meaning they've also fulfilled that criteria. Gujarat still not found the very first player, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा. Many of these players are getting sold, your purse is still sitting at 8 lakhs. चलिए इसी के साथ let's move to the next player who will be coming up on our screens for the bid. GEPL season 3 का auction so far unbelievable हो चुका है जितना अभी तक पैसा खर्च हुआ है, and we've still not finished the criteria of minimum 2 players for every team. इसी की वजह से we are still continuing it. Rudra Samal is our next player in the bidding. Hashtag 13, 2,111 runs, a strike rate of 239. Bowling stats के ऊपर ध्यान देंगे. That's going to be 126 wickets along with 21% dot ball coming up with a winning ratio of 74, a little higher than what we witnessed with Sachin. That's Rudra Samal. चलिए इसी के साथ let's open up the auction floor. Any bids coming in for the base price of 1 lakh for Rudra? Base price of 1 lakh. It could be a steal, but because there's a cascading rule as well, I'm pretty sure some of you are strategizing and playing even more smarter. 1 lakh base price for Rudra. Once. Do I see any paddles coming up? Twice. Remains unsold for the time being. Rudra will be unsold. We will bring him back. दोबारा वापस लेके आ जाएंगे हम. Depending on, again, as I said, category A में अगर कोई teams अभी भी fulfill नहीं कर चुके criteria, or in case we are still looking to go for a cascade. But with Rudra going, let's bring in our next player in the auction. Next player up on our screens, please. This is for category A still. Base price 1 lakh, and it's going to be Asif Khan. Base price of 1 lakh. Some people are already looking onto their screens to take a look at the stats. चलिए stats के ऊपर ध्यान देते हैं. Hashtag 17, 1,079 runs, a strike rate of 203. Wickets अगर बात करेंगे, it's going to be 83 wickets. Dot ball 19%, win ratio 69%, जो हमें देखने के लिए मौका मिल रहा है. He is hashtag 17. चलिए इसी के साथ let's open up the bidding floor. Let's open up the bidding floor for Asif. Any bids coming in for Asif? Do I see paddles going up for Asif? No paddles as of now. Base price of 1 lakh. Don't see any paddles once. We'll wait another time, twice. Again, he will be unsold for the time being. Asif, we will bring him back in this rotation for the bidding. Can we bring in the next player for this auction? Unsold, unfortunately, as of now. Asif still has an opportunity later coming into this action. Let's bring in the next player. Next player is Bhupendra Patel. Base price of 1 lakh again. Akshat is thinking they will want Bhupendra Patel. Let's take a look at the stats. Rank 10, 922 runs. Strike rate looking good at 212. Bowling stats, 84 wickets, 15% dot balls, and a win ratio of 80. That seems to be a little on the higher end. अगर किसी को अभी भी अपना second player category A में चाहिए, he could be a really good pick. Can we open up the floor for the bidding? Anybody for the base price bid of Bhupendra?
Base price 1 lakh bid for Bhupendra. I don't see any bids coming in. Once, he will be a really good pick. He has a good win ratio. Going twice, no bids coming through. Unsold for the time being is going to be Bhupendra. Unsold is Bhupendra for the time being. Let's move to our next player in category A. बहुत लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो player चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा है. I'm pretty sure a lot of you are ready with your purses. Mumbai Grizzlies, they want to get their player as well. But इसी के साथ the next player is going to be Praveen Dilla, who is going to be our next player. We will come to the auction. First, we'll take a look at the stats. He stands at hashtag 21, runs sitting at 2084, strike rate at 251. Is going to be bowling stats जहाँ पे हमें देखने के लिए मौका मिलेगा 118 wickets, 19% dot balls, win ratio at 65. But looking at the previous season, I'm pretty sure everybody knows he's a very dependable and reliable player. Okay, let's open up the auction floor right now for Praveen with a base price of 1 lakh. Base price of 1 lakh. Can we see the paddles coming up? And Akshat for Delhi Sharks starts it off. That's going to be the base price of 1 lakh. Instantly Chennai at 1 lakh 10, trying to get back his teammate. 1 lakh 20 is Delhi Sharks. 1 lakh 30 is Chennai. 1 lakh 40, Delhi off to the race. 1 lakh 50, Chennai not backing down. 1 lakh 60 is Delhi. 170, Chennai not taking the paddle down at all. 1 lakh 70,000 abhi ke liye. And Akshat says no more bids. 1 lakh 70 is where we stand at. That is going to be for Chennai Falcons. Going once. Chennai Falcons at 170 for Praveen. Going twice. Do we see any more bids coming in for Praveen at 1 lakh 70? It's going to be sold to Chennai Falcons. Congratulations, you get Praveen in your team at 1 lakh 70,000. That is Praveen going to Chennai Falcons this season at 1 lakh 70,000. So far, is category A में जो highest bid था that we ended up seeing at 3 lakh 30,000 coming through. But अब और देखना पड़ेगा. Sachin was the player, went being the highest sold player so far. इसी के साथ let's bring in the next player. Praveen sold to Chennai Falcons at 1 lakh 70,000. 1 lakh 70,000 is what Chennai Falcons get Praveen at. बहुत खुश है सुखप्रीत पाजी. चलिए इसी के साथ let's move to our next player on the auction. बुलाते हैं अपने next player को. Let's have him on our screens. Who is the next player up on the auction? Can we have the next player on the screen, please? And that's going to be Sagar Anjana. This is a player that everybody was looking forward to. Sagar, let's take a look at his stats. He is currently ranked 2. 2,855 runs, strike rate of 233. His bowling stats, which everybody is very familiar with, at 186, 17% dot balls, and a win ratio of 72. Take a look around because अब floor open up होने वाला है for the bidding of Sagar. And let's bring the paddles up. Base price of 1 lakh. Who wants to start off? 1 lakh for Sagar. Pune come up with the first 1 lakh, 1 lakh 10 instantly for Gujarat. 1 lakh 10,000 for Sagar. 1 lakh 20. Pune come back. 1 lakh 30 is where Gujarat. 1 lakh 40. 1 lakh 50. They take it back Gujarat, but Pune say no. 1 lakh 60. 1 lakh 70 is what Gujarat is taking. They want the very first player at 1 lakh 70, but Pune say 1 lakh 80, 1 lakh 90. Gujarat take it back. 1 lakh 90, 2 lakhs for Sagar between a bidding war. 2 lakh 10,000 coming in for Gujarat Wolves. Pune say no. 2 lakh 20,000 is what they take it at. 2 lakh 30 is what they take. 2 lakh 40, Pune coming in. Gujarat want it back. 2 lakh 50 is what Gujarat take. 2 lakh 50, Pune say 2 lakh 60 is what we are going to raise the rank at. 2 lakh 60,000 for Pune Stallions. The current bid, 2 lakh 60. 2 lakh 70 is what Gujarat end up saying. 2 lakh 80 for Sagar is Pune raising the ranks, raising the bar. अपना पर्स को खर्च करने के लिए पूरा रेडी हो चुके Pune Stallions. Going once at 2 lakh 80,000. Pune Stallions at 2 lakh 80,000
Mumbai Grizzlies try to take it away, but Pune say no. 2,90,000 से 3 lakh हो चुका है अभी. That's going to be Pune Stallions going once for 3 lakhs for Sagar, and they say no. Mumbai come back into the picture. That's going to be 3,10,000. Pune say no. That's going to be 3,20,000. Pune Stallions at 3,20,000. Mumbai Grizzlies at 330, 340. Pune go for it. 3,40,000. Pune Stallions के पास अब पहुंच चुका है. That's going to be Sagar. 3,40,000 going once. 3,40,000 Pune Stallions. This player played for Bengaluru Badgers last year. Very highly contested player going twice. 3,40,000 is where we stand at. Do I see any more paddles across the room? I don't see any. It's sold. Pune Stallions get Sagar at 3,40,000. Saurabh bahut khush hai isse. Everybody was waiting for this. That's going to be now the highest bid player so far of GEPL season 3. Congratulations Pune Stallions. And इसी के साथ देखिए अभी भी बाकी है. Gujarat still haven't found your first. But let's take a look at the auction purse of every team. थोड़ा नहीं बहुत ही खर्च हो चुका है कैटेगरी ए में बहुत सारे टीम्स का, especially Pune Stallions. Let's take a look at the purse. As you can see, Mumbai Grizzlies still at 8 lakhs, not found their first. Gujarat Wolves as well. Two teams have to still get their first category A player. But Delhi Sharks sitting at the third place at 5 lakh 40. उसके बाद आती है Chennai Falcons at 4 lakh 80. Bengaluru at 3 lakh 40. Pune Stallions at 3 lakh 20. And इसके बाद Hyderabad Rhinos at 2 lakh 30. And the highest so far spent. And इसलिए मैं बात कर रहा था, Kolkata have 3 players जो maximum है category A से, who are sitting at 1 lakh 80,000. And Kolkata Hawks इसी के साथ they can't get any more category A players as of now. And that's the reason where Surjit Singh बहुत comfortably बैठ चुके हैं, because हमारा जो bidding था अब हो चुका है. We will wait for बाकी लोग अभी लड़ने दो, हमारा chance जब दोबारा आएगा category में वापस शुरू करेंगे. But yes, might be a very smart strategy. He has a total of 4 players now, just needs 4 more with 1 lakh 80,000. चलिए इसी के साथ let's move to the next player. It's going to be Ruturaj Giri. Ruturaj Giri from category A. Mumbai and Gujarat still have to get the very first player. चलिए stats देखते हैं. Rank 19, 550 runs, 237 strike rate. Bowling stats का अगर बात करेंगे, that's going to be 31 wickets, 17.5% dot balls, and win ratio यहाँ पे देखने के लिए मौका मिलेगा 66%. That is Ruturaj. चलिए इसी के साथ let's open up the auction floor for Ruturaj. My gavel's up. चलिए इसी के साथ देखते हैं base price of 1 lakh. Any bids for base price of 1 lakh? 1 lakh for Ruturaj. Base price 1 lakh के साथ any teams with their paddles. Once, twice. Oh, finally, just before the buzzer hits, it's going to be Gujarat Wolves at the base price of 1 lakh. 1 lakh for Ruturaj, base price 1 lakh going for right now Gujarat Wolves. Bengaluru Badgers come in at 1 lakh 10,000. तुरंत यहाँ पे purchase करने के लिए 1 lakh 10,000 Bengaluru Badgers after getting the initial highest bid player. But अब outbid हो चुके हैं बहुत सारे teams, but still you have a big purse. 1 lakh 10,000 going once for Bengaluru Badgers. Do I have any more paddles up? 1 lakh 10,000 for Ruturaj. Going twice for Bengaluru Badgers. Could be a really good steal. जो अभी कोई नहीं ले रहा है. And he is sold to Bengaluru Badgers at a very steal price of 1 lakh 10,000. Congratulations Bengaluru Badgers. And इसी के साथ आप भी अपना minimum criteria fulfill करते हो. Good stuff. Okay, so far this bid is now getting closer, as well as purse is getting limited. बहुत सारे teams खर्च कर चुके हैं, but Mumbai and Gujarat, I don't know what the plan is, but it's a master plan for sure. जबकि we've seen a 3 lakh 40 तक price bidding war, and I'm pretty sure they're going to be happy because उनके पास अभी बहुत सारा पैसा है, and the others have not much to outbid them. चलिए इसी के साथ congratulations 1 lakh 10,000 Bengaluru Badgers goes. They get Ruturaj, but with this, let's jump to our next player. चलिए बुलाते हैं हमारे next player up on our screens, जो auction में हमें दिखाई देंगे, and it's going to be Jeta Ram. Base price of 1 lakh. Let's take a look at his stats. Rank 6. Everybody is very familiar with him.
A really good hitter, 3,146 runs. अगर एक बार बैटिंग शुरू हो जाता है इनके बल्लेबाजी तो रोकना मुश्किल हो जाता है ये खिलाड़ी का. एंड बॉलिंग स्टैट्स अगर ध्यान देंगे वैसे ही वो बॉलिंग भी करते हुए नजर आते हैं. 194 विकेट्स, डॉट बॉल परसेंटेज ऑफ 15, विन रेशियो एट 70%. दिस इज जेटा राम एंड विद दिस हम चलिए अब ऑक्शन फ्लोर ओपन करते हैं फॉर जेटा राम. Let's start with a base price of 1 lakh for Jeta Ram. Do I see any bids coming in for Jeta Ram? Base price of 1 lakh. Delhi Sharks open up the bid. 1 lakh is what Jeta Ram stands at. 1 lakh, base price of 1 lakh, and instantly Gujarat take it at 1 lakh 10. 1 lakh 20 is what Delhi say. 1 lakh 30, Gujarat end up taking. 1 lakh 40, Delhi back into the battle of bidding. 1 lakh 50, यहाँ पे Gujarat Wolves. 1 lakh 60, Delhi Sharks. 1 lakh 70, वहां से 1 lakh 80 for Chennai, outbidding Gujarat. 1 lakh 80 से 1 lakh 90 for Delhi Sharks. 1 lakh 90, 2 lakhs यहाँ पे जेटा राम के लिए चेन्नई. 2 lakh 10,000 is what Delhi Sharks, and यहाँ पे एक और bidding war between 3 different franchises taking over. 2 lakh 20, Gujarat take it. Chennai, do you want it at 2 lakh 30? They say no. 2 lakh 20 is where it sits at for Gujarat Wolves, and Mumbai Grizzlies at 2 lakh 30,000 coming into the battle. And अभी जो दो टीम है गुजरात एंड मुंबई है 230 से 240 यहाँ पे लेते हुए. That's going to be जेटा राम for गुजरात से मुंबई. मुंबई से अब वापस वो 2 lakh 50 पे जा चुका है गुजरात के पास. 2 lakh 60 मुंबई ग्रिजलीज end up taking. 2 lakh 60, 2 lakh 70, 2 lakh 70 से 2 lakh 80 मुंबई छीन लेंगे from गुजरात. 2 lakh 80 मुंबई ग्रिजलीज. 290 is what Gujarat said, but 3 lakh यहाँ पे मुंबई ग्रिजलीज ने बोल दिया. 3 lakh 10,000 is Gujarat, but 320 बोलते हुए मुंबई ग्रिजलीज. The amount of money these two have, 310 से 320 यहाँ पे for Gujarat. 330 for Mumbai Grizzlies. Mumbai Grizzlies से 340 for Gujarat Wolves. 3 lakh 40,000, 3 lakh 50, breaking another highest bid player. Mumbai Grizzlies at 3 lakh 50,000. Mumbai Grizzlies, ये देखिए पर्स का फायदा अब हो रहा है मुंबई ग्रिजलीज और गुजरात को. Going once, 3 lakh 50,000 for Mumbai Grizzlies. 3 lakh 50,000 is where we are sitting at. Do we see the paddle coming up from Gujarat? 3 lakh 50 going twice. 3 lakh 50 going twice. Anything coming in from Gujarat? Sold. 3 lakh 50,000 Jeta Ram. That is a very big bid. सुरजीत पाजी अपने सिर पकड़ चुके हैं कि इतना गया है ये पर्स. Congratulations. That is a really wonderful pick coming in, and Mumbai अपना पहला खाता खोलते हुए अभी के लिए. Mumbai Grizzlies get 3 lakh 50,000 for Jeta Ram. JD, आप सोच रहे थे, आप इनसे खेले भी थे, you wanted him in his team, but Mumbai said we have a bigger purse. Purse का value same ही था, but he still did the outbidding. But I understand आपका strategy होगा. Now that his price, his auction purse total has come down, अब मौका मिलेगा बाकी सबको. Let's take a look at the chance, जैसे मैंने बोला था किसका होगा. अब स्क्रीन पे सामने आ चुके दिपेश. दिपेश is the next player up on our auction screen. चलिए stats के ऊपर ध्यान देते हैं. Hashtag 9 is Dipesh with a total runs of 1,256 in his batting stats with a strike rate of 229. Bowling stats का अगर बात करेंगे 54 wickets, dot ball 21%, and win ratio यहाँ पे ज़्यादा है, meaning he converts his games and he's not hit a lot. That is the reason conversions जल्दी देखने के लिए मौका मिला है 80%. इसी के साथ let's open up the auction floor for Dipesh. Base price of 1 lakh. Do I see any bids coming in at a base price of 1 lakh for Dipesh? 1 lakh base price. Once. Last chance if anybody wants to call twice. He remains unsold for the time being. Dipesh will be unsold. Can we move to the next player? Dipesh will be back into the pool either as a cascaded player or to fulfill the criteria of minimum 2 players in category A. इसी के साथ let's move to our next player upon the auction. Let's bring him up on our screens. Franchisees, आप ध्यान दीजिए अपने screens पे because this player could be your next player who you'll be picking up. And it's going to be Ratikanta Sahu. Ratikanta Sahu, Chennai Falcons पिछली बार इनके टीम में थे. Let's take a look at his stats.
Hashtag 7 is where he stands at. 3,186 runs. Strike rate of 256. And bowling stats का अगर बात करेंगे 199 wickets. Dot ball percentage at 16. Win ratio at 67%. Okay, let's open up the floor for bidding now. Ratikanta Sahu. Base price of 1 lakh. Base price of 1 lakh, and Chennai Falcons instantly with the paddle at base price of 1 lakh for Ratikanta Sahu. Gujarat, you have a big purse, 1 lakh 10. Mumbai say we still have a chance, 1 lakh 20. Chennai Falcons at 130 right now. 130. Mumbai Grizzlies want to take it back, 1 lakh 40. Mumbai Grizzlies ke paas, 1 lakh 50. Chennai Falcons trying to take it away, 1 lakh 50. Chennai Falcons right now have the bid. Gujarat, are you going to be back into this bid? 1 lakh 50 for Chennai Falcons going once. Gujarat, you have a chance. Ratikanta Sahu, 1 lakh 50 going twice. That is Chennai Falcons right now having the bid. I don't see any more paddles, and Ratikanta Sahu will be sold. Congratulations, there's going to be a steal, and Chennai Falcons Sukhpreet Singh is very happy as he also fulfills his criteria of the players from category A. Congratulations, 1,50,000 for Chennai Falcons on Ratikanta Sahu. This is still category A. जो भी दर्शक देख रहे हैं, this is still category A. अभी भी category B and C बाकी है. We still have to see if they fulfill their criteria of minimum 2 players. But इसी के साथ, let's move to our next category A player. It's going to be Vikas Shaw. Vikas with a base price of 1 lakh. Category A के players सारे 1 lakh base price के साथ. Let's take a look at his stats, please. Vikas, hashtag 3 on the rank, 221 in strike rate of the batting stats, and इसी के साथ runs 1,367. Bowling stats 91 wickets, 51.42 percentage in dot balls, and 68 in his win ratio. चलिए, ये है Vikas. This is again hashtag 3, so he is up on the rankings. This is all basis of his season 3 qualifiers. Let's open up the floor with a base price of 1 lakh. Any bids? Gujarat started off, then Pune coming at 110, Delhi at 120, 120 for Delhi Sharks, 130 for Gujarat Wolves, 130, 140 Delhi Sharks back into it, 1 lakh 50 take it away by Gujarat Wolves, and up Delhi Sharks वापस आते हुए at 1 lakh 60, 1 lakh 60, 170 say Gujarat Wolves, but trying to take it away was Delhi Sharks at 1 lakh 70, but 1 lakh 80 पे Mumbai Grizzlies right now have the bid, 1 lakh 90 पे आते हुए Delhi Sharks, 1 lakh 90,000 for Delhi Sharks, 1 lakh 90 say 2 lakh Gujarat Wolves opening up their purse right now, trying to outbid everybody. Gujarat Wolves 2 lakhs for our player up on the screen, Vikas. 210 is what Delhi Sharks say before I go once for it. Right now Delhi Sharks at 2 lakh 10,000, 2 lakh 20. Gujarat having the purse 2 lakh 20,000. Going for it, do I see any bids coming in going once? Delhi say we still have a chance, 2 lakh 30 for Vikas. No say, as Gujarat pick it up at 2 lakh 40. 2 lakh 40,000 is what right now the bid stands at for Gujarat Wolves going once. 2 lakh 40,000 going twice. Do I see any more paddles? And yes, say before I beat the gavel, I see 2 lakh 40, say 2 lakh 50 is what Mumbai Grizzlies rank it up. 2 lakh 60 पे यहाँ पे वापस आते हुए 2 lakh 60 is Gujarat Wolves coming into the picture. Gujarat Wolves at 2 lakh 60. Any more bids coming in from Mumbai Grizzlies? Delhi Sharks 2 lakh 60 going once. Delhi say completely no to it. Do I see any more 2 lakh 60,000 for Vikas going twice? Any more bids? Sold. Vikas will be sold. Congratulations Gujarat, you get your very first player. That's going to be 2 lakh 60,000 for Gujarat Wolves, the very first player from category A. And that is also a big bid for the very first player. Chale, let's bring
The next player, congratulations right now Gujarat Wolves for getting your very first player. इसी के साथ let's bring the next player up on the auction of category A because Gujarat still has to find their second player and सारे franchises को ध्यान देना पड़ेगा. This is the second last player from category A. That is going to be Rohan Patel. Rohan Patel. Let's take a look at his stats, please. Rohan Patel, hashtag 24, 1406 runs, strike rate 219. Bowling stats का अगर बात करेंगे 97 wickets, dot balls at 19%, so far looks on the higher end on the bowling stats, and win ratio का अगर बात करेंगे at 70%. चलिए इसी के साथ let's open up the auction floor for Rohan Patel. And Delhi Sharks instantly at the base price of 1 lakh. 1 lakh base price for Delhi Sharks. 1 lakh base price Delhi Sharks with the current bid going once. Do I see any bids coming in for Rohan? Gujarat now take it at 1 lakh 10. 120 instantly Delhi Sharks. 120, 130 is what Gujarat said, but Delhi say 140 instantly increment. 1 lakh 50 is what the Mumbai come in from, and right now Gujarat at 160, 170 यहाँ पे Delhi Sharks अपने bid place करते हुए 1 lakh 70,000 Delhi Sharks, but instantly taking it back 1 lakh 80. They say no to the 1 lakh 80 by Gujarat to 1 lakh 90 by our Delhi Sharks. They are clawing their teeth in everybody's pick. 1 lakh 80 right now stands for the Delhi Sharks. 1 lakh 90 instantly going back. 1 lakh 90. Akshat wanted it, but he's still fighting for 1 lakh 90. Say 2 lakh यहाँ पे देखने के लिए मौका मिलेगा. 2 lakh for Rohan. 2 lakh for the Delhi Sharks. They're taking a pound of the purse from Gujarat. 2 lakh 10 पे यहाँ पे वापस आते हुए Gujarat Wolves. Now Akshat has to think twice, but he says no to the thinking. Instantly picks the paddle. 2 lakh 20 पे यहाँ पे Delhi Sharks. Delhi Sharks at 2 lakh 20,000. Back again is Gujarat. 2 lakh 30,000. Delhi Sharks still going for the bid at 2 lakh 40,000. 2 lakh 40 for Rohan Patel. The stats of the bowling now kind of intriguing. यहाँ पे लग रहा है that should be the best player that Akshat wants. Going once at 2 lakh 40 for Delhi Sharks. I don't see any more paddles. Going twice for Delhi Sharks at 2 lakh 40,000. Any more bids? This is where it will close, and he will be sold at 2 lakh 40,000. Delhi Sharks, congratulations. They are happy, shaking their head, and Gujarat Wolves backing down. Sharks showing why they jump into deep waters. Congratulations, Akshat, and the entire team of Delhi Sharks for getting Rohan at 2 lakh 40,000. That was the last second player of our category A. Now let's move to the last player of category A, जो अभी तक auction पे नहीं आए थे. Who is the last player? Let's take a look at it. It's going to be Hitesh, our last player of category A. Let's move into his stats, please. Stats of Hitesh for our auction. That is going to be Hitesh at hashtag 14. His current run in the batting stats is going to be 1,963 runs. His strike rate at 215. अगर bowling stats के बारे में बात करेंगे 129 wickets, 16.72% dot balls, and win ratio around 70%. And this win ratio is something that everybody will keep an eye out, and especially his current stats in the qualifiers has given him the rank of 14. This is Hitesh's stats, and franchisees ये आखिरी खिलाड़ी है कैटेगरी ए के ऑक्शन में अभी आने वाले हैं. Okay, let's open up the floor for Hitesh, the last player from category A. And in case the category is, the criteria is still not fulfilled, जहाँ पे आपके पास minimum 2 player अभी तक आए नहीं है, then we will again get some of the players back and make that criteria fulfill. उसके बाद the cascading will happen. Let's open up the floor for the auction for Hitesh. Any paddles up at the base price of 1 lakh. 1 lakh base price for Hitesh. Do I see any paddles at the base price for Hitesh at 1 lakh? Once, before I call it unsold, twice, and Hitesh will remain unsold right as of now.
Hitesh will remain unsold. No bids for Hitesh at this moment. That comes to the end of जो हमारा tier A या category A था, जहाँ पे 25 players थे. But we'll quickly check if every team has a minimum of 2 players, which is the criteria जहाँ पे हमारे auction category A से category B पे जाने वाला है. Can we look at the auction purse now, along with the number of players that every team has? Can we move to that? That gives us an idea कि सबके पास players है या we have to go back again. And as you can see, almost every teams have close to more than 2 players of the minimum criteria. यहाँ पे हमें देखने के लिए मौका मिल रहा है Chennai Falcons along with Bengaluru Badgers and Kolkata Hawks, who have total of 4 players. And Hyderabad Rhinos साथ ही में Delhi Sharks along with Pune Stallions have also finalized their minimum 2. But Gujarat as well as Mumbai, they still need to find 1 player before we can proceed to category B of the auction. Okay? And they are the ones who have the highest purse as of now, 5,40,000 for the Gujarat Wolves, and Mumbai Grizzlies at 4,50,000. This is where we stand at. So we will go back in the auction from category A, pick some more players, and this is especially for Gujarat as well as Mumbai. You have to get minimum 2 players from category A. तो आपको अब आपके players के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, and you have to spend a base price of 1 lakh without anything else. Okay, इसी के साथ let's bring back the auction players from category A. Okay, before we go into bringing them back into the auction itself, हम इससे पहले जाएंगे एक छोटे से break के तरफ. You have an idea of the auction purse and everything. जितने players अभी भी आने वाले हैं is 2 more players who will join, respectively for Mumbai Grizzlies as well as Gujarat Wolves इस break के बाद, so don't go anywhere. जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद
जल्दी उसे आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद Hello. Can you hear me? Yes. Welcome back everybody to Jetins's presents Global E-Cricket Premier League Season 3. Ye hamara cricket hai and we are on the auction day. It is powered by our official partner Lenskart, played on Real Cricket along with our strategic partner Sky Esports and Global Music Junction. हमने अभी तक देखा है it was category A auctions जो चल रहा था and minimum criteria जो था is 2 players per team. अभी के लिए it's only Mumbai Grizzlies and Gujarat Wolves who have not gotten their second player, तो हम उसके वजह से we're going to get some of the players back and it's going to be the first player Rudra Sethi up on our screens. We've already seen his stats. एक और बार आप देख सकते हैं Rudra Sethi at #25. That's his stats. Let's open up the auction floor. For the auction itself, it is for Gujarat as well as Mumbai. Others can bid, but इनके लिए main है. It's going to be starting off with a base price from Gujarat Wolves at 1 lakh. 1 lakh base price for Gujarat Wolves. Anybody else as well can, except for some of the teams as Kolkata Hawks, जिनके पास already 3 maximum category A players हो सकते हैं, वो already है. Going once at base price of 1 lakh for the Gujarat Wolves. I don't see any more paddles. Mumbai, are you looking forward to Rudra Sethi? Going twice at the base price of 1 lakh right as of now for Gujarat Wolves. I don't see any more paddles coming up. Sold for Gujarat Wolves. Congratulations. And इसी के साथ अपना जो minimum 2 का team criteria है from category A, they have gotten it. Congratulations. 1 lakh base price. That is going to be Gujarat Wolves getting Rudra Sethi. Congratulations. Chaliye, that is 1 lakh for Rudra Sethi, Gujarat Wolves. They get him. Congratulations. He's going to be the player sold for Gujarat Wolves at the base price itself. A steal deal is what he's gotten at for the side of Gujarat Wolves. Chaliye, इसी के साथ next player की तरफ चलते हैं. Gujarat have fulfilled their criteria of minimum 2 players from category A. Chaliye, next is going to be Yuvraj Singh, who is going to be the player. Yuvraj Singh, you've seen his stats. Let's open up the auction floor for the auction itself. Yuvraj Singh with the base price of 1 lakh. Do I see any paddles coming up? Paddles for Yuvraj Singh. Mumbai Grizzlies, they are the ones, the last ones who are looking forward to a minimum of 2. बाकी teams में इसमें participate कर सकते हैं in case they want to take it away. But it's going to be at the base price of 1 lakh. Mumbai Grizzlies calling once. Do I see any more paddles up? Going twice. No more paddles. It is going to be sold for Mumbai Grizzlies. Yuvraj Singh, congratulations. Base price of 1 lakh is what Mumbai Grizzlies get Yuvraj Singh at. Once again, that will fulfill our minimum criteria of 2 per team. But इसी के साथ we'll still, because as we said, maximum of 3 players can be there. Some of the players might come up on our screens. चले इसी के साथ next player की तरफ चलते हैं. He might be one of the last coming up from the category A in case anybody wants to bid for. Bhupendra Patel. Base price of 1 lakh. We already saw his stats. Can we open up the bidding floor for Bhupendra Patel for our season 3? Any paddles coming up? Base price of 1 lakh for Bhupendra Patel. Base price of 1 lakh for Bhupendra Patel.
Once, I don't see any more paddles. It seems like none of them want players at 1 lakh now want to cascade because बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा तो हुआ है इस first category A में twice, and he will remain unsold from category A. And now with the minimum criteria जो fulfill हो चुका है 2 players का per team, इसके वजह से category A के players will now start cascading to category B. Unsold is भूपेंद्र पटेल. Base price का bid अभी हमें देखने के लिए नहीं मिला. He will be unsold. This is our कैटेगरी ए ऑक्शंस जो हम देख रहे थे, एंड इसी के साथ वंस भूपेंद्र पटेल hasn't been sold but minimum 2 का क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है. Franchisees, now all the players from category A who have been unsold will move to category B, meaning their base price will now change to 60,000, not their ranks, not their stats. इसी के चलिए देखते हैं पर्स के तरफ कितना पर्स बाकी है after fulfilling the minimum criteria from every team. गुजरात वुल्व्स के तरफ से we end up seeing 4,40,000 बचा है, 3,50,000 for Mumbai Grizzlies, Chennai Falcons at 3,30,000, 3,20,000 for Pune Stallions, Delhi Sharks have 3 lakhs, Bengaluru Badgers at 2,30,000, Hyderabad Rhinos के पास भी है same 2,30,000. Last but not the least, Kolkata Hawks, who have 3 players from a category A, have the least purse for the time being, but 1,80,000 hai, meaning they still have a chance to purchase their other 4 players to fulfill the squad of 7 in the bidding and make the whole 8. But इसी के साथ, let's take a look at the highest bid players so far in our category A. चलिए देखते. It is going to be the most expensive player, starting with Jeta Ram, जो 3,50,000 में देखने के लिए मौका मिले थे. सागर अंजना at 3,40,000. उसके बाद आए सचिन चौहान at 3,30,000, which went to the Hyderabad Rhinos. The first 2 was for Mumbai Grizzlies and Pune Stallions respectively. हमारा fourth, that is Golden Kumar at 3,10,000 for Kolkata Hawks. Soumyadipta Biswas at 2,70,000 for Bengaluru Badgers, going back to the squad that he played in the last year. Funny Kiran going to Delhi Sharks at 2,60,000. ये हमारा top 6 bids and the expensive players so far. And it is all thanks to you. मैं बोलना चाहूँगा, इतना पैसा आप लोगों ने खर्च किया है इन players के ऊपर, and I hope they are also going to be delivering. But इसी के साथ एक चेहरा जो है बहुत खुश नजर आ रहा है, चेन्नई फैल्कन्स. इस बार उन्होंने हाईएस्ट एक्सपेंसिव बिड डाला ही नहीं है, दिख भी नहीं रहे इसमें. बोल रहे इस बार वो काम में नहीं करने वाला. But this is so far the highest bids जो हमने देखा है, most expensive players from category A. चलिए, let's move to the next one from here on, क्योंकि category A अभी के लिए खत्म हो चुका है. Let us take a small break. इस बीच में you can strategize, people who are watching online. अब आप सोचिए category B में कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं एंड कौन से टीम्स में जा सकते हैं. यू कैन स्टार्ट पुटिंग इट इन द चैट एज वेल. बट इस टाइम पे फ्रेंचाइजीज, मार्की प्लेयर्स, टीम मैनेजर्स, ऑल ऑफ यू थिंक स्ट्रेटजीज. अब कैस्केडिंग प्लेयर्स भी दिखने वाले इन कैटेगरी बी. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. हमारे साथ पिछली बार के चैंपियन और रनर अप जुड़े हैं. मेरा नाम सुप्रीत सिंह है, मैं चेन्नई फाल्कन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं मुंबई ग्रिजली टीम का कैप्टन हूँ. हेलो, माय नेम इज़ सुरजीत सिंह, मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस बार मैं कोलकाता हॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हेलो, मेरा नाम जेडी वेर्ड है, मैं इंडो पाक बॉर्डर राजस्थान की पावन धरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ. इस सीज़न मैं गुजरात वुल्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो पिछली बार से इस बार कंपटीशन क्या टफ आपको लग रहा है, क्या अलग आपको लग रहा है? हाँ, एक तो टीमें 6 से 8 हुई हैं इस बार, तो जीतना भी थोड़ा टफ है और 2 अच्छे मार्की प्लेयर भी आए हैं, तो अच्छा कंपटीशन होएगा सर. लेकिन जीतेगी तो चेन्नई. ये थर्ड सीजन है, काफ़ी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और कंपटीशन हाई हो रहा है उससे. मुझे लगता है इस सीज़न 2 टीम और बड़ी है तो कंपटीशन भी और नेक्स्ट लेवल होगा. अब ये बताओ कि पिछली बार आपकी टीम में खिलाड़ी थे जेडी, वन ऑफ द बेस्ट पिक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट बिड. अब वो खुद की टीम लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा डर ऐसा लग रहा है कि आपका बढ़िया प्लेयर भी निकल गया और अब भी टीम लेके आ रहा है. सर डर तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तो पहले भी अच्छा ही था तो अभी भी होएगा. और जेडी भी गए हैं लेकिन उनसे बेटर और भी प्लेयर हैं जो नए आए हैं ऑप्शन. तो अर्जुन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली बार ऐसी क्या कमी रह गई कि चैंपियन नहीं बन पाया, मतलब इतने से रह गए, क्या ऐसी कमी रह गई थी? हम लोग ओवरऑल अच्छा खेले थे बट लास्ट मैच में लक नहीं चला थोड़ा, तो प्रेशर में हो जाता कभी कभी, बट हम सीख के आगे बढ़ेंगे और अच्छा खेलेंगे. पिछले सीज़न में हमने कुछ रोल्स गलत दे दिए थे, जो हमारे मेन रोल्स थे बैलेंस्ड, और
ब्रूट, वो काम नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी हमने प्लेऑफ तक किया था, क्वालीफायर 2 खेला था। उसमें भी एक बॉल गलत चली गई, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था। हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। आपने 2 टीमें और की बात की तो इसी टॉपिक पे आते हैं। पिछली बार आप एक टीम में खेले तो आप हाईएस्ट बिड प्लेयर थे जुड़ी। इस बार आपने अपनी खुद की टीम बनाई है, तो क्या अपने पुराने लीडर को आप इस बार हराने वाले हो? सिर्फ एक लीडर को नहीं, बाकी जो 7 टीम और खेल रही है उन सबको हराने की ट्राई करेंगे। ओके, आपका क्या प्लान है इस सीजन के लिए? जीतना है भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जेडी भाई, पिछली बार की जीत में एक बहुत बड़ा हाथ आपका भी था। ऑल्दो हमने बात की थी कि सीजन में बहुत समय तक आप चले नहीं थे और फिर आप चले और बहुत कमाल खेला, तो इस बार क्या नया जेडी में दिखा रहा है, क्या अलग होने वाला है आपके इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से? अब फर्स्ट सीजन में एज ए कैप्टन खेला, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गया था। मैं चाहता हूँ इस बार एक कैप्टन जेडी दिखे। इस बार ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जिस पे आप दोनों की नजर है, मतलब आपके लिए कौन सा वो एक प्लेयर है कि ये अगर मेरी टीम में आ गया तो बढ़िया, मैं इसके लिए तो बिड करने वाला हूँ? सागर पटेल एंड गोल्डन। ओके, 2 नाम बता दिए पाजी, आपकी बारी। हाँ, सागर और जेठाराम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे टफ टीम आपको क्या लग रहा है कौन बना सकता है, किस मार्की प्लेयर पे आपको लग रहा है कि मतलब वो सबसे बढ़िया प्लेयर स्टील करने वाला है? मुझे लग रहा है देवेंद्र। मेरे हिसाब से सारे अच्छे प्लानिंग के साथ आए हैं, बट सुखप्रीत सिंह के बारे में सब लोग बोलते हैं फाइनल प्रीत सिंह है, तो लगता है उनकी टीम सबसे अच्छी होगी। चलो, सागर के तुम्हें समझ आ रहा है कि बिड वॉर तो जाने वाली है, दैट्स गुड जी। अब पिछली बार हमने एक प्लेयर की चर्चा की थी, गोल्डन, बहुत तगड़ा प्लेयर था, मुंबई के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ था। क्या इस बार आपको लगता है कि गोल्डन वापस आपके पास आना चाहिए, यू कैन अगेन डू द सेम थिंग, क्योंकि वो तो बिड करने वाले गोल्डन के लिए? जी बिल्कुल, ट्राई करेंगे, बट हमारे हाथ में नहीं है। अगर ओवर प्राइस हो गया तो छोड़ना ही पड़ सकता है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या एक बजट होता है या क्या दिमाग में चल रहा होता है वाइल बिडिंग, कि यहाँ तक मैं जाऊंगा, फिर इधर अगर मैंने ड्रॉप कर दिया तो मैं नेक्स्ट किस प्लेयर को पिक करूंगा, क्या चलता है उस पॉइंट पे? जैसे सर पता है हमें हर प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी है। हमें 4 बैट्समैन चाहिए, तो 4 बैट्समैन हमें ऑलमोस्ट हम 70-80% बजट उन पे लगा सकते हैं ऑप्शन का। बॉलर्स हम काम चला लेंगे। तो लास्ट टाइम जो हाईएस्ट बिडेड प्लेयर था वो भी मेरी टीम में था, अभी वो खुद कैप्टन है, तो उतना बजट तो मेरे पास है ही, मैं उसके बदले में किसी को भी ले सकता हूँ और टीम में से। ओके, एंड आपका क्या प्लान है बजट अपना स्पेंड करने का? हाँ, स्मार्ट बिडिंग करेंगे, तो ट्राई करेंगे 4 से 5 प्लेयर अच्छे लें और अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं। कौन सा एक प्लेयर आपको लगता है, कौन सा एक कैप्टन आपको लगता है जो फाइनल नहीं खेलने वाला है सीजन? मुझे लग रहा है जेडी बैरन। जेडी भाई, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, बताइए कौन सा एक आपको लग रहा है कैप्टन जो नहीं खेलेगा इस बार? सुजीत पाजी का ही लूंगा, अभी इन्होंने लिया है तो। बट अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो फिर किसका नाम था आपके जहन में? मुझे लगता है इस सीजन देवेंद्र पाजी नहीं खेलेगी। चलो, 2 नाम मिल गया हमें जेडी भाई के साइड से। और एक ऐसा कैप्टन जिसका आपको लग रहा है चांसेस बहुत हाई हैं कि वो सबसे तगड़ी टीम बना के जाएगा? सुखप्रीत के पास वो है, और दविंदर ने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया है, जो से हमारी नॉर्मल टॉक्स होती हैं, तो मुझे लग रहा है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसा होता है क्या कि मतलब जब आप सारे प्लेयर्स एक साथ होते हो, मोस्टली यू गाइस टॉक अबाउट टीम कि हम ये प्लेयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं? हाँ, बातों बातों में थोड़े डेढ़ छाने होते हैं ना, वो बातों बातों निकलवाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने ट्राई किया निकलवाने का? हाँ, कुछ लोगों को पता लग गया, लेकिन प्रेफरेंसेस पता होती है ना, जब आप एक कम्युनिटी में होते हो तो प्रेफरेंसेस आपको पता होती है प्लेयर्स। जेडी भाई, मेरे हिसाब से सुखप्रीत पाजी दोबारा अच्छा कर सकते हैं। क्या आपने ट्राई किया निकलवाने का कि कौन किस प्लेयर को पिक करने की कोशिश करेगा? वैसे तो मुझे बहुत सारी जानकारी है कि कौन किसके ऊपर जाने वाला है, बट मेरा मेनली फोकस मेरी खुद की टीम पे है, बाकी पे नहीं है। तो कोई एक प्लेयर जिसके पीछे आप रेडी हो अच्छी बिड डालने के लिए? लास्ट सीजन की एक टीम थी जो वैसे तो टेबल पे लास्ट पे रही है, बट उसका एक प्लेयर है सागर पटेल, उस पर मैं बहुत अच्छे मतलब ऊपर तक जाना चाहूँगा। पिछली बार की हमने आपसे चर्चा की थी और आपने बोला भी था कि एक टीम जो आपको लग रहा है बहुत स्ट्रांग है वो मुंबई थी, आपने पिछली बार भी कहा था। इस बार आपको क्या लगता है कौन सा कैप्टन सबसे स्ट्रांग टीम बना सकता है, कौन सा मार्की प्लेयर सबसे स्ट्रांग टीम बना सकता है? देवेंद्र एंड अक्षत। चलो, बहुत बढ़िया भाई, आपके लिए? सुखप्रीत, अक्षत। नाइस, बहुत बढ़िया। कौन सा एक मार्की प्लेयर जो आपको लगता है कि इस बार भी उससे तो नहीं होने वाला? सौरभ। सुरजीत सिंह। कारण बताएंगे दोनों एक करके, पहले आप आइए। सर वो पिछले 2 सीजन से बॉटम पे ही रह रही है, तो लग रहा है ऐसा भी रहेगा। उसका लक बहुत खराब है, मतलब वो टॉस के मामले में हार जाता है तो अच्छा, ये आप लोग मानते हो क्या कि जो टॉस हारता है वो मैच जीतता है, या ऐसा कुछ होता है? 70-80% होता है सर। होता है। हाँ।
कितना डिपेंड करता है स्टार्टिंग ओवर अच्छे होना, क्योंकि पिछली बार अगर मुंबई की हम चर्चा करें, मुंबई वाज अ टीम जिनके स्टार्ट के 1-2 ओवर खराब गए थे बट कमबैक बहुत तगड़ा कर लिया था। तो स्टार्टिंग ओवर पाजी कितना आपके हिसाब से इफेक्ट करता है? हाँ सर, पावर प्ले तो इंपॉर्टेंट होती है वाइल बैटिंग एंड बॉलिंग, बट ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा मैच लूज कर जाते हो, तो कमबैक करने का मौका तो होता ही है भाई आपके लिए। मतलब ग्राउंड ऐसे छोटे होते हैं ना, सिंगल डबल होते नहीं आसानी से, तो उससे मतलब लो स्कोरिंग मतलब मैच भी डिफेंड हो जाता है इससे। ओके, और मेरे को ये जानना है कि पिछली बार की आपकी जीपीएल की बेस्ट मेमोरी क्या है? ऑब्वियसली ट्रॉफी लिफ्ट करना। मुझे तो याद है फोटो भी आई थी बहुत तगड़ी वाली ट्रॉफी के साथ, आई रिमेंबर दैट फोटो। भाई आपके लिए बेस्ट मेमोरी पिछले जीपीएल की? बेस्ट मेमोरी वो ट्रॉफी मिस हो गया, वो उठाने के साथ। ये बेस्ट कैसे हुआ? ये तो उनकी बेस्ट हो गई। सचिन से बात की हुई। अच्छा वो लड़की वो खुश था ना, आपके लिए खुश थे? अच्छा हाँ, नहीं गिफ्ट भी मिला था, ईयरबड्स। सारा जी। हाँ अरे सचिन से वीडियो कॉल, उससे बड़ी मेमोरी क्या होगी? तो क्या बेस्ट मेमोरी थी आपकी? हाँ, सचिन सर से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो वो बेस्ट मेमोरी है मेरी। चलो बहुत बढ़िया। और क्या ऐसा कोई प्लान है कि मतलब बस किसी एक बंदे को जो प्लेयर चाहिए उसे रोकने के लिए आप थोड़ा सा बिड ऐसे हाई करने वाले हो? यू डोंट वांट टू बाय दैट प्लेयर बट आप थोड़ा बस ऐसे बिड बढ़ाओगे साइड से? हाँ सर, वो स्ट्रेटजी तो होती है। अगर कोई सामने वाला अच्छा प्लेयर कम बजट में लेके जा रहा है तो बाद में फिर वो आपको ही तंग करेगा। मेरे टारगेट तो प्लेयर्स हैं जो मैंने लेने, लेकिन सामने वाला भी अगर कोई अच्छा प्लेयर कम में लेके जा रहा है तो उसको हाई तो करना चाहिए थोड़ा सा। मतलब सामने का पर्स खराब करने का ट्राई करेंगे भाई? आपके लिए अपनी गेम खेलेंगे या पर्स वाला गेम? नहीं, सेम स्ट्रेटजी है। बाकी आप वीडियो कब डालेंगे पता नहीं, तो किसी का नाम नहीं ले सकते ना। ये पार्ट बहुत अच्छा है भाई। आपके लिए कोई एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए आप बिड करने को तैयार हो अच्छा खासा? सागर पटेल और गोल्डन, इन दोनों में से किसी एक पे मैं ऑल इन हो जाऊंगा इस बार, मुझे लग रहा है। गोल्डन आई थिंक पिछले बार उन्होंने हैट्रिक भी ली थी, बहुत बढ़िया। नहीं, उसे गेम की अच्छी नॉलेज है। गेम के चुनाव है, नाइस। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग है इस बार, क्योंकि इस बार जब ऑक्शन हो रहा है सारे वहीं बैठने वाले हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि आपको अगर लग रहा है कि भाई जीडी ना ये वाला प्लेयर पिक करने वाला है, तो आप थोड़ी सी बिड साइड से बढ़ाने का ट्राई करोगे? मतलब आपको वो प्लेयर चाहिए नहीं, बस आप बिड बढ़ाने का ट्राई करोगे? हाँ, लेकिन रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि, क्योंकि अगर मैंने एक बिड भी कर दी तो चिपक भी सकता है ना प्लेयर मेरे में, और एक स्पॉट मेरी भर जाएगी। तो मतलब ओवर स्मार्टनेस में कई बार घाटा भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम अच्छी बनाऊँ। ठीक है, आपका कुछ प्लान जीडी वैसे बाकी को तंग करने के लिए? नहीं, मैं बाकी को तंग तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने सारे प्लेयरों की एक वैल्यूशन सेट की है, तो मैं हर एक प्लेयर को उतना बजट देना चाहूँगा कि ये प्लेयर इस वैल्यूशन तक का है, तो मैं अगर वो उतनी प्राइस में मिलता है मुझे, तो मैं अपनी टीम में ऐड करना चाहूँगा। आपने अपनी बजटिंग कर रखी है, तो कोई एक ऐसा प्लेयर जो आपको लग रहा है जो किसी और की टीम में था लेकिन इस बार आप उसे स्टील करना चाहें? इस सीजन विकास साहू, जो लास्ट ईयर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर था, तो उसको मैं अपनी टीम में लेना चाहूँगा। भाई आपके लिए? है मेरे मन में भी विकास बिश्नोई है जिसका इसने नाम लिया, विकास है, और अमन विश्वकर्मा है जिसके ऊपर एक और प्लेयर है जिस सीजन में कैप्टन था उस सीजन MVP रहा, नेताजी। जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद
छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका वापस से GEPL सीजन नंबर 3 एंड भाई साहब ये क्या पिच चल रही है भाई, व्हाट इज हैपनिंग। सबसे महंगा प्लेयर इस खेमे पे आया। यस वी टॉक अबाउट मुंबई। चलते हैं मुंबई के कप्तान साहब से थोड़ी चर्चा करते हैं। कप्तान साहब क्या प्लान है, ये इतना महंगा प्लेयर उठा लिया आपने? जी काफ़ी प्लेयर ट्राई किए थे हमने और हाई बिड जा रही थी, बट लास्ट में ऑप्शन मतलब जो बचा था उसमें J2 बेस्ट था, तो मैंने उस पर ट्राई किया। चलिए जेठाराम की अपने बात के साथ तो हमने सागर का भी देखा, गोल्डन का भी देखा, बहुत हेवी बिट्स गए जो आपने बात सही कही। बट क्या इसे स्ट्रैटेजी कही है, इसे मजबूरी कही? क्योंकि कुछ आपके प्रतिद्वंदी बैठे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ये तो अब इनकी मजबूरी रह गई है। नहीं, मेरी लिस्ट में ही था J2 और मैंने मतलब लिस्ट में बना रखा था, अभी उसको लेना ही है। और बाकी प्लेयर मैंने जितना टारगेट किया था उससे ज़्यादा चले गए, तो मैंने फिर लास्ट में वो बचा था ऑप्शन, तो लेना ही पड़ा। तो अभी इस पॉइंट पे आपको लगता है कि अभी भी गेम बचा है? क्योंकि पर्स आई कैन सी देयर इज अ वेरी गुड प्राइस, 3.5 अभी भी आपके पास है, तो स्पेंडिंग पावर अच्छी खासी है। कैटेगरी बी कैटेगरी सी का वेट हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, कैटेगरी बी में काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो उस पर ट्राई करेंगे और उनमें से मान के चले 2 प्लेयर लेंगे अच्छे। चलो पाजी, ऑल द बेस्ट, वी आर वेटिंग फॉर दिस वन। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग विद द मुंबई गाइज, आई थिंक वी नीड टू टॉक विद द हैदराबाद गाइज आल्सो, बिकॉज़ राइनोज हैव समथिंग टू से। थोड़ी चर्चाएं करते हैं हमारे मुकेश भाई से, और पैसों की बात करें मुकेश भाई की तरफ ना, ऐसा हो नहीं सकता। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, कुछ बातें हमारी ऑफ कैमरा चल रही थी मुंबई के ऊपर, अगर आप चर्चाएं लोगों को बताना चाहें। मैं क्या बोलूं, मुंबई ने खुद कह दिया डेस्परेशन थे उन लोग के प्लेयर्स पर, वो नहीं ले पाई प्लेयर्स, तो लेना पड़ा महंगे प्लेयर उनको। मतलब आप कह रहे हैं कि प्लान कुछ नहीं है, मजबूरी है ये? हाँ, वो उन्हें खुद ही कहा मुंबई टीम ने वो। बट इस बीच एक कमाल की बात बताता हूं, आई कैन नॉट शो यू दिस पैड, बट 2 नाम आपने लिखे थे आते से पहले, भाई ने 2 नाम लिखे थे और भाई ने वो दोनों नाम पिक कर लिए। कौन वो 2 नाम है? मनीष और सचिन। प्लान था और प्लान पिक किया। सो कह सकते हैं कि अभी के लिए हैदराबाद के लिए जैसा गेम प्लान था वैसा ही अभी चल रहा है ऑक्शन, या अभी तक वैसे ही चल रहा है। और अगर एक टीम में पूछना चाहूं जिसकी हालत थोड़ी सी आपको खराब लग रही है, तो कौन है? देखो, खराब तो मुंबई गुजरात दोनों है हालत अभी, बट गुजरात का स्पर्श अच्छा है अभी। सबसे ज्यादा पैसा बचा के बैठी गुजरात। एंड व्हाइल वी टॉक अबाउट गुजरात, तो चलते एक बार जल्दी से जेडी भाई के पास, थोड़ी चर्चा है उनसे भी करते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है। जेडी भाई, लोग ऐसा कमेंट्स में लिख रहे हैं, यस वी आर रीडिंग योर कमेंट्स, तो टेंशन मत लो। लोग ऐसा लिख रहे हैं कि कैटेगरी बी कैटेगरी सी के प्लेयर्स को तो 10-10 हजार में बेचना पड़ेगा क्या? क्योंकि हालत थोड़ी खस्ता चल रही है कुछ प्लेयर्स के लिए। वैसे तो मैंने प्लान किया था J2 भाई को लेने का, पर वो बहुत हैवी प्राइस पे गए। लेकिन अभी भी मेरे जो लास्ट सीजन के टीममेट्स थे कुछ, और भी मैंने कुछ प्लान भी सोच के रखा था पहले से कि इनको ले सकते हैं, तो टायर 2 में है, अभी देखते हैं क्या होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कैटेगरी बी में भी आप थोड़ा सा और वेट कराने वाले हैं? बहुत देर से खाता खुला है गुजरात का, ऐसा क्यों? रैंडमाइज ऑक्शन थी और मेरे जो प्लेयर लेने थे मुझे, वो सबसे लास्ट में आए। चलिए अब वेट करते देखते हैं किस तरीके से चीजें आएंगी। बट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एक लास्ट बंदे से हम बात करेंगे, क्योंकि एक और खिलाड़ी थे, एक और कप्तान से जिन्होंने जो नाम लिखे वो नाम ले लिया, और मैं 3 टिक्स यहाँ पे देख पा रहा हूँ। पेपर फोल्ड है कि मैं भी ना देख पाऊँ आगे का, बट क्या आगे के लिए जो प्लेयर आपने प्लान किए हैं वो आने वाले हैं इस बार? अब 3 नाम और है, तो आप टायर 2 खत्म होने के बाद देख लेना, वो टिक भी लगी होगी। Well, I guess that's confidence speaking, that's the champion speaking. But अभी भी ऑक्शन बाकी है, खेल खत्म नहीं हुआ है, गेम यहीं से पलटता है। बिकॉज देखिए, दिस इज जीपीएल और ये हमारा क्रिकेट है, ये नई जनरेशन का क्रिकेट है। तो इस नई जनरेशन के क्रिकेट के नए ऑक्शन की तरफ चलते हैं, कैटेगरी बी की तरफ भी चलते हैं और थोड़ी चर्चाएं करते हैं आगे क्या होगा। बट फॉर दैट, सैम, इट्स योर टाइम, टेक इट अवे। थैंक यू सो मच सरदार जी। आप ऑलरेडी देखे, आपने बात भी किया था लोगों से, एंड दे आर ऑलरेडी टेलिंग कि ये टीम ने अच्छा किया ऑक्शन में, ये टीम ने नहीं किया, ये टीम ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। तो इन दी ऑक्शन इटसेल्फ राइवलरीज थोड़ा बनता हुआ नजर आ रहे हैं कि ये टीम अच्छा किया, ये टीम ने ऐसे किया, पता है यहाँ पे मुश्किल पे आ चुकी है। सो आई रियली एंजॉय कि ये सिर्फ कैटेगरी ए में ऐसे शुरू हो चुका है, बट इट्स टाइम फॉर कैटेगरी बी इटसेल्फ। बट बिफोर वी जंप इनटू कैटेगरी बी, एक बार ऑक्शन पर्स देख लेते टू सी हाउ मच मनी एवरी टीम, एवरी फ्रेंचाइजी हैज। तो एक बार उसके ऊपर ध्यान देते हैं, एंड हाउ मेनी प्लेयर्स इन टोटल सारे टीम्स अभी तक अपने पास ले चुकी है। स्टार्टिंग इट ऑफ विद द वंस हु हैव द हाईएस्ट इन देयर पर्स, हमारे पास है गुजरात वोल्व्स एट 4,40,000, जिनके पास 3 प्लेयर है इंक्लूडिंग द मार्की प्लेयर। मुंबई ग्रिजलीज एट 3,50,000 हैविंग द सेम 3 प्लेयर्स। चेन्नई फैल्कन्स, उनके पास जो मैक्सिमम कैटेगरी के 3 प्लेयर्स है वो है, उसके साथ 3,30,000। अगर बात करेंगे कंपेयर टू एवरी 8 स्क्वाड्स, इट सीम्स लाइक दे हैव बीन वेरी एफिशिएंट अपने पर्स के साथ।
Next coming in is going to be Pune Stallions, जिनके पास 3,20,000 along with 3 players in total. Delhi Sharks at 3 lakh with 3 players as well. Bengaluru Badgers के पास 2,30,000 के साथ 4 player हमें देखने के लिए मौका मिलेगा. Matching that same purse is Hyderabad Rhinos, but with only 3 players in total. Kolkata Hawks with the least, but they have their maximum 3 from category A and their purse standing at 1,80,000. ये था हमारा auction purse as of now, but let's take a look at the auction rule. अभी के लिए as we jump into category B. Category A, tier A जो players हमने देखे थे who were categorized based on their ranks in the qualifiers, अब हम category A जो है tier A खत्म कर चुके हैं. Base price of 1 lakh हो चुका है. Increments of 1,000, 10,000 bid जो था वो भी हो चुका है. But when we jump to tier B, here is where your minimum increment is at 5,000. But जैसे 1 lakh हम reach होंगे, your increment instantly ramps up to every paddle race to 10,000. 5,000 से 10,000 हमें देखने के लिए मौका मिलेगा. But the base price of category or tier B is 60,000. 35 total players है, but इनके साथ 6 और player जुड़ चुके from tier A. That is the cascade जो मैं पहले बात कर रहा था. So there's around 40 plus players जो हमें इस auction category B में देखने के लिए मौका मिलेगा. And when we come to tier C, we'll talk about it. But उसका अगर आपको ध्यान देना है, it's 30,000 base price with increments of 5,000. But इसी के साथ category B, I hope all the franchisees आप तैयार है. 60,000 base price से शुरू होगा. Let's bring in the very first player of category B. चलिए बुलाते हैं the very first player up on our screens. Pay attention, that's going to be Gagandeep Singh, जो उनका base price 60,000 के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं. Can we take a look at the stats of Gagandeep and then start the bidding for the floor? We'll start for the bidding of the floor itself. कि यहाँ पे Gagandeep starting the bid, opening the floor for the bid. Can I see any paddles for Gagandeep? Base price of 60,000. Anybody for the base price bid of 60,000 for Gagandeep? Once, twice, I don't see any bids coming in. We will keep him unsold for the time being. And just a category A में you had minimum of 2, you need minimum of only 1 in category B. So not much to be worried about, but a lot to be strategizing on. With this, let's move to the next player. हमारा पहला जो player था, as of now, goes back into the pool itself of category B. Let's bring in the next player of category B. Who is the next player? जो हमारे franchises wait कर रहे and paddle अभी तक ऊपर नहीं लेके आए. Who is that player? Can we bring up the next player, please? Next player आने वाला है बहुत जल्दी, but before that, again a quick reminder for the people viewing online जो देख रहे हैं, आप जरूर हमें बताइए कि अभी तक आपको कौन से franchisee teams पसंद आए, who have the best players so far, who have gotten very smart bids जो उन्होंने लगाया अभी के लिए. And from there, as we already spoke about it, गुजरात के पास ही highest purse है. मतलब category B में अगर बहुत ज़्यादा खेलना है, गुजरात has the power to play with it now. But बाकी teams, we know how they've strategized. Let's see the strategy works or not. अगले player लेके आते हैं हमारे screen के सामने. It's going to be Sheikh Rasool. Sheikh Rasool is our next player. Minimum or base price at 60,000. Base price of 60,000. Can we see a paddle for 60,000 base price? Any paddles going up? 60,000 for Sheikh Rasool. Once, I don't see any paddles coming up from none of them as of now. Going twice, लग रहा है बहुत strategy लगा है कि wait करेंगे हमारा player जब तक नहीं आएगा तब तक paddle नहीं. Unsold for the time being. Sheikh, we will put him back into the pool itself. चलिए, Sheikh Rasool back into the pool. This is our second player जो हमने लेके आया था. It seems like बहुत unique strategies and बहुत specific players आप लोग ढूंढ रहे हो. Even with the lot that we have, 64 players at the end of today will be placed out of the 100 lot we have. चलिए इसी के साथ next player is going to be Pappu. Pappu is our next player coming in for the auction. चलिए, let's open up the floor for bidding. Pappu, do we end up seeing any base price bids at 60,000? 60,000 base price bids. I don't see any base price bids coming in for Pappu. Going once, twice, leaving the floor open for the last time. Unsold for the time being. Pappu remains unsold for category B.
nobody is even flinching. कोई भी इशारा भी नहीं कर रहे पैडल की तरफ, सब वेट कर रहे हैं. सबसे ज्यादा तो मुझे हैदराबाद राइनोस ही लग रहे हैं. जब उन्होंने प्लेयर्स पहले भी खरीदा था, किसी को पता नहीं चला, खरीद के चले गए. अभी भी ऐसे ही लग रहा है. Let's move into the next player. चले, let's see who's going to be coming in. It's going to be Happy Singh from category B. 60,000 base price bid. Let's open up the floor for the bidding. 60,000 base price for Happy Singh. Any base price bids coming in? Looking at all the 8 teams, 8 franchisees of GEPL season 3. No bids being placed. सुखप्रीत तो और खुश है इस बार. कैटेगरी ए में ही 3 प्लेयर उठा लिया उन्होंने, खर्चा भी ज्यादा नहीं किया है. No bids coming in. Once, twice, unsold. Happy remains unsold for the time being. Let's put him back into the pool. चलिए अगले प्लेयर को लेके आते हैं. I'm pretty sure a lot of these players already wait कर रहे हैं अपने चांस, अपने GEPL representation का. देखते हैं who will be the player. It is going to be Karthik Raja. Karthik Raja from category B. चले, let's open up the bidding floor. Anybody with the paddle. 60,000 base price है इनका. Karthik, base price of 60,000. Once, twice. No bids coming in. Okay, unsold. अभी के लिए Karthik unsold हमारे category B में. Every team is very much interested in only their picks. Again, बताना चाहूँगा जिन्होंने भी अपना 4 players का slot fulfill किया है, like कोलकाता, बेंगलुरु, as well as चेन्नई, आपको सिर्फ 4 और player चाहिए. The other 5 squads need still 5 players. इसी के साथ, let's start the next player. That's going to be Haribai. Haribai is the next player up on our screens. Let's open up the auction floor. Any bids coming in for Haribai? Bid all the way from back. Gujarat Wolves at the base price of 60,000. The very first bid in category B. Opening up with action now. Category B. Base price 60,000. Haribai. Gujarat Wolves going once. Do I see any bids coming in from anybody? As I say, 60,000 for Gujarat Wolves going twice. No more bids after this, as Gujarat Wolves gets the very first player at the base price at 60,000, and that's going to be a steal deal. Congratulations. Haribai goes to Gujarat Wolves at the base price of 60,000. Congratulations, Gujarat Wolves. They get a player. इसी के साथ they make it a total of 4 players right as of now, as they get the minimum criteria of category B also fulfilled. इसी के साथ, let's bring in the next player please. The next player from category B, base price of 60,000. Right now Haribai was sold to Gujarat Wolves, and right now it is going to be Anurag Lamba from category B. Anurag Lamba. Everybody knows him very well. We were talking about him as well before we started today, so might be a player for auction. Any paddles? Do I see any paddles for Anurag? Base price of 60,000. Discussing, I can see Delhi Sharks very deeply involved in a discussion to figure out if that's the best. Excuse me. If that's the best fit for the team. No bids coming in. No bids once. Twice for Anurag. Do we see any bids coming in? Unsold for the time being. Anurag will be put back into the pool. Anurag will be put back into the pool as he will be unsold for the time being in category B. Very specific players का ही अब category B and C में आपका खोज हो रहा है. That is for sure, because minimum 3 and 4 players you have an idea of. You are looking forward to more. But इसी के साथ Subhendu Sahu is our next player. Let's take a look at his stats. Base price of 60,000. Subhendu Sahu. Base price of 60,000. Rank 44. Runs 431. Inka strike rate in the batting is 192. Bowling stats अगर बात करेंगे 38 wickets. Dot ball percentage is 17.15. Win ratio is 50%. Looking more towards a tad bit on the batting, but seems to be balanced. Subhendu Sahu. Let's open up the bidding floor. Let's open up the bidding floor. Can we come back and start the bidding in this? And we'll start with Gujarat Wolves all the way back. The base price.
Base price of 60,000 is what Gujarat Wolves open up the floor for bidding. Gujarat Wolves, Mumbai Grizzlies coming into the picture. 60, now it becomes 65 to 70,000. 70 from Gujarat comes back to Mumbai Grizzlies at 75,000. 75,000 for Mumbai Grizzlies right as of now. 75,000 for Mumbai Grizzlies, going once, going twice for Mumbai Grizzlies at 75,000. Pune Stallions come in and raise the bid at 80,000 before it gets sold. Pune Stallions at 80,000 right as of now. 80,000. I see Manish going towards the paddle. Sorry, Mukesh going towards the paddle. 80,000 right as of now. Pune Stallions going once. Pune Stallions for 80,000 going twice. Do I see any more bids coming in, Mukesh? Oh, Gujarat go, take it. They don't give anything to Hyderabad. It's going to be 85,000. That is Gujarat Wolves. They have the biggest purse. 85,000 for Gujarat Wolves. Again, right at the buzzer beater. Yahan pe going once for Gujarat Wolves at 85,000. 85,000 for Gujarat Wolves. Making it 90 is going to be Mumbai Grizzlies. They have an opportunity, and यहाँ पे सुबेंदु के लिए 90,000 पे आते हुए Mumbai Grizzlies 95 यहाँ पे बढ़ाते हुए. That is going to be Gujarat Wolves, and now that it's reached 1 lakh, Mumbai Grizzlies, they outbid Gujarat Wolves. From here, all the increments are going to be 10,000. 1 lakh for Mumbai Grizzlies going once. Do I see anybody? Category B में पहला खिलाड़ी है ये जो who has broken the roof of increment of 5,000 to 10,000, going twice for Mumbai Grizzlies at 1 lakh. Do I see any more paddles? No more paddles. He will be sold. Finally getting into a barrier of 10,000, but nobody comes into the competition. Mumbai Grizzlies, they lock in Subendu at 1 lakh INR. Congratulations, Mumbai Grizzlies. 1 lakh for Subendu. That is our category B player being sold to Mumbai Grizzlies. They also make a total of 4 players now. चलिए इसी के साथ अगले player को बुलाते. Let's bring in the next player upon our screens. He will be crucial to decide where these teams go ahead in terms of their strategy. अगला खिलाड़ी है विशाल चौधरी. Let's take a look at his stats as well. Let's bring in the stats of Vishal Chaudhary. He is the next one up on our screens for bidding. Rank 46, 1,672 runs, strike rate of 228. These are the batting stats. Bowling stats के अगर तरफ जाएंगे 136, 17.73%, and win ratio of 72%. That is Vishal. Let's open up the floor for bidding. Vishal, with a base price of 60,000, the floor is open for bidding. Do I see any paddles? 60,000. First it came from Chennai, then I saw it from the side of Hyderabad, so it's at 65, going all the way towards Gujarat at 70, and Pune coming at 75, going back to them at 80. 80,000 Gujarat Wolves, 85 say Pune Stallions. Chennai wanted at 90, 90,000 for Chennai Falcons, 95 go for Pune Stallions right as of now. Pune Stallions at 95. Pune Stallions sitting at 95, going to 1 lakh for Gujarat Wolves. Gujarat Wolves take it to 1 lakh, so it's going to be 1 lakh 10,000 for Pune Stallions, making it more costly. 1 lakh 20, 1 lakh 20 say 1 lakh 30 Mumbai Grizzlies ke taraf. 1 lakh 30 say 1 lakh 40 for Vishal, going on a bidding frenzy. 1 lakh 40 say 1 lakh 50 for Mumbai Grizzlies, taking it to Pune, and he says 1 lakh 60 we hit it. We don't give it to Pune, so you give it to Mumbai at 150. 160 for Pune Stallions. Gujarat back with their purse in the battle. 170 ke taraf aate hue. 1 lakh 70 for Vishal. 1 lakh 70,000 right now with Gujarat Wolves going once. Gujarat Wolves now showing the power of the purse. 1 lakh 70 going twice for Gujarat Wolves. Do I see any more paddles coming up? Sold to Gujarat Wolves. Congratulations. They find their player. A really good bid coming in. A bidding frenzy in category B as well. That is Gujarat Wolves finding their 5th player. Meaning now they need 1 player from category C and then need 2 more. That will give them a total of 8 players. 1 lakh 70,000. Vishal goes to Gujarat Wolves. Congratulations. Chale, इसी के साथ let's bring up the next player upon our screens. If that is a bidding frenzy, let's see if the next one can keep up with it. Suresh Rajput. Suresh Rajput upon our screens. And with this, let's go into bidding. Chale, opening the floor up for bidding again. Base price 60,000 rehne wala hai. That's where we're going to start from.
Any base prize bids of 60,000? Any base prize bids of 60,000 from anyone? Once, twice for Suresh, unsold. We will put him back into the pool and हम वापस आएंगे सुरेश के तरफ in case any one of the teams in this franchise have missed of that minimum criteria of one player from category B. चलिए इसी के साथ let's move to the next player from category B. Let's bring him up on our screens. It is going to be Manoj P, a very popular player. Manoj P, everybody right now instantly their ears all upright looking forward to the screen. Let's open up the floor for bidding. Base prize of 60,000. Manoj. Do I see a paddle? Kolkata Hawks come up first with 60 and it goes to 65 for Bengaluru Badgers. All the way in the back, Bengaluru Badgers, they were the ones who strike the heavy hammer of the heavy purse. But from 65 to 70 back to Kolkata Hawks, not giving me a chance to go to once. From 70 to 75 back to Bengaluru Badgers. 75 to 80, Kolkata Hawks take it. 80 to 85, Manoj on a bidding frenzy. 85 for Bengaluru Badgers. Kolkata, your purse is the one that you have to keep an eye out for. And Surjit, he understands. 85 going once for Bengaluru Badgers. Any more paddles coming up? Bengaluru Badgers, 85 for Manoj going twice. Do I see any more bids? I don't see any more bids. Sold to Bengaluru Badgers at 85,000. Congratulations. That is another player added to the pool of Bengaluru Badgers. And now they also have a total of 5 players. They also fulfill the criteria of minimum 1 category B player. Congratulations, Bengaluru Badgers. So far, we've seen one player hitting the ranks of a lakh and above and a bidding frenzy of 10,000 increment. Even in category B, ये बताता है कि competition कहाँ पे है in between category B players also. इसी के साथ, let's bring in the next player. That's going to be Kirti Lal. Kirti Lal from our category B, base price of 60,000. 60,000 base price. Let's open up the bidding floor. Any base price bids at 60,000 from any of the franchisee teams? Any base price bids of 60,000. Once. No bids being placed. Twice. Unsold for now. Kirti Lal will be put back into the category B pool. In case we fulfill the criteria, we move to category C, he will be cascaded to the category C in that base price of 30,000. Unsold for the time being. Let's move into our next player. Let's bring back the next player up on our screens. Next player is going to be Abhay Chaudhary. Base price of 60,000. Abhay Chaudhary with a base price of 60,000. The bidding floor is now open. The hammer's up. Do I see the paddles also? Do I see paddles coming up as well? Pune Stallions at the base price of 60,000. They start off 60,000 base price. Pune Stallions have it. 65 first from Gujarat, then to 70 from Mumbai Grizzlies being registered. 70 to 75 back to Gujarat Wolves. Going once. 70,000 right as of now is where we end up seeing Abhay bid being placed. Gujarat Wolves have it at 70. Do I see the bid being increased by anybody? 70,000. Kolkata Hawks coming in at 75. Kolkata Hawks at 75. 75 Kolkata Hawks. Gujarat Wolves take it to 80. 80 to 85 back at Kolkata Hawks. 85 to 90. Gujarat Wolves coming into the battle. This is big. यहाँ पे pick up होते हुए अभय चौधरी के लिए 90, 90, 95 coming in यहाँ पे. 95 से 1 lakh again going back. Gujarat 1 lakh. यहाँ से base price 1 lakh from 60 to 1 lakh increments from here is going to be 10,000. Anybody coming in for bidding war with Gujarat Wolves? 1 lakh. Base price से 60,000 से 40,000 ऊपर होके going once. Do I see any more paddles coming in at 1 lakh? Going twice for Gujarat Wolves. Gujarat Wolves have it at 1 lakh right as of now. I don't see any more bids coming in. Gujarat Wolves are going to be happy. Sold. One more player. They're getting players after player here in category B. इसी के साथ it is going to be 1 lakh rupees that Gujarat Wolves get the player at. Congratulations Gujarat Wolves. That is going to be a total of 6 players. मतलब अभी के लिए Gujarat Wolves in total need just 2. One minimum from category C. And then they can pick anybody from category B as well.
In case they pick up a category B player, here Gujarat Wolves, they have no more chance of bidding in category B. This opens up the floor for everybody. 1 lakh, Gujarat Wolves, they secure the player. Okay, let's move into the next player. After Gujarat Wolves, they push another player to the 1 lakh bracket, and from there the increments of 10,000. Can we get the next player up on our screens, please? चले ये हमारा क्रिकेट है एंड देखते हैं ये यहाँ पे अपने स्क्वाड्स कौन बनाते हुए नजर आते हैं. The best for the season 3. The next player up on our screens, please. It is going to be Krunal. Krunal up on our screens. Very familiar face for all these players. यहाँ पे एक और bidding frenzy हो सकता है. Krunal, can we have bidding open? The floor is now open. Base price of 60,000 for Krunal. Anybody coming in for Krunal? Base price of 60,000. Base price of 60,000. Anybody? Once? Twice? I'm going to wait for the last option in case there is a paddle. Unsold. Krunal will be unsold as of now. Unsold for the time being. Let's put him back into the pool. Unsold is Krunal for the time being. Chale, let's move to the next player up on our screens who is going to be coming up in the auction. Krunal was unsold. Let's bring up the next player up in the auction. Player se pehle, let's go for the purse right as now, as some of the players have gotten more players. Chale, purse ke taraf dhyan dete. 3,30,000 as of now. Chennai Falcons are ones with the highest. The order right as now is basis the purse remaining. 3,30,000 4 players ke saath. Pune ke paas 3,20,000 with 3 players. Delhi Sharks as well, 3 players, 3 lakh. Mumbai Grizzlies at 2,50,000 with 4 players. Hyderabad Rhinos at 2,30,000 with 3 players. Kolkata Hawks with 1,80,000 with 4 players. Bengaluru Badgers at 1,45,000 with 5 players. And Gujarat Wolves, as I said, 1,10,000. They had the highest before this, but because they went into a bidding frenzy, got 2 players at 1 lakh. They have a total of 6 players right as of now. ये है हमारा auction synopsis and our auction purse so far of all the 8 teams. आपको क्या लगता है सरदार जी? गुजरात वुल्स ने कैटेगरी ए में बहुत स्पेंड नहीं किया. कैटेगरी बी आते ही 2 लाख ऐसे ही उड़ा दिया उन्होंने. आई थिंक उन्हें पता है कि कहां स्पेंड करना है और कहां पे पैसा बचाना है. बट आई थिंक यू डिजर्व दिस वन, मैन. This auction is going crazy. I think we need to take a breather. We need some time and we need to talk about this. Actually काफी पैसा उड़ा दिया जो इतना पैसा बचा के बैठ रहे थे. तो I guess we need to talk about this one. But before getting towards Gujarat, मुझे कुछ और लोगों से कुछ और चर्चाएं करनी है. And I think सबसे पहली बात क्यों ना चेन्नई से की जाए, because I was expecting Chennai will be spending, but Chennai suddenly थोड़ा सा मुझे गेम चेंज होता हुआ दिख रहा है. पाजी 3 नाम आपने मुझे दिखाए थे, तीनों टिक थे. अभी मैं इसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या अभी भी आपको लग रहा है कि जो 3 आपने प्लान किया आगे के वो तीनों टिक होने वाले हैं? सर पर्स तो सबसे ज्यादा है. उम्मीद है कि 3 नहीं तो 200 कम से कम हो ही जाए. वैसे तीनों होने की उम्मीद है सर. ये जो बात की उन्होंने बहुत तगड़ी बात की कि पर्स सबसे ज्यादा है. बट मैं आपसे जानना चाहूंगा जेडी भाई की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें, बिकॉज अर्लियर इससे पहले वो आपकी टीम में खेल चुके हैं, अब वो अपनी टीम के साथ आ रहे हैं. और ऑनेस्टली मुझसे पूछा, मुझे तो टीम भी बहुत तगड़ी लग रही है. सर अभी टायर 2 में काफी अच्छी वापसी की है उन्होंने, अच्छे प्लेयर्स पिक किए हैं. तो टायर 1 में थोड़ा फंस गया था, 2 टीम्स रहेगी, प्लेयर एक अच्छा रह गया था, तो इस वजह से पर्स ज्यादा लग गया. लेकिन अच्छी अभी सर टायर 2 में काफी अच्छी किया उन्होंने. मुझे बस इससे अक्षत याद आता है बिकॉज पिछली बार उन्होंने टियर 2 में बहुत बढ़िया बाइंग की थी. बट अगेन लेट्स गेट बैक टू द मैन, द पर्सन जिसकी बातें सब कोई कर रहा है, वो इंसान जिसका पर्स बहुत हैवी था और अब थोड़ा ज्यादा हल्का नहीं हो गया. जेडी भाई, चैंपियन टीम का एक प्लेयर मिला है, विशाल चौधरी, जो लास्ट ईयर मेरा टीममेट ही था. और उसके अलावा एक प्लेयर जिसकी लास्ट टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट थी, विकास साहू. ये 2 प्लेयर मिल गए. हाँ, एक प्लेयर मेरा मिस जरूर हुआ है, लेकिन बाकी टीम जो मैं सोच रहा था वही बन रही है. लगे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी आपने जितनी टीम देखी, जितने पर्स स्पेंड होता हुआ देखा, जितने बिडिंग्स देखी, आपके हिसाब से सबसे तगड़ी टीम कौन बना रहा है? पहले तो मुझे अपने पे डाउट था, लेकिन अभी सबसे स्ट्रांग मेरी लग रही है. नाइस. बट आपके अलावा और कौन? बाकी सब टीम बैलेंस है, मेरी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है. देखो सरदार जी, मुझे ये पता चल रहा है ना, जेडी भाई जो सीजन 1 में मिस हुआ आते आते वो इस बार बनाने के लिए पूरा ट्राई कर रहे हैं.
देखिए ये बात जो पाजी ने कही, आई बिलीव दिस वन कि सब अपनी टीम का नाम लेंगे, बट यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, जेडी कहते हैं कि विनिंग टीम का एक प्लेयर लिया, ये नहीं कह रहे कि विनिंग टीम में मैं भी था, वो विनिंग टीम खुद भी है, वो वहां से प्लेयर उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना पाजी के हिस्से का काट के लेके जा रहे हैं वो प्लेयर्स यहाँ से, बट ठीक है चलिए, विल बी वेटिंग फॉर दिस। बट उससे पहले एक और बंदे के पास जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वो हमारे साथ खिलाड़ी बैठे हुए हैं सुजीत पाजी, जिन्होंने पहली किताब अंदर साइड रख दी कि मैंने कैटेगरी ए में अपना काम कर लिया है, फिर कैटेगरी बी आई, मैंने देखा तब भी कोई खासा टेंशन थी नहीं, उनको पता है कि क्या टीम लानी है, आई बिलीव जो सोच रहे हैं एकदम वही हो रहा है। हाँ भाई बिल्कुल, पहले अपनी चॉइस से, मतलब पहले शादी करनी हो तो अपनी चॉइस की लड़की मिल जाती है, अगर उम्र बीत जाए ना तो फिर जो बचा होता है उठाना पड़ता है। लगता है काफी एक्सपीरियंस के साथ बाजी कह रहे हैं बात। बट चलिए, जैसा भाई ने कहा कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़ा मजबूरी में प्लेयर्स उठा रहे हैं, और मजबूरी की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा ध्यान मेरा मुंबई की तरफ जाता है और मन मन मुस्कुराहट में दिखती है। पाजी भैया था प्लान या टीम था? पाजी कह रहे टीम का प्लान था। फिर चलते सीधा हमारे ऑक्शन के पास वापस से। सैम, टेक इट अवे एंड लेट्स कंप्लीट दिस ऑक्शन नाउ। यस, लेट्स गेट कैटेगरी बी रोलिंग वंस अगेन। बट आपने जैसे बताया ये टेबल्स में ना मुझे थोड़ा ये डिविजन्स नजर आ रहे हैं, जैसे हमने टेबल्स को भी सजा के रखा है। यहाँ का पूरा टेबल शांत है, जब वो शुरू होता है कोई और को चांस ही नहीं देते। बीच वाले टेबल 50-50, आगे वाले पूरा बिडिंग वॉर, पीछे वाले सुखप्रीत बोलता है ये हमारा नहीं है, हमारा प्लेयर दूसरा ही है। एंड इस तरफ जब ये शुरू होता है इनका ही पर्स बहुत हैवी रहता है एंड खर्चा भी इनके तरफ से होता है। दैट इज 3 डिविजन्स। बट इसी के साथ लेट्स ब्रिंग इन द प्लेयर फ्रॉम कैटेगरी बी जो अब आने वाला है, मोहम्मद कविश, another player that everybody is seen and he's played in the seasons of GEPL. चलिए देखते इस बार कौन सी टीम के तरफ जाते हुए नजर आएंगे। बेस प्राइस of 60,000. Do I see any bids coming in from any team? Base price and 5 here Kolkata Hawks, 85 से सीधा 90 Chennai Falcons coming into the bid. 90 for Chennai Falcons right as now the current standing. तुरंत अपने पर्स के ऊपर ध्यान देते हुए यहाँ पे कोलकाता हॉक्स 90,000 is where we stand, going once for Chennai Falcons. 90,000 going once. Already going twice now for 90,000. Chennai Falcons have it. Mohammad Kavish 90,000. Do I see any more bids? Last call, last chance. Sold. The gavel's dropped and it's going to be 90,000 जो यहाँ पे Chennai Falcons मोहम्मद कविश को अपने तरफ लेते हुए नजर आएंगे in this auction. Congratulations Chennai Falcons. That is going to be their 5th player at 90,000 rupees. Mohammad Kavish यहाँ पे लेते हुए and he'll be sold to Chennai Falcons. Congratulations the Falcons. That is going to be your 5th player. इसी के साथ let's jump into the next player from this auction. चलिए देखते हैं who is going to be the next player coming up on our screens. Chennai have gotten their 5th. Let's see if somebody else gets to their 5th. अभी भी Delhi बाकी है. They have just 3 players in total. They're waiting. Who is going to be the next player in auction? Ankit Raju Roy. Another very familiar face and teammate for Mukesh. देखते हैं. Let's open up the bidding floor for Ankit. Base price of 60,000. Do I see any bids coming at 60,000 instantly? Mumbai Grizzlies at the base price 60,000. 60,000 base price Mumbai Grizzlies. And then comes in the Rhinos. Rhinos से लेके वापस 70,000 पे आ जाएंगे Grizzlies. 70 से 75 आ जाएगा. 75 Rhinos से सीधा 80 करते हुए Grizzlies. 80,000 for Mumbai Grizzlies. 80,000 the current bid stands at for Ankit. Going once. Pune Stallions say 85 before going twice, and that is going to be 85 right now for Pune Stallions going once. Do I see any more paddles coming in? 85 से सीधा 90 Grizzlies से वापस लेते हुए 95. अंकित के ऊपर bidding थोड़ा war नजर आ रहा है. 95 is where Pune Stallions. Do I see? Before I could ask, it will be Grizzlies who raise it to 1 lakh. 1 lakh से सीधा 1 lakh 10 जाएगा. 1 lakh 10 से 120 जाता हुआ for the Rhinos. Rhinos से 130 Grizzlies लेते हुए नजर आएंगे. 130 से 140 for the Stallions. 1 lakh 40,000 bidding war for Ankit. 1 lakh 40 Ankit के लिए. 140 अभी के लिए current standing going once. A little bidding war just like how Gujarat Wolves took 2 players at 1 lakh. 1 lakh 40 going twice for Pune Stallions. Do I see a bid being placed again? 1 lakh 40. Any more paddles? Mumbai Grizzlies last chance. Sold at 1 lakh 40,000 for Pune Stallions. Congratulations. That's another player being added. This is auction mein. Category B seems to be ramping up. Mukesh would have wanted him, but he's quickly having a check with even Sukhpreet to see 1 lakh 40,000 is what this sell was for Ankit.
Pune Stallions, 1,40,000. This time he's going to be playing for Pune Stallions at 1,40,000. Congratulations to both Ankit as well as Pune Stallions. Let's move to the next player in the auction, and the next one is going to be Debneel Barik. Next person, base price of 60,000. Do I see any initial bids, base price bids coming in from any of the franchisee teams? Any paddles coming up? 60,000 base price. Once. Do I see the bid coming in? Twice. Any base price bids coming in for 60,000? Unsold, we will put him back into the pool. No sell as of now. That player remains unsold in category B as of now. Debneel will go back into the category B pool. Chale, इसी के साथ let's move next into our category B player. That's going to be Sai. Sai is the next player up on the auction. Base price of 60,000. Everybody is paying a quick attention to the screen. मनमीत पाजी का अभी भी चांस नहीं आया है. जो प्लेयर चाहिए अभी भी कैटेगरी ए में ले चुके हैं, वो खुश है. Base price 60,000. Anybody else coming in for any prizes? 60,000 is the base price for Sai. No bids coming in. Once, twice. Who will be coming up on the screens? That's going to be Sonu Singh. This could be a player who we end up seeing a bidding war on. इसी के साथ let's open up the bidding floor for the auction. 60,000 base price for Sonu Singh. Do I see any paddles coming up? Kolkata Hawks started off at the base price of 60,000. 60,000 for Kolkata Hawks as of now. Base price. Mumbai, you have a chance. Pune just got a costly player. Hyderabad have a chance. Going once at 60,000 for Kolkata Hawks. Delhi and Hyderabad say yes, we will take a chance at it at 65,000. 65,000. Kolkata bring it back at 70. 70,000 is where it stands. 70,000 right as of now for Sonu. Current bid at 70,000 going once. 75 instantly ranked up by Hyderabad. 75 going once for Hyderabad Rhinos. Mumbai Grizzlies bring it at 80 for Sonu. 80,000 for Mumbai Grizzlies. They have cash, they want to get this player, Sonu Singh, a very reliable player, but Hyderabad Rhinos say, no, that's not going to happen. 85 pe aata hu abhi ke liye. 85,000. Going once. Do I see any more bids? Mumbai Grizzlies want back in the battle? Yes, they say 90,000. Current bid goes to 90,000 for Sonu. Mumbai Grizzlies, 90,000 going once. Do I see the Hyderabad or Kolkata coming back? 90 going twice for Mumbai Grizzlies. 90,000. This is the last and final call, and he will be sold. That is Sonu Singh being sold at 90,000. Congratulations, Mumbai Grizzlies. Now they also make a total of 5 players. Mumbai Grizzlies, they get 90,000 on, they use 90,000 on Sonu Singh. Congratulations, Mumbai Grizzlies. चलिए इसी के साथ let's move into the auction purse. अभी let's take a look at how much expenditure has been made. अब क्या ऊपर नीचे हुआ है? Gujarat just before we started category B, वो पूरा top में थे in the purse, but अब they have come to the bottom because they ended up spending nearly more than 2 lakhs. चलिए auction synopsis in the purse. Delhi now have the highest because Chennai ended up buying a player. 3 lakh ke saath 3 players is what Delhi Sharks have. Chennai Falcons at 2,40,000. 5 players is what they have. Hyderabad Rhinos at 2,30,000. 3 players. Kolkata Hawks 1,80,000 with only 4 players. Pune Stallions also matching the same price and having the same number of players. Mumbai Grizzlies ke paas 1,60,000 with 5 players. Bengaluru Badgers have 1,45,000 with 5 players. And Gujarat Wolves at 1,10,000 with 6 players. I think now Gujarat will target sirf category C. They still have a chance to buy. They still have 1,10,000, but their purse cannot go below 30,000. Chale इसी के साथ, let us bring the next player. That is going to be Anurad Kohli. Anurad Kohli, our next player up in bidding. Can we start the bidding at the base price of 60,000? Base price of 60,000 for Anurad.
The floor is open and Pune Stallions come up with the first bid at 60-65 being instantly raised by Bengaluru, and Bengaluru's bid is outbid by Pune at 70 to 75, 75 to 80 to Delhi Sharks. Taking it away from Bengaluru and bringing it back from 85 to 90 is Pune Stallions. Pune will have it at 90,000 as of now. 90,000 Pune Stallions going once. That is going to be a big bid for Anurad at 90,000. 90,000 going twice for Pune Stallions. 90,000. Do we end up seeing any more paddles being raised from anybody? Anyone? Last and final call. Anurad will be sold at 90,000. That is his sell, and it seems like they are happy. Maybe they thought somebody else will come in for a bidding war, and it was not. Pune Stallions get him at 90,000. So far, majority of the category B players जो sell हो रहे, सारे 90,000 के गिर्दी, everybody is getting sold. Congratulations Pune Stallions for getting another player. इसी के साथ Pune Stallions now will get total of 5 players. 3 और player चाहिए आप लोगों के लिए. Let's bring in the next player who is going to be coming up for the auction. Who is the next player? That's going to be Yogesh. Yogesh up on our screens. Let's open up the bidding floor. Base price of 60,000. Base price of 60,000. Do I see any bids? Base price 60,000 for Yogesh. Going once. No bids being placed. Going twice. Unsold. As of now, Yogesh will be put back into the pool. Unsold is Yogesh. Let's move into the next player. Let's bring up the next player, Yogesh. For the time being, abhi ke liye unsold rahenge. We'll bring him back in the pool and we'll see if there is another chance or another go towards category C. Let's bring up, that's going to be Sadaf, Mohammad Sadaf Nadeem. Base price of 60,000. Base price of 60,000, Mohammad Sadaf Nadeem. Do we see any more bids? Yes, we see the first bid coming in from Hyderabad, but from Hyderabad instantly pushing it the increment of 5,000 is going to be Chennai Falcons. It is 65,000 right as of now. Sadaf at 65,000. Chennai Falcons have it right as now going once. Do I see anybody raising their paddles? 65,000 for Chennai Falcons as of now. Going twice. Do I see any more bids before I close this? He is sold, Sadaf at 65,000. Sukhpreet Singh looks very happy. Very subtle उन्होंने यहाँ पे जीत का ऐसे किया इशारा. None of them observed, but this is what he also built last time. And इसी के साथ we get total of 6 players like Gujarat Wolves for Chennai Falcons as well. And it's almost close to a steal deal यहाँ पे. सिर्फ 5,000 extra खर्च किया from the base price. Congratulations Chennai Falcons. Let's move to the next player. Let's bring up the next player. That's going to be Gaurav Biswas. Base price of 60,000. Base price of 60,000, and instantly the bidding starts off from Hyderabad Rhinos at 60,000. Bid already started instantly back at 65. Dubara Chennai Falcons just got one player at 65 and Dubara bid dalte hue. Do I see any more bids coming in going once, as it is for Chennai Falcons at 65. 70 को लेके आते हुए Hyderabad Rhinos, and वहां से 75 लेके चले जाएंगे Chennai Falcons. Quickly taking a look at their purse. Yes, Hyderabad 70 right as now is where it stands for Chennai Falcons. Chennai Falcons से 75 करते हुए यहाँ पे Hyderabad Rhinos to quickly see 75 से 80 करते हुए Chennai Falcons, not giving them much of a choice. 80,000 is where it stands. Going once for Chennai Falcons at 80,000. Going twice. And 80 से 85 करते हुए Rhinos, 85 से सीधा 90 करेंगे Chennai Falcons, playing with their purse. They were at the second highest in total. 90 से 95 करते हुए अभी के लिए 95 से सीधा 1 lakh. 1 lakh से 1,10,000. Hyderabad and Chennai in a bidding war. 1,10,000 Chennai Falcons. 1,10,000. And instantly I see a nod in the direction of saying no. Right now Chennai Falcons have it at 1,10,000. Going once. Gaurav going twice for 1,10,000 for Chennai Falcons. Do I see any more paddles? Sold at 1,10,000. Gaurav Biswas at 1,10,000 for Chennai Falcons. And इसी के साथ Chennai Falcons, you get a total of 7 players. And इसका मतलब है you cannot bid any more in category B. अब आपको category C का इंतजार करना पड़ेगा. But congratulations, आपको सिर्फ अभी एक squad member का जरूरत है. That is Chennai Falcons getting it at 1,10,000. इसी के साथ let us bring in the next player. Let's see if any other teams gets there. It is going to be Zubair Kalwa. That is going to be our next player. Zubair.
Base price of 60,000. Let's open up the paddles, bring it up and start the bidding. Base price of 60,000. Zubair, any paddles coming up? Once. Do I see any bids for Zubair? Twice. Seems like koi aur abhi bid nahi karne wala hai. Unsold. Let's put him back into the pool. He is going to be unsold. Zubair will be back into the pool. Isi ke saath we will see him either in category C ya back in the pool in case somebody doesn't fulfill the criteria. Chale next player ke taraf. That's going to be Jayesh Kotadia. Very popular player, something that everybody will look forward to a bidding frenzy, but purse ab bahut logon ka kam bacha hai. Let's open up the bidding floor for Jayesh. Base price of 60,000. Any bids for Jayesh? Base price of 60,000. Do I see a paddle? Any paddles coming in? It could be a steal deal. हमने जब initially पहले tournaments देखे थे, he was a heavy hitter. Yes. Any base price bids coming in? Any steal deal snatchers अभी के लिए? Base price once. Kolkata Hawks instantly look at their purse and they take their paddle up. Base price 60,000. Kolkata Hawks have it. That's going to be Jayesh. Kolkata Hawks going once for Jayesh at 60,000 base price. Do I see any more paddles coming up? Going twice, as I say, for Kolkata Hawks at 60,000. Koi aur paddle nahi dikh raha hai. Will be sold. Congratulations. That is a steal indeed. No bidding wars, but an instant steal coming in for Kolkata Hawks. सबसे पहली टीम थी जो कैटेगरी ए में 3 प्लेयर्स को उन्होंने लिया था, बट फाइनली आई थिंक द लास्ट एंट्रेंट फॉर कैटेगरी बी 60,000 बेस प्राइस पे यहाँ पे जयेश को अपने टीम के तरफ लेके चले जाएंगे. कंग्रेचुलेशंस कोलकाता हॉक्स. चलिए, लेट्स ब्रिंग इन द नेक्स्ट प्लेयर अप ऑन द स्क्रीन. दैट इज गोइंग टू बी तेजस. तेजस अप ऑन आवर स्क्रीन. Another player that people will look forward to, but जैसे हमने बोला था, purse is something that everybody is looking forward to. Base price of 60,000. Do I see a base bid from anybody? 60,000 का base price bid for Tejas. Anybody going in? And Kolkata Hawks instantly go for it with the base price of 60,000. They have an option. It seems like they're going for it. And I don't see any more paddles going once. Base price, another steal deal. क्या कर रहे हैं बाकी franchises? They're not wanting to jump in for this. Maybe not the strategy. Going twice for Tejas here, Kolkata Hawks. This is a steal deal, back to back Kolkata Hawks जो लेके जा रही है. Final call, sold he will be, and another big and quick sell coming in with the base price 60,000 यहाँ पे Tejas जाते हुए for the Kolkata Hawks. Congratulations Kolkata Hawks. That is another steal deal. But इसी के साथ let's take a look at the auction purse quickly कि किसके पास कितना बचा है, so that we have an idea in case who needs to start bidding back in. Auction purse 3 lakh. It is Delhi Sharks जो अभी भी उनको player ढूंढना पड़ेगा, along with Hyderabad Rhinos who have the highest, who are above the 2 lakh barrier. 3 lakh तो यहाँ पे दिल्ली ने हम बात कर लिया. Hyderabad have 2 lakh 30, and from here on everybody is below 2 lakhs. Starting with Mumbai Grizzlies जिनके पास 1 lakh 60 है, Bengaluru at 1 lakh 45, Gujarat at 1 lakh 10,000, Pune at 90,000, Chennai please. Akshit Tiwari is our next player. Akshit Tiwari, base price of 60,000. Do we see any bids for Akshit? Base price of 60,000, especially Delhi. आपको bids place करना पड़ेगा along with Hyderabad Rhinos. Once. Do we see any base price bids? Steal deals. Twice. Unsold. Let us put him back into the pool itself. Chale, Akshit will remain unsold for the time being. Let's bring the next player. You can see how serious this auction has gotten now, just because की अब price as well, yes, purse price कम है इनके पास. They will keep an eye on it. Ajit is the next player up on our screens. Ajit, the next player at base price of 60,000. Do I see any bids coming in? पिछले बार भी सुप्रीत पाजी ऐसे ही थे, जो बिड करना था करके आराम से बैठ गए थे. इस बार भी वही कर रहे हैं. But everybody else still thinking. Bengaluru badges, do I see any bids all the way back? Gujarat have made big bids. It seems like Bengaluru are happy. Pune, any bids coming in from your end? They not know. Mumbai Grizzlies, Delhi, once. Do I see any bids coming in? Twice. He will remain unsold. Let's put him back into the pool. Unsold for the time being. Let's put him back into the pool itself.
As of now, seems like Mumbai Grizzlies have no intentions as well. Delhi Sharks bhi abhi soch nahi rahi hai to bring anybody into the auction for their strategy and take them away. Chale, इसी के साथ let's bring the next player. That is going to be Simha Reddy. Very popular bowler. When needed, steps up, delivers wickets. Chale, let's open up the floor for auction. Base price 60,000 instantly. Delhi Sharks with a paddle. Bengaluru badges I see 65. Gujarat goes to 70. 70 से 75. Delhi आता हुआ वापस 75 से 80 जाता हुआ 80 से 85. 85 से Delhi Sharks at 90. 90,000 Delhi Sharks now coming into the play. Always in the deep waters and jump in at the right time. 90,000 going once for Delhi Sharks. That is 90,000 current bid for Simha Reddy. Going twice for Delhi Sharks. Do I see any bids, anybody jumping into this fight? I don't see any more paddles. Hyderabad not coming into the play. He will be sold. Congratulations. Oh, I'm sorry. There was a buzzer beater. और थोड़ा ऊपर उठाइए. We'll quickly call it. So 95,000 is where it stands at. 95 से 1 lakh वापस लेके आ जाएंगे. 1 lakh. Right now the increments will stand at 10,000. 1 lakh is where Delhi Sharks have. Going once. Delhi Sharks have him right as now at 1 lakh. Mumbai Grizzlies, would you want to come back into the play? Going twice. Do I see any more paddles? Hyderabad, Bengaluru, no paddles coming in at 1 lakh. Sold to Delhi Sharks. Initially was supposed to be at 90, but they had to spend 10,000 more. And that's going to be 1 lakh. That is the price that will be sold for the player Simha Reddy. Delhi Sharks now finally have a total of 4 players. Congratulations, Delhi Sharks. Chale, let's move to the next player now. Next player up on the auction, 1 lakh is where Delhi Sharks get Simha Reddy at. But who's the next player? It's going to be Mohammad Mujir Khan. Base price of 60,000. Do I see any bids at the base price of 60,000? Going once, anybody with their paddles can lift up. The floor is open for auction. 60,000. Grizzlies come in with the base price of 60,000 instantly. Grizzlies at 60,000. Going once, do I see anybody up with their paddles? 60,000 for Mumbai Grizzlies. It seems to be another steal deal. आपके नाक से नीचे लेके, नाक से चुरा के लेके जा रहे हैं अभी. किसी को पता नहीं चल रहा है. Going twice. This is Mumbai Grizzlies getting at 60,000. Do I see any more bids, any more paddles from anybody? Any more bids? Sold to Mumbai Grizzlies at 60,000. Congratulations, a steal deal coming in for Mumbai Grizzlies. And इसी के साथ Mumbai Grizzlies will have a total of 6 players. And they need 2 more. 60,000 base price steal Mohammad Mujir Khan. Congratulations, Mumbai Grizzlies. Chaliye, with them fulfilling total of 6 players, let's see who still needs players along with bringing our next player up on our screens. कौन होने वाले ये अगला player for GEPL Season 3 Category B auction? Who is the next player? Let's bring him up on our screens, please. Next player. अभी के लिए, except for Chennai, nobody else has fulfilled the criteria जहाँ पे they can sit out of category B. If we have a chance, then we will sit out. In case everything of the pool gets unsold, हम यहाँ से सीधा category C चलते हुए नजर आएंगे. But before we head there, Hyderabad still need 1 player from category B. After that, only we will be able to proceed. Yashraj Singh is our next player up on our screens. It seems like Hyderabad को अभी तक मिला नहीं है उनका जो player चाहिए. Base price of 60,000. Do I see anybody? Base price of 60,000. Going once. Going twice. As of now, it seems like no paddles are coming up. Hyderabad are the only ones who have to fulfill the criteria yet of minimum 1 player. Base price of 60,000. Can we have the player up on the screen once again, please? Can we bring up the player once again for the teams to see? It is Yashraj Singh. Yashraj Singh, base price of 60,000. Mumbai Grizzlies, changing your mind? Any paddles coming up? Once, twice, unsold for the time being. Yashraj. Let's move to the next player.
चलिए उनको स्क्रीन के सामने लेके आते. Who is the next player up on our screens? Hyderabad Rhinos still haven't found. मेरा अभी आपके ऊपर ही रहने वाला है. You have to find that one player. कौन है वो एक? And as you can see, they are the ones with the costliest in terms of the purse, who have it 2,30,000 right at the benchmark of minimum 2 lakhs in case somebody needs to purchase more. That's going to be Delhi Sharks. But उन्होंने अभी just एक player को खरीदा था. Bengaluru Badgers, we spoke about it. Bengaluru Badgers, Gujarat Wolves, Mumbai Grizzlies, Pune Stallions, Chennai Falcons and Kolkata Hawks haven't made any movement. Chennai Falcons, उनको सिर्फ एक आखिरी player चाहिए, as we've been saying. That is only going to come from category C. That is only category C. As of now, Hyderabad Rhinos are the only one with a minimum criteria of category B player fulfillment. वो होते, in case there are no more bids coming in from category B, the whole set of category B players will be cascaded and moved to category C with their base price changing to 30,000 INR. Okay? पर्स अभी जो भारी था थोड़ा अभी लाइट हो चुका है बहुत लोगों का. And with that, let's bring in the next player. It's going to be Shivam Kumar. शिवम कुमार. एंड हमने बोला था ट्रम्प टावर में आज पैसा तो जाएगा ही, बट इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर इमोशंस. बेस प्राइस ऑफ 60,000 फॉर शिवम. Base price of 60,000 for Shivam. Can we see anybody with their paddles? Once? Nobody? Twice? Doesn't seem to be the case कि किसी को अभी के लिए ये player चाहिए. We'll put him to the unsold pool as of now. Let's put him back into the unsold pool. Thank you so much. Shivam will remain unsold. Let's bring in the next player up on our screens, please. Next player is going to be Razeen Pathan. Razeen Pathan might be a player that player could still pick up. Base price of 60,000. Do I see any base bids for 60,000 being placed by anybody? Everybody is taking a look at the purse except for Hyderabad Rhinos. वो नाम सुनते ही बोल रहे ये player हमारा नहीं है अभी के लिए. Once. Gujarat all the way at the back. Base price of 60,000 for Razeen Pathan. Base price of 60,000. Gujarat Wolves have it going once. Do I see any more paddles? As I say, Gujarat Wolves get it at base price of 60,000 on Razeen, going twice, and now Hyderabad come in at 65. 65 से 70 करते हुए वापस Gujarat. That is going to be right now being increased. Base price से right now increased 70,000. Do I see Hyderabad coming in into play? Gujarat Wolves going 175 वहां पे लेके आते हुए 75 से सीधा 80 चले जाएंगे. 80. Gujarat Wolves right now sit at 80. 80,000 INR for Gujarat Wolves. Do I see Hyderabad coming back in going once? It seems to be there's a nod saying no. Going twice at 80,000 for Gujarat Wolves. Do I see any more paddles coming up? Last and final call. Sold for Gujarat Wolves at 80,000. Another close to steal deal. And इसी के साथ just like Chennai Falcons, right as now Gujarat Wolves have to sit out because उन्होंने अपना 7 player confirm कर लिया category B में ही. हैदराबाद मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा प्लेयर ढूंढ रहे हो. ये प्लेयर के लिए थोड़ा आपने एफर्ट डाला था, उसके बाद लाइक इट्स ओके. We'll wait and watch, but Hyderabad Rhinos will see which player they're eyeing for. कहीं ना कहीं ये season 3 में बीच में storyline बन सकता है कि ये player का इतना इंतजार हुआ था. Let's bring him up on the screen, see if that's the player. It's going to be Abhishek Chakravarti, a very close player from the previous season of Mumbai Grizzlies. They ended up in the finals. Do we see Abhishek? Base price of 60,000. Anybody going in for a bid? ये प्लेयर एक जरूर है, बेहतरीन बॉलर भी है, उसी के साथ टीम का सिनर्जी भी बना के रखते हैं. ये तो 100% मुझे भी पता है. Base price of 60,000. Anybody going in for Abhishek? Once. Do I see any bids for Abhishek? Twice. Last and final call for Abhishek before saying unsold. Unsold, we put him back into the pool and they can get Abhishek later in the next category. Can we bring up the next player up on our screens, please? Chale, let's bring up the next player up on our screens. Abhishek remains unsold. Who is the next player? कौन है जो हैदराबाद राइनोस अकेले इतना ढूंढ रहे हैं? It's going to be Vamshi. Vamshi with the base price of 60,000. I instantly see a nod
that this is not the player. सुप्रीत बोल रहे हैं कि कब जाके पैडल उठेगा हैदराबाद का, तब से बैठे ही ये everybody is only eyeing on Hyderabad as of now. Base price 60,000. Conscious feel नहीं करा रहा हूँ but सब अभी उतावले हो रहे. Twice, as nobody is going in for a bid for Vamshi. Any bids coming in for Vamshi at the base price of 60,000 will be unsold. Let's put him back into the pool. Unsold for the time being. Okay, let's move to the next player up on our screens, please. कौन रहने वाला है हमारे अगले player from category B? Let's bring up the next player up on our screens, please. It's going to be Hemant Karina. Hemant, our next player up on the screen. Do we have a bid? Mukesh, वहाँ से जैसे player का नाम आता है, उनका serial रहता है. This is not the player yet. देखिए ये होता है. Every team picks every player with precision क्योंकि उनको चाहिए the best and the finest squad. And मुझे पता है मुकेश अभी भी वो trophy के ऊपर ही ध्यान है. Season 1 में मिला है, Season 2 में miss हुआ है. Wants Season 3. Base price 60,000. I do not see any paddles. The bidding floor is open. Base price 60,000. Anybody coming in for the bid? Any bids? Once? Twice? Will remain unsold. Let's put him back into the pool. Hemant will remain unsold. Unsold for the time being. Let's see the next player. कौन होने वाला है next player? But उससे पहले let's take a look at the auction purse as well. एक और बार. If anybody has forgotten, इसके ऊपर ध्यान दीजिए because now as we go closer towards the last few biddings, everybody needs an idea कि कहाँ पे कौन से players के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा and how much money you have to go for a bidding frenzy. Category A में हमने देख लिया, everybody went all out, but अब category B and C में very precise because very limited amount is left. Hyderabad still at the top, only 3 players as of now. Delhi with 4, we already spoke about it. Chennai as well as Gujarat have 7 each, meaning they do not need another player from category B. Category C से ही वो शुरुआत करते हुए नजर आएंगे. On the other end, Kolkata very close at 60,000. Let's इसके साथ let's take a look at the buys so far. यहाँ पे अभी तक कौन-कौन से players कितने price पे buy हो चुके? And I think there's been a lot of close to 2 lakhs जो हमने देखा भी था. These were all a mix of category A and category B as well. Category A यहाँ पे हमें देखने के लिए भी मिलता है. Aditya Soti at 1,60,000, Kamal at 1,90,000. This is for Kolkata as well as Bengaluru badges respectively. Funny Kiran at 2,60,000. This was from category A, and even Soumyaditya Biswas, Delhi Sharks and Bengaluru badges. Deepak at 1,50,000 for Chennai Falcons. Manish Ray at 2,40,000 for Hyderabad Rhinos, the same home that he was in the last season. Golden Kumar इस बार जाते हुए Golden team के तरफ, जहाँ पे Golden आवाज भी है, that is Kolkata Hawks at 3,10,000. Aman goes to 1,50,000 for the same team as Golden Kumar, that is Kolkata Hawks. These are the buys so far. This is what the current purse spend हमने देखा था अभी के लिए. But इसी के साथ हम देखेंगे जरूर what has happened overall. जो हमारे सरदार जी यहाँ पे teammates से, sorry हमारे franchisee, marquee players से and team managers से बात कर रहे to figure out what is the strategy so far and क्या सब कुछ हो चुका है. I think काफी चर्चाएं आपने कर ली, but you know we have the mastermind here. Yes, I'm talking about JD. तो कुछ लोगों का कहना है कि जेडी भाई की जो टीम है ना वो उतनी तगड़ी नहीं है, बट जेडी भाई का कहना है कि जो प्लान था एग्जैक्ट वैसे का वैसा चल रहा है. अभी इन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखाई ऑफ द नेम्स ही हैज प्लान्ड, एंड द बेस्ट पार्ट इज वो सबके नाम जो इन्होंने लिखे ना वो सब यहाँ आ चुके हैं. अगेन लुक एट हिम, ही इज अगेन शोइंग मी द लिस्ट. बट जेडी भाई ये बताओ कि जहां सबको लग रहा है कि टीम थोड़ी सी वीक बनी है, ये देखो सारे नाम जो लिखे हुए हैं भाई, J2 से लेके विकास तक जो नाम लिखे सारे आगे. क्या प्लानिंग है? सिर्फ एक J2 भाई मिस हुए, लेकिन उनकी जगह मैंने प्लान भी सोच रखा था, वो विशाल भाई मिल गए. बाकी सारे के सारे सेम प्लेयर मिले मुझे जो चाहिए थे. बट J2 भाई के लिए तो पैसा बहुत लगा है भाई, अच्छी खासी बिडिंग भी हमने देखी है. एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन कि अभी क्या होगा, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली वेटिंग
कि अब यहाँ से प्लेयर्स पिक करने हैं. So yes, we are going back to Mukesh bhai, because as I say, when we talk about money, we need to come back to this spot, this exact spot, because Mukesh bhai के पास हमेशा कुछ नया होता है. But अभी मैंने सुना है कि आप एक particular category का वेट कर रहे थे और कुछ particular players का वेट कर रहे थे क्या? प्लेयर्स अभी बचे हैं टायर 2 में और रिपीट होने हैं वो. तो क्या प्लान ये था कि जब वो कैटेगरी सी में आएंगे, जब प्राइस थोड़ा कम होगा, तब आप वहां से गेम खेलने वाले हो? कुछ प्लेयर सी से, कुछ प्लेयर एक प्लेयर बी से लेना है, एक प्लेयर बाकी सी से लेने हैं. भाई साहब, प्लानिंग प्लॉटिंग तो यहाँ चल रही है सबसे तगड़ी. आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस वन, बट यू नो, यू नीड टू गेट हियर आल्सो, बिकॉज़ कैटेगरी बी से पूरी टीम बनाई एक बार. इस बार कैटेगरी बी में मैंने आपको ज्यादा छेड़छाड़ करते देखा नहीं स्टार्टिंग में. क्या प्लान है? सर बाकी प्लेयर कैटेगरी सी से लेने हैं इस बारी. जो प्लेयर चाहिए था बी से वो मिल चुका है. अब सी की तरफ देखते हैं. धीरे करके सब लोग सी की तरफ आगे जा रहे हैं, कैटेगरी सी की तरफ. बट अब देखना ये कि जो कैटेगरी सी की तरफ जाने का प्लानिंग है, पाजी क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, क्योंकि जहां आप अपनी लिस्ट बस मुझे लग रहा है टिक मारकर लगाए जा रहे हो, और यहाँ पे पता है कैटेगरी सी के लिए बस लिखा हुआ प्लेयर. कोई एक प्लेयर मिल जाए या कोई एक प्लेयर प्लान क्या हुआ है? सर बजट भी है 65,000, तो एक जो सोचा है वो मिल जाएगा सर. ले तो अभी 2 में ही लेता, लेकिन वो क्राइटेरिया की वजह से 3rd की वेट कर रहा हूँ. भाई साहब, चैंपियन माइंडसेट तो मुझे यहाँ दिख जाता है. कह रहे कि कैटेगरी 2 में ही ले लेता, बट जो प्लेयर चाहिए था वो 3 में जा चुका है. बट मैं ये जानना चाहता हूँ भाजी, ऐसा क्या हो रहा है, सब लोग कैटेगरी सी का वेट क्यों कर रहे हैं? क्या कोई अलग गेम चल रही है? सर जो पहले ही बहुत इतना बजट स्पेंड कर चुके हैं, मजबूरी है 3 में जाना उनके साथ, क्योंकि बजट ही इतना बचा है. I think the most blunt answer I could have expected कि पहले ही बहुत सारा पैसा लग चुका है. बट देखिए, बहुत जल्दी अब कैटेगरी सी की शुरुआत होने वाली है, एंड देयर आर फ्यू पीपल जिनकी निगाहें हैं कि कैटेगरी बी से जो प्लेयर कैटेगरी सी में है ना, थोड़ा उनको पकड़ा जाए, क्योंकि काफी लोगों के लिए वो कैटेगरी एक मजबूरी है, काफी के लिए उनका बजट. बट चलते हैं वापस से, लेट्स सी कैटेगरी सी में क्या होने वाला है. सैम, टेक इट अवे. कैटेगरी सी से जाने से पहले अभी भी मुकेश बाकी है, उनका खाता कैटेगरी बी वाला खुला नहीं है. सो इट विल टेक टाइम बिफोर वी जंप बैक. देयर आर स्टिल मोर प्लेयर्स जो हमें कैटेगरी बी में रोल करना पड़ेगा फॉर द ऑक्शन. सो लेट्स ब्रिंग इन द नेक्स्ट प्लेयर विदाउट एनी फर्दर अडू. बुलाते हैं हमारे अगले प्लेयर जो होने वाले हेमंत. वी ऑलरेडी पुट हिम बैक इन द पूल. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट प्लेयर प्लीज? ही वाज अनसोल्ड. कैन वी ब्रिंग द नेक्स्ट प्लेयर फ्रॉम दिस कैटेगरी बी? He was unsold earlier. Can we bring the next player up on our screen? Hyderabad. While Hyderabad इस बार वेट कर रही है अपना पहली जो कैटेगरी बी के प्लेयर है. ऑन दी अदर एंड, जैसे सदा जी ने बोला था, दिल्ली शार्क्स के अक्षत ने इस बार बहुत सारे प्लेयर्स कैटेगरी बी से नहीं उठाए, एंड इस बार और काम कंपोज है. And I'm pretty sure, especially being a young player, there's a lot of responsibilities on him. Rudra, base price of 60,000. Base price of 60,000. Do I see any bids coming in for Rudra at the base price of 60,000? Once. Any paddles? Twice. Looking across the room. Aakhri call. Unsold. Let's put Rudra back in the unsold pool. Let's get back the next player. Rudra remains unsold for the time being. अगला प्लेयर हम बुलाते, who is the next player up on our screens for category B? अब बहुत precision वाला मामला हो चुका है, because yes, the pool's bigger, but the want is only one. Asif Khan, he is the next player up on our screens. Hyderabad Rhinos have to pick one. आपके ऊपर ये, if we get your pick, we will start moving to category C. Asif, base price of 60,000. Others still can go for this bid, but Hyderabad आपको एक player लेना ही पड़ेगा. This is the last third player from category B. Asif, once. Do I see any bids going in? Twice. Seems like there's a no from Hyderabad and no from everybody. Unsold. Let's put him back into the pool. Let's put him back into the pool. That is Asif, who will be unsold and yes, will be cascaded to category C, जहाँ पे उनका base price 30,000 होने वाला है. The ranks will not change. Everybody has put efforts. This is their chance to be sold in another tier if there's a chance and if the teams are looking forward to fulfilling that criteria. चलिए अगले player के तरफ बढ़ते. Who is the next player? It's going to be Bhupendra Patel. Bhupendra, 60,000. Base price of 60,000. Bhupendra Patel, 60,000. Hyderabad Rhinos instantly was a nod to saying no. Any other teams, you can still have a chance except for Chennai Falcons as well as Gujarat Wolves. I don't see any bids. Once, twice, unsold. Let's put him back in. Bhupendra will remain unsold. Hyderabad Rhinos, let's see if this is the next player जो आप bid करने वाले या base price पे steal deal उठाने वाले. As of now, the room is only concentrated towards your end. चलिए बुलाते हैं अगले player के लिए. Who is the next player?
for maybe Hyderabad Rhinos, या Hyderabad Rhinos आप शुरू करते ही कोई और चुरा के लेके जा सकता है. 60,000 base price, that's going to be Dipesh. Dipesh at base price is 60,000. Last second player from category B, Dipesh at 60,000. I don't see the room going up for the paddles once. Do I see anybody else with the paddles? Twice. Everybody is concentrated, looking for the very last few picks that they need. And I think majority are in category C now. Unsold. He goes to unsold Dipesh, and we bring in Hitesh. Is it Hitesh? Can I get a confirmation if that's the next player? Yes, it is Hitesh, the next player up on the screen. Base price of 60,000, and Mukesh is still saying no to it. मेरा ध्यान पता नहीं क्यों ऐसे जैसे नाम बोलता हूँ सीधा मुकेश के पास जाता है, because right as now that is the only paddle everybody wants to see. Base price 60,000, Hitesh. I don't see any bids coming in. Once, twice, unsold. Let's put him back in. Unsold for the time being. Hitesh has not been bought, and right as now we'll quickly roll through all the players from category B. Mukesh, आपको अब buy करना पड़ेगा because we've gone through all the players from category B. That minimum criteria is still not fulfilled. Let's quickly start bringing up one player by one player, and in case Hyderabad Rhinos are going to pick it, we will sell it. If somebody else is wanting that bidding war, we'll start that as well. Let's bring in players one after another, but quickly, eye on the purse. Hyderabad Rhinos still at the top at 2,30,000. Delhi Sharks at 2 lakh. Bengaluru Badgers at 1,45,000. Mumbai Grizzlies at 1 lakh. Pune Stallions sitting at 90,000. Chennai Falcons at 65. Kolkata Hawks at 60,000. Gujarat Wolves at 30,000. This is so far the purse, and जैसे हम players के बारे में बात करते हैं, the main reason that everybody is looking forward to Hyderabad, and जैसे हमने already बोला है, they have to get one player from this category, and that is the only way that we will be able to move to the next category, that is category C, जहाँ पे base price रहने वाला 30,000. But otherwise, except for Hyderabad, every team starts with 4. That is Delhi Sharks with 4 players, Bengaluru Badgers with 5, Mumbai Grizzlies with 6, Pune Stallions with 5, Chennai Falcons who are looking forward eagerly कि एक आखिरी player मिल जाए बस, हम हमारा GEPL season 3 आज ही शुरू कर देंगे. Along with Gujarat Wolves who also have 7 players, and Kolkata Hawks need 2 more players. That will fulfill their total 8 with their marquee player included. ये था हमारा auction synopsis. If any of the viewers outside are confused, होइए मत, but once it's completed आपको और idea आ जाएगा. But again, to quickly for everybody to understand, the auction purse started from 10 lakhs, जिसका 10 lakhs का 2 lakh already जा चुका है जो marquee players है for respective franchisee teams. But इसके साथ वो auction होने के बाद 8 lakhs was the remaining amount category A and B पे spend हो चुका है. Almost around we've seen 5 to 6 lakhs being spent. But इसके बाद एक आखिरी जो player है या maybe a little more bidding war, ये देखने के लिए we'll go for a small break. तो कहीं मत जाएगा, GEPL season 3 auction अभी भी बाकी है. जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद इंट्रोडक्शन. हमारे साथ पिछली बार के चैंपियन और रनर अप जुड़े हैं. मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है, मैं चेन्नई फाल्कन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं मुंबई ग्रिजली टीम का कैप्टन हूँ. हेलो, माय नेम इज़ सुरजीत सिंह, मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस बार मैं कोलकाता हॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हेलो, मेरा नाम जेडी वेर्ड है, मैं इंडो पाक बॉर्डर राजस्थान की पावन धरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ.
इस सीज़न मैं गुजरात वुल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो पिछली बार से इस बार कंपटीशन क्या टफ आपको लग रहा है, क्या अलग आपको लग रहा है? हाँ, एक तो टीमें 6 से 8 हुई हैं इस बार, तो जीतना भी थोड़ा टफ है और 2 अच्छे मार्क की प्लेयर भी आए हैं, तो अच्छा कंपटीशन होएगा सर, लेकिन जीतेगी तो चेन्नई। ये थर्ड सीजन है, काफ़ी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और कंपटीशन हाई हो रहा है उससे। मुझे लगता है इस सीज़न 2 टीम और बड़ी है, तो कंपटीशन भी और नेक्स्ट लेवल होगा। अब ये बताओ कि पिछली बार आपकी टीम में खिलाड़ी थे जेडी, वन ऑफ द बेस्ट पिक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट बिड, अब वो खुद की टीम लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा डर ऐसा लग रहा है कि आपका बढ़िया प्लेयर भी निकल गया और अब भी टीम लेके आ रहा है? सर डर तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तो पहले भी अच्छा ही था तो अभी भी होएगा, और जेडी भी गए हैं लेकिन उनसे बेटर और भी प्लेयर हैं जो नए आए हैं ऑप्शन। तो अजून भाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली बार ऐसी क्या कमी रह गई कि चैंपियन नहीं बन पाया, मतलब इतने से रह गए, क्या ऐसी कमी रह गई थी? हम लोग ओवरऑल अच्छा खेले थे बट लास्ट मैच में लक नहीं चला थोड़ा, तो प्रेशर में हो जाता कभी कभी, बट हम सीख के आगे बढ़ेंगे और अच्छा खेलेंगे। पिछले सीज़न में हमने कुछ रोल्स गलत दे दिए थे, जो हमारे मेन रोल्स थे बैलेंस्ड और ब्रूट, वो काम नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी हमने प्ले ऑफ तक किया था, क्वालीफायर 2 खेला था, उसमें भी एक बॉल गलत चली गई, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। आपने 2 टीमें और की बात की तो इसी टॉपिक पे आते हैं। पिछली बार आप एक टीम में खेले तो आप हाईएस्ट बिड प्लेयर थे जेडी, इस बार आपने अपनी खुद की टीम बनाई है, तो क्या अपने पुराने लीडर को आप इस बार हराने वाले हो? सिर्फ एक लीडर को नहीं, बाकी जो 7 टीम और खेल रही है उन सबको हराने की ट्राई करेंगे। ओके, आपका क्या प्लान है इस सीजन के लिए? जीतना है भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जेडी भाई, पिछली बार की जीत में एक बहुत बड़ा हाथ आपका भी था, ऑल्दो हमने बात की थी कि सीजन में बहुत समय तक आप चले नहीं थे और फिर आप चले और बहुत कमाल खेला, तो इस बार क्या नया जेडी में दिखना रहा है, क्या अलग होने वाला है आपके इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से? अब फर्स्ट सीजन में एज ए कैप्टन खिला, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गया था, मैं चाहता हूँ इस बार एक कैप्टन जेडी दिखे। इस बार ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जिस पे आप दोनों की नजर है, मतलब आपके लिए कौन सा वो एक प्लेयर है कि ये अगर मेरी टीम में आ गया तो बढ़िया, मैं इसके लिए तो बिड करने वाला हूँ? सागर पटेल एंड गोल्डन। ओके, 2 नाम बता दिए, पाजी आपकी बारी। हाँ, सागर और जेठाराम। For Hyderabad Rhinos, but everybody who wants to fulfill their best 8 from the 8 franchisee teams to make it to GEPL Season 3 जब शुरू होगा matches. Welcome back to Jet Synthesis presents Global E-Cricket Premier League with our partners, starting with our official partner B by Lenskart, played on Real Cricket, and our strategic partner Sky Esports and Global Music Junction. चलिए category B का 1-2 और players बाकी है, and this doesn't deny the other teams from getting their chance at category B players. आप चाहिए तो bid कर सकते, but Hyderabad Rhinos, you have to get that one player, and इसी के बाद we'll cascade and move to category C. चलिए शुरू करते हैं without any delay. It's going to be Sheikh Rasool, the very first player. Base price of 60,000. Anybody with Sheikh Rasool, base price of 60,000. अब हम वापस re-roll कर रहे हैं for anybody watching online, because Hyderabad Rhinos and anybody जो हमारे franchisee team से अगर उनको चाहिए, they can go for this bid. Once, twice. I don't see any bids coming in. Nothing from Hyderabad Rhinos, nor anybody unsold. Let's put him back into the pool. He will for sure now go to the Cascade 8 Category C section. Let's bring up the next player. Unsold, Sheikh Rasool. Let's bring up the next player up on our screen, please. Chaliye, next player up on our screen. Who is the next player? Next player is going to be Pappu. Pappu is the next player up on our screens. Do we see any bids coming in? Base price of 60,000. Pappu is at base price of 60,000. Do we see any bids coming in from anybody? Once, twice, last and final call. If there is a bid going in, it has to be now. Unsold. We will put Pappu back into the pool. That is unsold. And let's move to our next player. Abhi ke liye Hyderabad Rhinos still are not feeling ki ye player fit hoga ki nahi. Let's bring the next player. Let's see if that is the player who will fit in. Next player up on our screen, please. Who is the next player? It's going to be Anurag Lamba. Anurag Lamba, base price of 60,000. Do you see a nod? And yes, we finally see the paddle up. And same goes for my hammer. 60,000 base price. Everybody was waiting for this. Finally 60,000. Do I see any counter bids coming through? Koi aur yahan pe with going once for Hyderabad Rhinos at 60,000. Anurag Lamba going once. Ho chuka hai. Now it's going to be going twice. 60,000 for Hyderabad Rhinos. Final call. Anybody looking forward to a bid? Final and last.
sold to Hyderabad Rhinos, and now they fulfill their criteria of minimum one player from category B. 60,000 steel deal Anurag Lamba, Hyderabad Rhinos. Congratulations on getting your player. Ye zarur ab. However, you're still far away, Hyderabad Rhinos. You have only total 4 players as of now. साथ ही में Delhi Sharks, आपके पास भी सिर्फ 4 ही player है. And after that is Pune Stallions, who have a total of 5, and आपको चाहिए 3 और player. Yes, this does put us the minimum criteria जो है minimum एक player category B का, it's fulfilled. Do we have any more category B players? Because again, there is still chance for you guys to bid at category B and take the player away. Do we have another player who's going to be coming up on our screen? There are no more players. इसी के साथ एक बार last time for category B, at the end of category B, let's take a look at our auction purse, the auction synopsis. Delhi Sharks still stand at the tallest position at the end, who have 2 lakhs. 2 lakh है इनके पास, and they can go for a bidding frenzy when we start off category C. Hyderabad Rhinos at 1,70,000, Bengaluru Badgers 1,45,000, Mumbai Grizzlies at 1 lakh, Pune Stallions at 90,000, Chennai Falcons at 65,000, Kolkata Hawks at 60,000, and Gujarat Wolves at 30,000. The main problem, even though Delhi have a lot in their purse, आपको 4 player खरीदने पड़ेंगे, and that is what you have to worry about. Same goes for Hyderabad Rhinos at a purse of 1,70,000. But as we said, Bengaluru Badgers, Pune Stallions and all, they have a chance. Purse अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, but they will be able to cope up with it. But that brings us to the end of category B. इसी के साथ we'll cut to a break, and once after the break we start is category C. कहीं मत जाइएगा. जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. हमारे साथ पिछली बार के चैंपियन और रनर अप जुड़े हैं. मेरा नाम सुप्रीत सिंह है, मैं चेन्नई फाल्कन्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं मुंबई ग्रिजली टीम का कैप्टन हूँ. हेलो, माय नेम इज़ सुरजीत सिंह, मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस बार मैं कोलकाता हॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हेलो, मेरा नाम जेडी वेर्ड है, मैं इंडो पाक बॉर्डर राजस्थान की पावन धरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ. इस सीज़न मैं गुजरात वुल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो पिछली बार से इस बार कंपटीशन क्या टफ आपको लग रहा है, क्या अलग आपको लग रहा है? हाँ, एक तो टीमें 6 से 8 हुई हैं इस बार, तो जीतना भी थोड़ा टफ है और 2 अच्छे मार्क की प्लेयर भी आए हैं, तो अच्छा कंपटीशन होएगा सर. लेकिन जीतेगी तो चेन्नई. ये थर्ड सीजन है, काफ़ी अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और कंपटीशन हाई हो रहा है उससे. मुझे लगता है इस सीज़न 2 टीम और बढ़ी है, तो कंपटीशन भी और नेक्स्ट लेवल होगा. अब ये बताओ कि पिछली बार आपकी टीम में खिलाड़ी थे जेडी, वन ऑफ द बेस्ट पिक्स, वन ऑफ द हाईएस्ट बिड. अब वो खुद की टीम लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा डर ऐसा लग रहा है कि आपका बढ़िया प्लेयर भी निकल गया और अपनी टीम लेके आ रहा है. सर, डर तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन तो पहले भी अच्छा ही था, तो अभी भी होएगा. और जेडी भी गए हैं, लेकिन उनसे बेटर और भी प्लेयर हैं जो नए आए हैं ऑप्शन. तो जो मैं भाई आपसे जानना चाहता हूँ, पिछली बार ऐसी क्या कमी रह गई कि चैंपियन नहीं बन पाया, मतलब इतने से रह गए, क्या ऐसी कमी रह गई थी? हम लोग ओवरऑल अच्छा खेले थे, बट लास्ट मैच में लक नहीं चला थोड़ा, तो प्रेशर में हो जाता कभी कभी, बट हम सीख के आगे बढ़ेंगे और अच्छा खेलेंगे. पिछले सीज़न में हमने कुछ रोल्स गलत दे दिए थे, जो हमारे मेन रोल्स थे बैलेंस्ड और ब्रूट, वो काम नहीं कर पाए थे. लेकिन फिर भी हमने प्लेऑफ तक किया था, क्वालीफायर 2 खेला था, उसमें भी एक बॉल गलत चली गई, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था. हम उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं. आपने 2 टीमें और की बात की, तो इसी टॉपिक पे आते हैं. पिछली बार आप एक टीम में खेले तो आप हाईएस्ट बिड प्लेयर थे जेडी. इस बार आपने अपनी खुद की टीम बनाई है, तो क्या अपने पुराने लीडर को आप इस बार हराने वाले हो? सिर्फ एक लीडर को नहीं, बाकी जो 7 टीम और खेल रही है उन सबको हराने की ट्राई करेंगे. ओके, आपका क्या प्लान है इस सीजन के लिए? जीतना है भाई, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. जेडी भाई, पिछली बार की जीत में एक बहुत बड़ा हाथ आपका भी था. ऑल्दो हमने बात की थी कि सीजन में बहुत समय तक आप चले नहीं थे, और फिर आप चले और बहुत कमाल खेला. तो इस बार क्या नया जेके में दिखा रहा है, क्या अलग होने वाला है आपके इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से? अब फर्स्ट सीजन में एज ए कैप्टन खेला, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गया था. मैं चाहता हूँ इस बार एक कैप्टन जेडी दिखे.
इस बार ऐसा कौन सा एक प्लेयर है जिस पे आप दोनों की नजर है, मतलब आपके लिए कौन सा वो एक प्लेयर है कि ये अगर मेरी टीम में आ गया तो बढ़िया, मैं इसके लिए तो बिड करने वाला हूँ? सागर पटेल एंड गोल्डन। ओके, 2 नाम बता दें भाई, आपकी बारी। हाँ, सागर और जेठाराम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे टफ टीम आपको क्या लग रहा है कौन बना सकता है, किस मार्की प्लेयर पे आपको लग रहा है कि मतलब वो सबसे बढ़िया प्लेयर स्टील करने वाला है? मुझे लग रहा है देवेंद्र। मेरे हिसाब से सारे अच्छे प्लानिंग के साथ आए हैं, बट सुखप्रीत सिंह के बारे में सब लोग बोलते हैं फाइनल प्रीत सिंह है, तो लगता है उनकी टीम सबसे अच्छी होगी। चलो, सागर के तुम्हें समझ आ रहा है कि बिड वॉर तो जाने वाली है, दैट्स गुड जी। अब पिछली बार हमने एक प्लेयर की चर्चा की थी गोल्डन, वो बहुत तगड़ा प्लेयर था, मुंबई के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ था। क्या इस बार आपको लगता है कि गोल्डन वापस आपके पास आना चाहिए, यू कैन अगेन डू द सेम थिंग, क्योंकि वो तो बिड करने वाले गोल्डन के लिए? जी बिल्कुल ट्राई करेंगे, बट हमारे हाथ में नहीं है, अगर ओवर प्राइस हो गया तो छोड़ना ही पड़ सकता है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या एक बजट होता है या क्या दिमाग में चल रहा होता है वाइल बिडिंग, कि यहाँ तक मैं जाऊंगा, फिर इधर अगर मैंने ड्रॉप कर दिया तो मैं नेक्स्ट किस प्लेयर को पिक करूंगा, क्या चलता है उस पॉइंट पे? जैसे सर पता है हमें हर प्लेयर की क्या कैपेबिलिटी है। हमें 4 बैट्समैन चाहिए, तो 4 बैट्समैन हमें ऑलमोस्ट हम 70-80% बजट उन पे लगा सकते हैं ऑप्शन का। बॉलर्स हम काम चला लेंगे। तो लास्ट टाइम जो हाईएस्ट बिडेड प्लेयर था वो भी मेरी टीम में था, अभी वो खुद कैप्टन है, तो उतना बजट तो मेरे पास है ही, मैं उसके बदले में किसी को भी ले सकता हूँ और टीम में से। ओके, एंड आपका क्या प्लान है बजट अपना स्पेंड करने का? हाँ, स्मार्ट बिडिंग करेंगे, तो ट्राई करेंगे 4 से 5 प्लेयर अच्छे लें और अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं। कौन सा एक प्लेयर आपको लगता है, कौन सा एक कैप्टन आपको लगता है जो फाइनल नहीं खेलने वाला है इस सीजन? मुझे लग रहा है जेडी बैरन। जेडी भाई, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे है, बताइए कौन सा एक आपको लग रहा है कैप्टन जो नहीं खेलेगा इस बार? सुजीत पाजी का ही लूंगा, अभी इन्होंने लिया है तो। बट अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो फिर किसका नाम था आपके जहन में? मुझे लगता है इस सीजन देवेंद्र पाजी नहीं खेलेंगे। चलो, 2 नाम मिल गया हमें जेडी भाई के साइड से। और एक ऐसा कैप्टन जिसका आपको लग रहा है चांसेस बहुत हाई हैं कि वो सबसे तगड़ी टीम बना के जाएगा? सुखप्रीत के पास वो है, और देवेंद्र ने अभी तक कुछ रिवील नहीं किया है, जो से हमारी नॉर्मल टॉक्स होती हैं, तो मुझे लग रहा है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ऐसा होता है क्या कि मतलब जब आप सारे प्लेयर्स एक साथ होते हो, मोस्टली यू गाइस टॉक अबाउट टीम कि हम ये प्लेयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं? हाँ, बातों बातों में थोड़े डेढ़ छाने होते हैं ना, वो बातों बातों निकलवाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने ट्राई किया निकलवाने का? हाँ, कुछ लोगों को पता लग गया, लेकिन प्रेफरेंसेस पता होती है ना, जब आप एक कम्युनिटी में होते हो तो प्रेफरेंसेस आपको पता होती हैं प्लेयर्स। जेडी भाई? मेरे हिसाब से सुखप्रीत पाजी दोबारा अच्छा कर सकते हैं। क्या आपने ट्राई किया निकलवाने का कि कौन किस प्लेयर को पिक करने की कोशिश करेगा? वैसे तो मुझे बहुत सारी जानकारी है कि कौन किसके ऊपर जाने वाला है, बट मेरा मेनली फोकस मेरी खुद की टीम पे है, बाकी पे नहीं है। तो कोई एक प्लेयर जिसके पीछे आप रेडी हो अच्छी बिड डालने के लिए? लास्ट सीजन की एक टीम थी जो वैसे तो टेबल पे लास्ट पे रही है, बट उसका एक प्लेयर है सागर पटेल, उस पर मैं बहुत अच्छे मतलब ऊपर तक जाना चाहूँगा। पिछली बार की हमने आपसे चर्चा की थी और आपने बोला भी था कि एक टीम जो आपको लग रहा है बहुत स्ट्रांग है वो मुंबई थी, आपने पिछली बार कहा था। इस बार आपको क्या लगता है कौन सा कैप्टन सबसे स्ट्रांग टीम बना सकता है, कौन सा मार्की प्लेयर सबसे स्ट्रांग टीम बना सकता है? देवेंद्र एंड अक्षत। चलो, बहुत बढ़िया भाई, आपके लिए? सुखप्रीत, अक्षत। नाइस, बहुत बढ़िया। कौन सा एक मार्की प्लेयर जो आपको लगता है कि इस बार भी उससे तो नहीं होने वाला? सौरभ। सुरजीत सिंह। कारण बताएंगे दोनों एक एक करके, पहले आप आइए। सर वो पिछले 2 सीजन से बॉटम पे ही रह रही है, तो लग रहा है ऐसा फिर भी रहेगा। उसका लक बहुत खराब है, मतलब वो टॉस के मामले में हार जाता है तो अच्छा, ये आप लोग मानते हो क्या कि जो टॉस हारता है वो मैच जीतता है, या ऐसा कुछ होता है? 70-80% होता है सर। होता है। हाँ। कितना डिपेंड करता है स्टार्टिंग ओवर अच्छे होना, क्योंकि पिछली बार अगर मुंबई की हम चर्चा करें, मुंबई वाज अ टीम जिनके स्टार्ट के 1-2 ओवर खराब गए थे, बट कमबैक बहुत तगड़ा कर लिया था। तो स्टार्टिंग ओवर भाजी कितना आपके हिसाब से इफेक्ट करता है? हाँ सर, पावर प्ले तो इंपॉर्टेंट तो होती है वाइल बैटिंग एंड बॉलिंग, बट ऐसा नहीं कि आप उसमें पूरा मैच ही लूज कर जाते हो, तो कमबैक करने का मौका तो होता ही है भाई आपके लिए। मतलब ग्राउंड ऐसे छोटे होते हैं ना, सिंगल डबल होते नहीं आसानी से, तो उससे मतलब लो स्कोरिंग मतलब मैच भी डिफेंड हो जाता है। ओके, और मेरे को ये जानना है कि पिछली बार की आपकी जीपीएल की बेस्ट मेमोरी क्या है? ऑब्वियसली ट्रॉफी लिफ्ट करना। मुझे तो याद है फोटो भी आई थी बहुत तगड़ी वाली ट्रॉफी के साथ, आई रिमेंबर दैट फोटो। भाई आपके लिए बेस्ट मेमोरी पिछले जीपीएल की? बेस्ट मेमोरी वो ट्रॉफी मिस हो गया, वो उठाएंगे इसको। ये बेस्ट कैसे हुआ? ये तो उनकी बेस्ट हो गई। सचिन से बात की हुई अच्छा वो वो खुश है ना, आपके लिए खुश थे? अच्छा हाँ, नहीं गिफ्ट भी मिला था, ईयरबड्स। सारा जी। हाँ, अरे सचिन से वीडियो कॉल है, उससे बड़ी मेमोरी क्या होगी? तो क्या बेस्ट मेमोरी थी आपकी? हाँ, सचिन सर से वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो वो बेस्ट मेमोरी है मेरी। चलो, बहुत बढ़िया। और क्या ऐसा कोई प्लान है कि मतलब
बस किसी एक बंदे को जो प्लेयर चाहिए उसे रोकने के लिए आप थोड़ा सा बिड ऐसे हाई करने वाले हो, यू डोंट वांट टू बाय दैट प्लेयर बट आप थोड़ा बस ऐसे बिड बढ़ाओगे साइड से। हाँ सर, वो स्ट्रेटजी तो होती है, अगर कोई सामने वाला अच्छा प्लेयर कम बजट में लेके जा रहा है तो बाद में फिर वो आपको ही तंग करेगा। मेरे टारगेट तो प्लेयर्स हैं जो मैंने लेने, लेकिन सामने वाला भी अगर कोई अच्छा प्लेयर कम में लेके जा रहा है तो उसको हाई तो करना चाहिए थोड़ा सा। मतलब सामने का पर्स खराब करने का ट्राई करेंगे भाई, आपके लिए अपनी गेम खेलेंगे हाँ, या पर्स वाला गेम? नहीं सेम स्ट्रेटजी है, बाकी आप वीडियो कब डालेंगे पता नहीं, तो किसी का नाम नहीं ले सकते ना। ये बात तो बहुत अच्छा है भाई। आपके कोई एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए आप बिड करने को तैयार हो अच्छा खासा? सागर पटेल और गोल्डन, इन दोनों में से किसी एक पे मैं ऑल इन हो जाऊंगा इस बार, मुझे लग रहा है। गोल्डन आई थिंक पिछले बार उन्होंने हैट्रिक भी ली थी, बहुत बढ़िया। नहीं, उसे गेम की अच्छी नॉलेज है। गेम के अच्छे नॉलेज, नाइस। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग है इस बार, क्योंकि इस बार जब ऑक्शन हो रहा है सारे वहीं बैठने वाले हैं, तो क्या कुछ ऐसा है कि आपको अगर लग रहा है कि भाई जीडी ना ये वाला प्लेयर पिक करने वाला है तो आप थोड़ी सी बिड साइड से बढ़ाने का ट्राई करोगे, कि मतलब आपको वो प्लेयर चाहिए नहीं, बस आप बिड बढ़ाने का ट्राई करोगे? हाँ, लेकिन रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि, क्योंकि अगर मैंने एक बिड भी कर दी तो चिपक भी सकता है ना प्लेयर मेरे में, और एक स्पॉट मेरी भर जाएगी, तो मतलब ओवर स्मार्टनेस में कई बार घाटा भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम अच्छी बनाऊँ। ठीक है, आपका कुछ प्लान जीडी वैसे बाकी को तंग करने के लिए? नहीं, मैं बाकी को तंग तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने सारे प्लेयरों की एक वैल्यूशन सेट की है, तो मैं हर एक प्लेयर को उतना बजट देना चाहूँगा कि ये प्लेयर इस वैल्यूशन तक का है, तो मैं अगर वो उतनी प्राइस में मिलता है मुझे तो मैं अपनी टीम में ऐड करना चाहूँगा। मतलब आपने अपनी बजटिंग कर रखी है, तो कोई एक ऐसा प्लेयर जो आपको लग रहा है जो किसी और की टीम में था लेकिन इस बार आप उसे स्टील करना चाहें? इस सीजन विकास साहू, जो लास्ट ईयर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर था, उसको मैं अपनी टीम में लेना चाहूँगा। भाई आपके लिए? है मेरे मन में भी विकास बिश्नोई है जिसका इसने नाम लिया, विकास है, और अमन विश्वकर्मा है जिसके ऊपर एक और प्लेयर है जिस सीजन में कैप्टन था उस सीजन MVP रहा, नेताजी।
लास्ट कैटेगरी बचा है. वेलकम बैक टू जेट सिंथेसिस प्रेजेंट्स ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3. Our partners are right now official partner B by Lenskart, played on Real Cricket, and a strategic partner Sky Esports and Global Music Junction. हमने अभी के लिए दो कैटेगरी फुलफिल किया था, that was कैटेगरी A एंड कैटेगरी B, जहां से मेजॉरिटी प्लेयर्स बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ने ऑलरेडी खरीद चुके हैं. नाउ इट्स डाउन टू द वन लास्ट कैटेगरी C, जहां पे हमारा जो वेट चल रहा था वो 8 पे कन्वर्ट हो जाएगा. With that, let's bring in our very first player from category C. Category C का टाइम है अभी. Base price is going to be 30,000, but जो बेस प्राइस का इंक्रीमेंट्स रहेगा इट्स गोना बी इन 5,000. अगेन इफ इट रीचेस 1 लाख वहां पे 10,000 जाएगा, बट बिकॉज मेजॉरिटी पर्स 1 लाख तक नहीं है, we don't have to be worried about that. Let's take a look at the rule as well. As I was saying about it, tier A का 1 लाख था, which we have already passed. tier B का 60,000 था, which also we have passed. And जितने भी players बचे थे, initially 6 in the tier A, and when it came to tier B, I'm pretty sure around 20 players, so around 50-60 players all are now in tier C. सबका base price is 30,000 INR. In case आपको कोई खरीदना था and you missed out, your purse did not allow it, that is the only reason ये cascading rule इस बार आया है, so that you can still purchase those crucial players जो tier A और tier B में या category A या category B में थे. That is with the base price of 30,000. Again, bidding war हुआ तो it's not in our hands, it's up to your purse and how you will be there placed on the bid. But इसी के साथ 30,000 base price रहेगा. Increments as I said of 5,000, reaching 1 lakh, which अगर जाएगा will be a big breakthrough. But इसी के साथ let's start with the first player. That's going to be Arnab Roy, the very first player. Base price 30,000 and Bengaluru Badgers open up the floor with the base bid for Arnab. 30,000 base price. Do I see any more paddles coming up? 30,000 steal deal right out of the gate. मुझे नजर आ रहा है. Going once for Bengaluru Badgers. Arnab at 30,000, going twice. Do I see anybody with the bids? And it seems Hyderabad Rhinos, they raise it up at 35,000. Bengaluru Badgers अब सोच रहे क्या करना है, and they instantly pick up the paddle, push it to 40,000. 40,000 INR, and I see Mukesh back to his usual. मना कर रहे अगले bid के लिए. 40,000 INR, going once for Bengaluru Badgers, right out of the gate, going twice. 40,000, 10,000 यहाँ पे और बढ़ा दिया गया है by none other than Hyderabad. And going twice ho chuka hai. Last and final call, no more paddles, and he will be sold. Congratulations, Bengaluru Badgers. They get the very first player of category C. 40,000 INR के साथ यहाँ पे लेते हुए नजर आएंगे Bengaluru Badgers. Congratulations, that is going to be Arnab being sold to Bengaluru Badgers. चलिए इसी के साथ let's move to the next player in our auction. That is going to be Swapnil Supekar. Base price of 30,000 INR. The floor is open for bidding. Base price 30,000. Category C hai. As we said, it could be faster. It's up to you guys. Paddles, do we see any paddles? Base price Bengaluru Badgers again. Once start. Base price of 30,000. Do I see anybody else? Pune Stallions come in at 35. 35 से सीधा 40 Bengaluru take it back. They want Swapnil this time. Players are looking at each other thinking कि ये war थोड़ा और बढ़ाना है या नहीं. 40,000 as of now, it stands with Bengaluru Badgers going once. Going twice for Bengaluru Badgers, 40,000 Swapnil as of now. Sukhpreet Paji भी सोच रहे यहाँ पे करना है कि नहीं करना है. Last and final call, I do not see any more paddles and he will be sold. Congratulations, back to back Bengaluru Badgers. And everybody is looking at Bengaluru ki ऐसे कैसे back to back चुरा लिया दो players को. With that, Bengaluru Badgers have total 7 players and अभी एक और आखिरी player चाहिए to make their playing 8. Congratulations Bengaluru Badgers, 40,000 is what they take Swapnil at. चलिए अगले player बुलाते हैं हम screen पे. Swapnil just got sold at 40,000 INR. Can we bring up the next player in front of our screens? Next is going to be Ahir Dinesh. Base price of 30,000 INR. Same, we open up the bidding floor for auction. Base price 30,000. Pune Stallions start off with the very first one. And Bengaluru Badgers want this last player as well. Back to back, all three. 35,000 is where Bengaluru Badgers. Chennai Falcons pick up their paddle for the last player at 40,000. 40,000 से सीधा 45 Bengaluru Badgers करते हुए, 45 से सीधा 50 करते हुए अभी के लिए Chennai Falcons. 50 से 55 is Bengaluru Badgers. 55 is where it stands. Chennai say no to it.
55,000 for Bengaluru Badgers. The last and final pickup. Is it going to be going once for Bengaluru Badgers? Do I see any more paddles at 55,000? Going twice. Bengaluru Badgers could be the very first team if there is no more paddles. Last and final call. And sold. Bengaluru Badgers. They get their final playing 8. Congratulations. That is going to be a big one coming in for Bengaluru Badgers. थोड़ा bidding war यहाँ पे हुआ जरूर था, but 55,000 पे it will be close. And इसी के साथ Bengaluru Badgers, आपका जो पर्स है वो पर्स वैसे ही रहेगा. That is not going to be carried forward, and this is for everybody as well. Spend as much as you can, because जितना भी पर्स बचेगा, it will never be carried forward. ये यही season 3 में खत्म हो जाएगा. Okay, and once again, congratulations to Bengaluru Badgers. They are ready for season 3. चलिए इसी के साथ let's see which team is going to be the next to fulfill their playing 8. Let's bring up the next player up on our screen. It's going to be Shubhankar Das. Shubhankar Das, our next player. The base price is 30,000. Kolkata Hawks with the first paddle 35. Chennai, okay, Gujarat, they say no. They take their bid back, retract. It's going to be base price of 30,000 for Kolkata Hawks. Kolkata Hawks at 30,000. Do I see any bids coming in? 30,000 base price. Going once for Kolkata Hawks. Do I see a bid coming in? Kolkata Hawks going twice for Shubhankar Das. Last and final call. Do I see any more paddles coming up? Sold to Kolkata Hawks. Another steal deal. जितना भी अभी तक Kolkata Hawks को मिला except for category है, बाकी सारे steal deals थे. Congratulations Kolkata Hawks for that. And with that, Kolkata Hawks will have a total of 7 players. Base price of 30,000 for Kolkata Hawks is sold. Congratulations, they get Shubhankar Das. That is Kolkata Hawks with the total of 7 players. And unko bhi abhi ek aur aakhri player chahiye. With that, let's move to our next player, please. Who is the next player? It's going to be Mayank Murari. Mayank Murari, let's start the auction, and Kolkata Hawks instantly go for it. They also want to finish their playing 8. Base price of 30,000. Mayank. Kolkata Hawks instantly raise their paddle. Do we see any more bids? Mayank Murari. Base price of 30,000. Any more bids as we go once for Kolkata Hawks at 30,000. Going twice for Kolkata Hawks. Last and final call. I am not seeing any more paddles. Sold to Kolkata Hawks. They become our second playing 8 team for season 3. Congratulations Kolkata Hawks. Base price steal deal is what they make it happen back to back from category B to category C. 30,000 INR, and Mayank Murari goes to Kolkata Hawks. And as I said, they have made their playing 8. Chaliye, with 2 squads, Bengaluru Badgers and Kolkata Hawks have their playing 8. Let's take at the next 6 squads. Ab ye dono bid nahi kar sakte. It is only the other 6 squads, especially Delhi Sharks and Hyderabad Rhinos. Aapko 4 players uthane padenge. You are the ones who are still back. चलिए इसी के साथ let's bring the next player up on our screens. Hassan Khan. Hassan Khan, our player on screen. Let's see if the paddles are going to be raised. Auction floor open. Do we see any base bids at 30,000? Hassan, 30,000 INR. Any base bids of 30,000 going once? I do not see any bids. Calling it twice in case there's anybody who wants to go for a bid. कोई और bids नजर नहीं आ रहा है. He remains unsold. We'll put him back into the pool. No bids on Hassan as of now. Unsold. He remains in category C. Thank you so much. Let's go to the next player as of now. जो आने वाले category C में. Let's see if there's going to be a bidding. That is going to be Jahid Khan coming in at the base price of 30,000. Jahid, base price of 30,000. Do we see any bids coming in? The floor is open. Do we see anyone with their paddles up? Once, do I see anybody giving another chance for everybody in case you want to go for a bid? We see right now Chennai Falcons, who are still looking forward to their last player. Gujarat Wolves as well. Twice, I do not see bids from anybody. Last and final call, unsold. Let's put him back into the category C pool as he's unsold. Let's bring the next player up on our screens, please. Next is going to be Shravan Bali. Shravan, our next player, and the auction floor is open. Base price of 30,000. Anybody going in for a base price of 30,000? Anybody with the base price of 30,000? Once, I do not see any paddles coming up. Going for another call in case anybody is changing their mind. Twice, I still do not see anybody. And last and final chance, unsold. Let's put him back.
Shravan remains unsold. Let's bring the next player into our auctions. Who is that next lucky player who will get a chance to be a part of our 8 astonishing, amazing squads? It is going to be Jitendra Kumar. Jitendra Kumar. Right now, purses are big from Delhi, and they're the ones who started off. Base price of 30,000 for Delhi Sharks. 30,000 INR. Do we see any bids? 30,000 INR. Going once for Delhi Sharks. It seems like Delhi Sharks might be also getting closer to getting their bids, but Hyderabad Rhinos, as they both need 4 each, they raise the bid at 35,000. 35,000 right now with Hyderabad Rhinos. Delhi bring it back at 40,000 for Delhi Sharks going once. Delhi Sharks at 40,000. They have the biggest purse as well. 40,000 going twice for Delhi Sharks. Do we see a paddle? Mukesh, one more chance. Anybody else? 40,000 is where it stands. Last and final call. Sold to Delhi Sharks. Congratulations. They get an additional player now getting to their 5th. Abhi 3 और player चाहिए Delhi Sharks के लिए. They've gotten 5 total playing players, including their marquee player. It is going to be 40,000 INR that they get the player at. Congratulations, Delhi Sharks. That is their 5th player. 40,000 INR. It is sold. Jitendra Kumar goes to Delhi Sharks. Chale, इसी के साथ let's move to our next player up on the auction. Who is the next player coming up on our screen? It is going to be Ajay. Ajay, our next player up on our screen with the base price of 30,000 INR. Do I see any bids coming in? It is Delhi Sharks once again. Base price quickly going in for this. Category C mein, because the others do not have much on their purse, it is going to be the big ones who heavy on it. Going once for Delhi Sharks at the base price of 30,000. It seems like no partake this time. इस बार कोई competition नहीं दे रहा है for a bidding war. Going twice at the base price of 30,000 for Ajay. I do not see any more paddles. Last and final call. Sold to Delhi Sharks. Congratulations. You get another player added. लग रहा है जो टीम्स बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था with their playing it, उनको चांस नहीं मिल रहा है. बाकी सारे फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं. And congratulations, Delhi Sharks. Base price 30,000 INR. You get Ajay playing this time in season 3. इसी के साथ Delhi will be at a total of 6 players. Perfect. It's time to move to the next contestant जो आने वाला है. The next player who's qualified from our Swiss qualifiers and now here bases their rank is going to be Rohit Rathod. Rohit Rathod with a base price of 30,000 and Pune Stallions instantly open up for the bid at the base price. 30,000 INR right now, and Mumbai Grizzlies jump into it at 35,000. They want their claws into it. क्या यहाँ पे chance Pune Stallions वापस आती है 40,000 पे? It is right now at 35,000. 35,000 going once for Mumbai Grizzlies. Do I see the paddles from anybody? Bengaluru Badgers का हो चुका है, so they will not be jumping into the battle. Even Kolkata as well. Going twice for Mumbai Grizzlies at 35. Last and final call. Do I see any more paddles? Last and final. I do not see any more paddles. Sold to Mumbai Grizzlies at 35,000. They had to spend only an additional 5,000. The Mumbai Grizzlies, they will get their player, and that is going to be a total of 7 players जो Mumbai Grizzlies को अब मिलता हुआ नजर आएगा. Meaning they need only 1 player. 1 player is all they need to make it a playing 8. And इसी के साथ, now that they have gotten 1, let's look forward to the next one. It's going to be Chetan Meena. Auction is open, 30,000 INR, and it is Delhi Sharks. It seems like they're quick. 30,000 INR for Delhi Sharks. Base price for Chetan is what they bid for, and they've opened it up. Anybody on the floor? किसी को अगर चाहिए तो you can raise your paddles. Going once for Delhi Sharks. Going twice now for Delhi Sharks. Last and final call. Do I see if there is going to be a bidding? Delhi is using their purse really wise. सारे पैसा अब last में किसी को competition में नहीं रख रहे. And with that, it is going to be sold to Delhi Sharks. Congratulations. Base price steal coming in from Delhi Sharks. That is going to add another player for them, making a total of 7. अब Delhi Sharks को भी चाहिए एक आखिरी player. And we need Gujarat also needs 1. Mumbai Grizzlies also needs 1. And Chennai Falcons also needs 1. It's only Kolkata Hawks and Bengaluru Badgers who have finished their playing 8. चलिए इसी के साथ next player is going to be Siddharth Jain. Siddharth Jain, the auction floor is again open. 30,000 base price INR.
Anybody looking forward to bidding for Siddharth Jain? Siddharth Jain and Hyderabad Rhinos come in at 30,000. Base price 30,000 INR. Do I see anybody else going in for Siddharth Jain? As I say, Hyderabad Rhinos going once for Siddharth Jain at 30,000 INR. Any more paddles up? Going twice. As I'm still looking at any more bids in case anybody wants to play. Last and final call. Hyderabad Rhinos base price, they have it, and it's going to be sold. Congratulations, Hyderabad Rhinos. Just like Delhi Sharks, they're galloping and now getting closer to their playing 8. 5 players Hyderabad Rhinos ko ho chuke hai abhi. Now let's see in case we see another player being taken by Hyderabad Rhinos itself. Congratulations, Siddharth Jain goes to Hyderabad Rhinos at the base price of 30,000 INR. Chale, isi ke saath, let's bring up the next player. It's going to be Azan Sheikh. Base price of 30,000 INR. Do I see any paddles coming up on our floor? It is Delhi Sharks, the very first one. 30,000, 35,000 Hyderabad Rhinos. Seems like the teams who had the purse, they're going to be bidding. 35 se 40, 40 se 45 for Hyderabad back again, taking Delhi out. Wahan se 45, yahan pe aata hua 50 is where Hyderabad Rhinos take it. 50 se 55, yahan pe leke jaayegi. 55 se 60 is where Hyderabad come in. 60 se 65, 65. Say, is there a paddle coming in? Yes, it is 70 coming in from the Hyderabad Rhinos. Sitting at 70, 75 is what Delhi Sharks come into. 75 se see the 80 leke jayenge. 80 se 85 playing the purses battle. 85,000 for Delhi Sharks. Going once, Hyderabad Rhinos, it's at 85,000. You are the ones with the biggest money. 85,000 going twice for Delhi Sharks. Do I see a fight? यही बोलते हैं इसीलिए पैसा बचा के रखो. I think this is why parents also said यहाँ पे Delhi Sharks को मिलने वाला है. Last and final call. Sold. Delhi Sharks get him at 85,000 INR. Delhi Sharks, and they've right now made their total. They just needed one player, so this is going to be their playing 8. Delhi Sharks, congratulations. You have filled your squad. Your playing 8 is ready for season 3. And इसी के साथ, they also finalize their playing 8 with Bengaluru Badgers and Kolkata Hawks. Let's take a look at our auction purse. In the meanwhile, just a quick jump कि कौन सी teams अभी भी बची है, कौन सी teams already race में अभी तैयार है. They just need to start it off. Auction purse, please. Auction synopsis. Let's take a look at it of how much money is left and how many players are yet to be acquired. As we already spoke, Bengaluru Badgers, Delhi Sharks and Kolkata. So Delhi Sharks, Kolkata Hawks and Bengaluru Badgers. The 3 teams who already got their 8 players, and iske baad Kolkata Hawks are the ones who have no money. They spent it everything, and that's the best way to make sure that nothing is left. Delhi Sharks, they are left with 15,000, but they cannot get any more. 8 is done. Bengaluru Badgers ke paas 25,000 bacha hai. They also have finalized their 8. Gujarat Wolves, they just have 30,000. That's why they couldn't bid more, because their bid will not be valid. They have to go for a base price player itself. Mumbai Grizzlies have 65, so they can go for a little bit of a war. And same goes for Chennai Falcons as well. Dono ke paas 65,000 INR dekhne ke liye mauka mil raha hai. Pune Stallions on the other end have 90,000, but aapko abhi bhi 3 player uthana padega, and that is something that you have to keep an eye on. Same goes for Hyderabad Rhinos. Aapko bhi 3 aur player uthana padega. With that, let's go into our next player. That's going to be Milan. Milan Gohil. Next player up on our screens, base price of 30,000 INR. Do we see any bids coming in? Last year he played for Mumbai Grizzlies. Do we see any bids coming in this time? 30,000 base price, 30,000. Floor is open. Do we see any bids coming in? Kolkata Hawks, Bengaluru Badgers, as well as Delhi Sharks. 3 teams, the first ones. Once, as I don't see anybody bids coming in, as these 3 teams are already ready. We need to see who the 4th team is. Twice, do I see a bid coming in? No paddles yet. Milan will be unsold in case there is nobody in the paddle. And he'll remain unsold. Milan will be put back into the pool. With that, let's jump to the next player. It's going to be Saurabh. A very incredible bowler right now in category C. Could be a steal pick for some of the squads in case they pick him up. 30,000 INR. Do I see a base price bid coming in from the other 5 franchisee teams? 30,000 INR. Gujarat with their base bid of 30,000. That's what they have in their pot. That's what they're looking forward to. Any bid against them. Everybody right now has the floor. The other 4 teams, as I say, Gujarat Wolves going once for Saurabh. I do not see anybody else raising the competition against them. Going twice for Gujarat Wolves for Saurabh.
Last and final call. That's the base price steal deal. I do not see any bids coming in. Sold. Saurabh goes to Gujarat Wolves and they finalize their playing 8 and leave nothing in their purse. Congratulations, Gujarat Wolves. That is your playing 8 with the last player joining Saurabh. Wonderful. 4 स्क्वाड्स अब हो चुके हैं सीजन 3 के लिए तैयार, 4 और बाकी है. Let's see who the next are going to be. Let's bring up the next player, please. Sheikh Rasool. We did see him earlier. Base price is going to be 30,000. It's not 60 as he's moved to this category. It is base price of 30,000. Do I see any base price 30,000 INR bids coming in from anybody? Base price 30,000 INR bid for Sheikh. From category B to category C, a cascaded player. This is your best chance to get that player. Once, I do not see any bids coming in. Anybody, no faces turning towards their paddle or hands. Twice, last and final chance in case the bid wants to be up for anybody. Unsold, let's put him back into the category C pool. Okay, let's move to the next player as he remains unsold. Sheikh will remain unsold. It's going to be Happy Singh. Again, base price of 30,000 INR. Happy Singh, base price of 30,000 INR. If anybody wants to pick him, again coming in from the earlier categories. Going once, if anybody, I do not see anybody's hands reaching the paddle. Twice in case somebody still wants to change their mind. Last and final call. Unsold, let's put him back into the pool itself. Hyderabad Rhinos and Pune Stallions, you are the ones who are still looking forward to more players. इसे हमने already बात किया, 3 players दोनों को चाहिए. Chennai clearly can see कि उनको सिर्फ एक ही player चाहिए, तो नाम अगर आएगा तो तभी पैडल उठेगा. Clear from Sukhpreet's end and same I think from Mumbai Grizzlies as well. Davinder भी वही सोच रहे. So let's bring the next player and see if that is the player, because both of them need just one player to fulfill their playing 8. Who is the next player? Can we bring that player up on the screen? The next player for the category C auction is going to be Karthik Raja. Base price of 30,000 INR. Do we see any bids for Karthik Raja? Base price of 30,000 INR. Mumbai Grizzlies, Pune Stallions, Hyderabad Rhinos and Chennai Falcons. Anybody? Once, calling it in case you want to place a bid. Twice, I still see no bids. Let's put him unsold. Let's put him back into the pool. Dobara leke aayenge in case anybody wants to get back and get that player without any competition of a bidding war. Chale, let's jump to the next player. It's going to be Zubair. Zubair is our next player and Pune Stallions come up with their paddle. That is going to be base price bid at 30,000 INR. Do we see any counter bids against Pune Stallions? As I say, going once. Pune Stallions for Zubair at 30,000 INR. Going twice. I do not see any paddles being lifted. This is their opportunity and they will take it away. Hyderabad, this is your chance to take it away from them. I don't see anything. Sold. That is Hyderabad not missing out the chance, and Pune Stallions getting a base price steal at 30,000 on Zubair. Congratulations, Pune Stallions. That is your player joining, which will make the squad a playing 6. Abhi bhi 2 और players बाकी है. Getting closer to every team, getting to their playing 8. चले अभी next player की तरफ बढ़ते हैं. Who is the next one in the lot? It's going to be Akshit. Akshit Tiwari. Base price 30,000 INR. The floor is open. Anybody going in for a bid can reach out to your paddle and lift it up and let us know. 30,000 INR. Bengaluru badges को अभी भी try करना है, but paddle दिखा थोड़ा. That's okay. Is there anybody? And Hyderabad Rhinos, before I could say anything, they lift their paddle. Base price 30,000 INR. They wanted to see अगर कोई और यहाँ पे लड़ने के लिए आएंगे. But as of now, nothing. As I say, going once for Hyderabad Rhinos at the base price. Akshit Tiwari. Can we say going twice as they have 30,000 base price? I do not see any paddles coming up. This should be the closure. Last and final call. No paddles coming in. Hyderabad Rhinos get the player at the base price steal deal. Akshit. Congratulations, Hyderabad Rhinos. आपका स्क्वाड अब 6 प्लेयर्स के साथ टोटल नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग द मार्की प्लेयर. 30,000 INR. Akshit Tiwari goes to Hyderabad Rhinos.
अगले कौन आने वाले हैं? Let's take a look at that. Next player up in our auction pool of category C is going to be Ajit. Ajit at the base price of 30,000 INR. Any bids coming in for Ajit at base price 30,000 INR? अभी भी 4 squads जैसे मैंने बोला था, Mumbai, Pune, Hyderabad and Chennai. Pune raise their paddle, that's going to be 30,000 INR. Pune up their paddle, that is 30,000 INR. That will make the 7th in case nobody else bids. Going once for Pune Stallions. Do I see paddles coming up from anybody else? As I say, going twice for Pune Stallions. Koi aur paddles nazar nahi aa raha hai. This is the last and final call in case you want to reach out. Sold to Pune Stallions at 30,000 INR. Congratulations, Pune. That will be a total of 7 players. अब आपको चाहिए आखिरी एक. सुखप्रीत पाजी, आप रुके पड़े हैं, बाकी सारे टीम बना के जा रहे हैं. 30,000 INR, Ajit, congratulations. You go to Pune Stallions. चले इसी के साथ let's bring the next player up on our screen. It's going to be Yash Raj Singh. Base price of 30,000 INR. Anybody coming up for a bid, you can lift your paddle and बोलते ही सुखप्रीत पाजी को मिल चुका है. It is 30,000 INR. Mumbai Grizzlies fight. They bring it 35. You're coming in with a bid. Yes, they say 40 is Hyderabad. They take it away from Hyderabad. 40 से सीधा 45. Chennai Falcons के पास at 45. 45,000 INR. Chennai Falcons वहाँ से 50 Hyderabad लेके आएगी. 50,000 INR. 50 से 55 because this is the last player they can spend everything. 55,000 for Chennai Falcons. 55,000 is where it stands. The current bid going once. Do I see anybody going in Mumbai? Are you going to be trying and attempting this? 55 going twice for Chennai Falcons. Last and final call. Chennai Falcons ka playing 8 ka last player. No paddles coming up. Sold to Chennai Falcons. Congratulations. That is going to be the last player being sold. Yash Raj Singh. And Chennai Falcons इसी के साथ अपना playing 8 for GEPL season 3 complete करती हुई नजर आएगी. Base price 55,000 INR का bid यहाँ पे Chennai Falcons जीतती हुई, and they will confirm the player Yash Raj Singh. Chennai Falcons get the last player at 55,000. Okay, let's move to the next player. Who is the next player? As Chennai Falcons also are going to be the squad, 5th squad to fulfill the playing 8. अभी बचा है सिर्फ 3 और squad. And starting it off what is going to be Rudra. Rudra Samal, Hyderabad, Pune and Mumbai. Chances for you, 30,000 INR base price. Any paddles? I do not see any paddles coming up. Going once. कोई अगर चाहता है Hyderabad, Pune, Mumbai, this is your chance to grab twice. I do not see last and final chance to place the bid. Unsold. Let's put him back into the pool. Alright, let's go to the next one. यहाँ पे देखिए बहुत नजदीक आ रहे हैं to get our playing 8 for all the 8 squads. Amazing 8. देखेंगे यहाँ पे कौन होने वाला है अगले team. With Asif coming up. Asif base price of 30,000 INR. Pune Stallions bring up their paddle. Base price of 30,000 INR. Hyderabad Rhinos increase that bid at 35,000. Hyderabad Rhinos have it, the current bid at 35,000. Do I see anybody raising the paddle? 35,000. Hyderabad Rhinos going once. Do I see a paddle from anybody else? Mumbai, you can jump into this battle. Pune, you can try it out. Going twice at 35,000. Last and final call in case there's a paddle that could be brought up. All done and sold. Finalized to Hyderabad Rhinos. Congratulations, Hyderabad Rhinos. You get the player at 35,000 INR. That's going to be Asif. They bid out Pune Stallions. Hyderabad Rhinos get the player at 35,000. Now you have a total of 7 players. एक आखिरी player चाहिए. 35,000 is what they get the player at. $35,000. Asif goes to Hyderabad Rhinos. Congratulations, that's the 7th player. चले अगले player को बुलाते हैं. Who is the next player? We are very close. I'm now excited कि playing 8 सबका होते हुए नजर आ रहा है. अब interesting जो actual है game के तरफ सब ध्यान देंगे. Now it's time to prepare strategies. But before that, some more players to be auctioned off. कौन होने वाले हमारे अगले player? Let's have him on our screens. It's going to be Bhupendra Patel. Bhupendra Patel. Base price of 30,000 INR. Any paddles coming up? Mumbai Grizzlies with a base price of 30,000 INR. They place it at. Do I see anybody else?
There is still a chance for Pune as well as Hyderabad. Base price 30,000 INR. Is this the player you're looking forward to, as it is going once for Mumbai Grizzlies? एक और chance रहने वाला है. Mumbai Grizzlies currently have it at 30,000 INR. Going twice. Last and final call in case there's a paddle coming up. Sold. Congratulations Mumbai Grizzlies. They get the player from category C. And इसी के साथ Mumbai Grizzlies, they make their playing 8 for GEPL Season 3. Congratulations Mumbai Grizzlies. Base price 30,000 INR steal. Awesome. Now with the last two teams left, Pune Stallions and Hyderabad Rhinos. Hyderabad Rhinos, आप category B के एक player के लिए उस वक्त भी इंतजार कर रहे थे. अब लग रहा है to make the playing 8 you're still looking forward to. But Pune Stallions, this time you have been a little left behind. आप थोड़ा पीछे रह गए, but I'm pretty sure आप जो player चाहिए उसी के ऊपर ढूंढ रख रहे. So with that, let's move to the next player से पहले पर्स के तरफ चलेंगे to take a look at how much is left that you both can bid for, because बाकी सारे teams का हो चुका है. And there it is, as you can see, right as now Pune Stallions stand at 30,000 INR. Hyderabad Rhinos are at 75,000. मतलब अभी के लिए advantage Hyderabad Rhinos के पास है. They have the better purse. They can outbid Pune Stallions, and इसी की वजह से Pune Stallions have been waiting that in case they get a steal, and यही होता है. It is not easy to get a steal deal at your last category C picks. चले, this is the purse remaining 75,000 and 30,000. So both needing one player, but Hyderabad having the better purse. चले, इसी के साथ let's move to see who the last two players out of this pool will be. Can we have the player on screen? Every other team has fulfilled. There's Delhi Sharks and Chennai. We already spoke about 10,000 they have. Bengaluru have 25. Mumbai have 35,000 INR. Who's the next player? And whichever team have completed, their purse remains as it is and it will not be used anymore. Hitesh is the next player up on our screens. Pune and Hyderabad. Auction floor open for you guys. 30,000 INR base bid. Mukesh with a nod. Do I see Pune Stallions? This is your chance in case this is the player. It seems like there is no bidding war coming in from Mukesh from Hyderabad Rhinos. Saurabh, it doesn't seem. Going once. Do I see a bid twice? We'll put him to the unsold. He will not be taken as of now. Hitesh will remain unsold. Let's move to the next player. Hitesh will remain unsold. Very crucial last picks. Saurabh, आपके ऊपर आप बहुत सोच रहे पता है, because आपके पास सिर्फ 30,000 है and you have to get the player. अगर वो हैदराबाद को पता चल गया, they might try to outbid you. That is the play, guys. यही होता है strategy bidding में. But चलिए, let's take a look at the next player, please. Can we have the next player जो आने वाले हैं हमारे auction pool से? Who is that randomized player जो हमारे auction pool में नजर आने वाला है? Who will be the last puzzle pieces? शुरू हुआ था 1 लाख के बेस प्राइस से, 60,000 पे आए कैटेगरी बी पे, एंड नाउ कैटेगरी सी, द लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी, हम हैं at 30,000 INR. Both these two teams need one individual player. वो player कौन है वो जरूर देखना पड़ेगा. Along with that, can we also take a look at the buys so far? अभी के लिए जो भी buys हुए हैं, even in from category C or some other categories as well, so that we can give कि अभी के लिए इतने purchases हुए हैं from teams. Yes, I think the major purse expenditure कहीं ना कहीं गुजरात वुल्फ से हुआ है, and मुंबई ग्रिजलीज especially because उन्होंने जेटा राम को बहुत पहले ही खरीदा था at 3,50,000. But with that, let's see if there's any very high end price sales coming in. In category C, we cannot go till there was a chance कि हम 1 लाख तक जा सकते थे, but then it would put you out of the competition in case you wanted to bid for somebody else. But Simha Reddy from category B is the highest, who looks at 1 lakh. एक दो और भी थे from category B we saw who went up 60-80,000 as well to follow. So where the competition grew in the bidding was in category B, जहाँ पे लोगों को देखना था, समझना था कि अपना पर्स कितना बचा है, because category A ended up making all of them spend a lot. चले इसी के साथ let's jump to our next player. It's going to be Amit Supekar. Base price of 30,000 INR, and instantly Pune Stallions, they want to get the player just like the last season back in the team. Both Pune and Hyderabad are having a face-off.
ये अगर दिख रहा है लोगों को, एंड हैदराबाद टेक इट अवे। वो एक स्मर्क नजर आया था, इविल स्माइल था कि ये होने वाला आउटपुट, दिस इज द रीजन, एंड दैट इज 35,000 putting Pune Stallions out of the race, and nobody else can bid for this. Going once, going twice, and it is going to be sold. Amit for Hyderabad Rhinos taking it away, and how crucial that purse was. Very nice find. इसलिए मैं सोच भी रहा था पुणे का जो प्लेयर है वो पहले आ जाएगा तो हाथ से चला जाएगा. Unfortunately, Pune do not get that player. Amit will be sold at 35,000 for Hyderabad Stallions. And congratulations, as you become our 7th team who make our playing 8. Hyderabad Rhinos. Chale, that is the last player that Hyderabad Rhinos needed to make their playing 8. One and last Pune Stallions aapka bacha hai. Let's see who the next player is, if that is the player that Pune Stallions is looking forward to. 35,000 INR is the price that they bought it at. That is the player that gets sold. Amit Supekar for Hyderabad Rhinos, the last playing 8. 35,000 INR. Even though there are a lot in the pool, the next one or the next few could be the last bid that can come from Pune Stallions. देखते हैं कि यही प्लेयर पुणे स्टैलियंस को चाहिए था या इज इट एन ऑल्टरनेटिव, बिकॉज एक तो मिस हो गया. लेट्स सी इफ दैट इज द प्लेयर फॉर पुणे स्टैलियंस. हु इज दैट प्लेयर, ये भी देखना पड़ेगा. लेट्स ब्रिंग अप ये, अब ये भी पूरा सस्पेंस है कि यही प्लेयर चाहिए कि नहीं. इट इज कीर्ति लाल एंड पुणे स्टैलियंस से यस वी विल टेक इट, दिस इज आवर फाइनल ऑप्शंस. एंड इसी के साथ कीर्ति लाल, देयर इज नो मोर काउंटर बिड्स दैट वी कैन सी गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस. पुणे स्टैलियंस, कंग्रेचुलेशंस, द फाइनल हैमर हैज स्ट्रक. And इसी के साथ the GEPL season 3 auctions have found their playing 8. Congratulations to all the 8 franchises. 8-8 करके wait किया था, अब हो गया है auction. Thank you so much. But before we end it, we have to bring back सरदार जी, जो आपको ये पूरा auction के बारे में बताएंगे. Oh my God! What an incredible day. जब हमने शुरुआत की थी, we had 8 franchises. We had 8 marquee players sitting here. Now we have 8 whole squads. I'm super duper happy. सब लोग बहुत excited लग रहे हैं. कुछ लोगों ने आखिर तक wait किया. Yes, I'm talking about Pune. I am talking about Hyderabad. इन दोनों ने जान के wait किया बहुत देर तक. But I think they are happy with the teams. Are you guys happy with your team? Okay. Are you also happy? Pune, are you happy with your team? पुणे बोल रही है रुक जाओ पहले हम देख ले एक बार हमने क्या बनाया, एक बार हम भी चेक कर ले. You know the best part, look at this, everyone is laughing for this one. The best part is आखिरी बिट के लिए दोनों की लड़ाई भी होती है. एक ऐसे हल्का सा 5 ऊपर चल जाए प्राइस मजा आ जाएगा, वो वाला काम चल रहा है. बट चलिए लेट्स हैव अ लुक, पहले देखते हैं कि जो टीम अभी बनी है कौन कौन किस किस स्क्वाड में खेले. लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑल द टीम्स, ऑल द प्लेयर्स, और फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं. ओके लुक एट दिस, चेन्नई फैल्कन्स, काफी बेहतरीन टीम यहां भी लग रही है. सुखप्रीत पाजी, दीपक जी को ले लिया, यहाँ पे प्रवीण भाई को ले लिया. काफी लड़ाइयां इधर भी हुई थी इस खेल में. यशराज सिंह इज आल्सो देयर, गौरव विश्वास इज देयर, मोहम्मद काविश इज देयर, सदाफ इज देयर, रतिकांत साहू पिछले बार बहुत कमाल उन्होंने भी किया था. प्रवीण वो भी आपको देखेंगे यहाँ पे. आई रियली वांट टू नो, चेन्नई इतनी बढ़िया टीम आपने बनाई है, एंड आई थिंक सबसे ज्यादा सॉर्टेड आप ही लग रहे थे पाजी. आपने शुरू से एक प्लान बना के रखा था, एंड आई थिंक विद दिस टीम द प्लान इज वर्किंग राइट. सर जो मैंने कल भी टीम सोची थी वही ऑलमोस्ट बनी है. बाकी सब ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, किसी को नहीं मिला कोई तो, लेकिन मैंने जो सोचे थे मुझे वो प्लेयर सारे मिल गए हैं सर. मगर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने लास्ट तक देखा इस पूरे ऑक्शन को होता हुआ, आखिरी बिट तक हमने देखा, कौन सी एक टीम आपको लग रहा है जो थोड़ा डगमगा सकती है? सर ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकता अभी, लेकिन जो मुझे सेकंड नंबर पे स्ट्रांग लग रही है वो कलकत्ता. सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी टीम बनेगी, लेकिन सुरजीत भाई ने काफी अच्छी टीम बनाई है. सुजीत भाई तो काफी सॉर्टेड भी थे, उन्होंने टीम अपनी बनाई, उसका ही वाज लाइक हो गया, 3 नाम लिखे उन्होंने और रख दिया कि मैंने अपना काम कर लिया. द सेम वे आप टिक्स लगा रहे थे, बट आपने जो टिक्स वाली बात की थी, क्या पूरी की पूरी टीम जो आपने प्लान की थी टिक लगाते हुए पूरी बन गई? जैसा सेम टीम बनाई है, आप चेक भी कर सकते हो, और कोई नाम नहीं मिलेगा आपको. लास्ट वाला वो भी सेकंड टायर से थर्ड में गया था इसलिए नहीं लिखा था वो, बाकी सारे नाम वही लिखे हैं जो लिए. बात तो सही है. आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर कविश एंड देन आई सॉ कि ऊपर कविश लिखा और वहां पे टिक किया, तो बहुत बढ़िया. एंड कांग्रेचुलेशंस, जो आपने एक्सपेक्ट किया आपने एकदम वैसी टीम बना ली है. ऐसे और बहुत सारे मार्की प्लेयर्स है कैप्टन जिनके साथ हम चर्चाएं करेंगे, एंड वी विल टॉक अबाउट दिस. बट इट्स टाइम टू सी द नेक्स्ट टीम. एक नजर डालते हैं अगली कौन सी टीम के ऊपर हम जाने वाले हैं, देन वी विल टॉक विद देम, विल हैव अ लिटिल कन्वर्सेशन, विल ट्राई टू टॉक कि हां क्या क्या प्लेयर्स उन्होंने प्लान किए थे, कौन से प्लेयर्स बने हैं. बट with all this, all I'm saying is कि अब टीमें सबने बना ली अपनी. Now it's time for the championship.
आपने इन सबको लड़ते देखा. There was a good bidding war. There was a good auction. But now it's time for the actual action. Now it's time for GPL season 3. But उससे पहले एक नजर बैंगलोर की टीम के ओर चलते हैं, देखते हैं कि बैंगलोर ने कितनी तगड़ी टीम बनाई है और कौन से प्लेयर्स पिक किया बैंगलोर ने. Mr. Manmeet, even smiling in the photo, he's always confident. चलते एक बार जल्दी से मनमीत बाजी के पास, जानते हैं उनसे उनके प्लेयर्स का प्लान और साथ में जानते हैं कि अब गेम प्लान क्या होने वाला है फॉर सीजन 3. So I am here with the marquee player, with the captain. हम बात करने वाला मनमीत पाजी से. पाजी, अगर आपको अपनी टीम को एक्सप्लेन करना हो, क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में फिर आप? अटैकिंग टीम जैसे मैंने सोची थी एग्जैक्ट वैसी ही मिली है. देखो आप सब नेम इसमें है, सभी जो मैंने सोची थी पूरे उसमें मिली है. क्या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से पाजी ने नाम लिखा ना उसके बाद सारे अपने नाम लिख देते हैं और सारे के करके टिक लगाए जा रहे हैं कि हाँ यही सोचा था. ऐसा तो नहीं हो रहा ना? आपने पहले सोचा था ना? पहले सोचा हुआ था, सभी देख सकते हो आप लिस्ट में. और मेरा सेम सवाल आपसे भी है, कोई एक टीम जो आपको लग रहा है यार ये ना थोड़ी वीक सी बन गई या ये ना थोड़ा डगमगा सकते हैं? मुंबई की. लो जी, सीधा नाम मुंबई का नाम आते दे दिया. तो एक नजर प्रोडक्शन टीम क्यों ना मुंबई की टीम पे भी डाले. लेट्स हैव अ लुक ऑन द टीम, देखते कि कैसी टीम बनाई है. बट उससे पहले एक बात की थी पाजी ने, सुकृत पाजी ने कहा था कि भाई कोलकाता ने अपनी टीम बना ली और बहुत सॉर्टेड टीम बनाई. तो चलते एक बार कोलकाता वालों के पास. लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट कि टीम बनाई कैसी है और फिर चर्चाएं करेंगे हम सुरजीत पाजी से. लो जी, सुरजीत सिंह की भी टीम आ गई है और खिलाड़ी तो यहाँ भी सारे तगड़े लग रहे हैं. तो चलते एक बार बात करते हैं बाजी से. और स्पेशली गोल्डन कुमार, सबसे पहली हमारी जो बड़ी बिड आई थी वो गोल्डन कुमार की तरफ आई थी. एंड देन फिर उसके बाद हमें बिड्स बढ़ती देखी. तो बाजी अपनी बड़ी बिड यानी गोल्डन कुमार से लेके अपनी पूरी टीम को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो कर दो. मेरे पास हर रोल मतलब रोल की मुझे लिस्ट दी हुई थी, क्या क्या रोल के लिए आपको क्या क्या प्लेयर लेने हैं. तो हर रोल के लिए मेरे पास 3 प्लेयर थे. अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब सॉर्टेड था पूरा और वो हो गया. तो यहाँ पे बाकी लोग आखिरी तक बिड कर रहे हैं, जहाँ पर बाकी एवरीवन वाज फाइटिंग टिल द लास्ट मंगाए. आपको ऑलरेडी आपने बना कर रखी टीम, तो आपने जो प्लान किया था कि मैं बस बाकियों की बिड खराब करूंगा थोड़ी सी, वो प्लान भी काम हो गया? हाँ हो गया कुछ हद तक, लेकिन मुझे खराब करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ही अपने काम खराब कर लिए. तो लगे हाथ फिर कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा काम खराब करा है वो भी जान लिया जाए. मुझे ऐसा लग रहा है मुंबई थोड़ा लेट हो गई है, मतलब बिड करने में काफ़ी अच्छे प्लेयर चले गए उनके हाथ से. और मैंने बिड इसलिए किया था गोल्डन पे, मुझे लगा था ये 3.5 तक जाएंगे गोल्डन पे, लेकिन 3 पे ही रुक गए. मतलब उनके दिमाग में ऐसा था कि बस पीछे 5 लाख ही बचेगा, उसमें 7 प्लेयर लेने हैं. तो ऐसा कुछ चलता है माइंड में, कैलकुलेशन शायद नहीं बिठा पाए मेरे हिसाब से. बाकी उनका जो कैलकुलेशन है, उनकी जो स्ट्रेटजी है उनको पता है. भाई कह रहे हैं कि हमने 2 लोगों ने मिलकर कैलकुलेशन बिठा ली, वहां 4 लोग बैठा के वो कैलकुलेशन नहीं बिठा पाए. मिलाकर भी गणित कमजोर कैसे रहेगी? मगर चलिए उससे पहले देखते हैं हमारे पास अगली टीम कौन सी है. एंड देन विल टॉक अबाउट दैट टीम, विल टॉक टू द मार्की प्लेयर आल्सो. एंड द नेक्स्ट टीम वी हैव इज दिल्ली शार्क्स. तो बगल में बैठे हैं मेरे. चलते जल्दी से एक बार और जाते हैं कि दिल्ली शार्क्स से मार्की प्लेयर अक्षत जी, टीम आपकी शुरुआत बहुत तेज हुई, मिड में आप थोड़ा गायब हो गए थे टीयर बी पे, टीयर सी पे आपने वापस कम बैक कर लिया. तो क्या प्लानिंग थी इसकी? सर मेरा फोकस हमेशा रहता है कि एक बैलेंस टीम बनाऊं और इस बार भी एक काफ़ी बैलेंस टीम बनी है और अच्छी टीम है सर. जो सोचा था वैसे ही प्लेयर मिले हैं सारे. और लग गया था अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा करता है ना, लेट्स प्ले अ गेम, आप मुझे 2 टीमों का नाम बोलना, एक जो बहुत स्ट्रांग है और एक जो बहुत वीक है. बताना मत कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है, बस आप मुझे 2 टीमों का नाम दे दो. नहीं सर ऐसा अभी कैसे हो सकता है, सारे प्लेयर अच्छे हैं, हर टीम ने अच्छे प्लेयर लिए, अब जो जैसा खेलेगा वो ही करेगा. चलिए लगता है दिल्ली बहुत सेफ खेलने वाली है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, ठीक है. इतनी चर्चाएं हमने की हैं गणित की, जब सुरजीत पाजी ने भी कहा, तो चलते जल्दी से एक बार मुंबई के खेमे में. पूरा काफिला आया है मुंबई का, तो यहाँ पे कौन बात करने वाला है? क्योंकि 4 लोग मुझे दिख रहे हैं. बट उससे पहले एक नजर टीम पे डालते हैं देवेंद्र पाजी की जो टीम, और यहाँ भी एक बहुत हैवी बिड गई थी जेठाराम की. और हमने चर्चा भी की थी इसकी कि उस एक बिड के बाद थोड़ी दिक्कतें हुई थी. तो पाजी क्या हुआ था उस एक बिड के बाद, और बाकी लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मुंबई थोड़ा फंस गई? सर टीयर 1 में थोड़ा लग रहा था भी टीम अच्छी नहीं बनेगी, बट टीयर 2 और 3 हमने अच्छा खेला. एंड मुझे लगता है सुरजीत भाई और मनमीत भाई की ना थोड़ी नज़र कमज़ोर है, इन्होंने प्लेयर देखे नहीं अच्छे से. तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से अभी उन्हें दिखा देंगे अपने सारे प्लेयर्स की पावर? जी बिल्कुल, लीग में देखेंगे, इनको दिखाएंगे अपना गेम. तो अगर आपको पिक करना हो कौन सी टीम आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कमजोर बनी है? हैदराबाद. लो जी, सीधा ही हैदराबाद की बात हो गई, उनके ओर चलेंगे. बट उससे पहले एक नजर डालते हैं नेक्स्ट टीम कौन सी है, क्योंकि मुंबई से बात की तो पुणे की तरफ भी चल लेते, एक बार एक नजर पुणे की तरफ भी डालते हैं और देखते हैं कि भाई क्या टीम बनाई है पुणे के जो स्टैलियंस है हमारे.
सौरभ जैन, उनकी बनाई हुई ये टीम, और यहाँ भी आपको नेताजी दिख रहे हैं। पिछली बार बहुत कमाल का ये भी खिलाड़ी था। और साथ में अगर हम बात करें तो कुछ बड़ी बिड्स तो इनके खेमे से भी आई हैं। सागर भाई की बिड के पीछे तो काफी लड़ाइयां हुई हैं, तो थोड़ा बताइए, और ऐसा क्यों कह रही है मुंबई की टीम आपकी थोड़ी डगमगाती सी बनी है? वैसे मुंबई ने कहाँ बताया कि टीम कमजोर बनी है हमारी, और वो तो दिख ही रहा है ना कि मेरी जो टीम है उसमें सागर आंजना है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है अभी फिलहाल आरसी का, वो मेरी टीम के अंदर है। और बाकी जो प्लेयर आए हैं वो भी दोनों सीजन के एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो मेरे को लगता है मेरी टीम भी काफ़ी अच्छी बनी है। आई थिंक पिछली बार भी मुझसे पूछो तो एक बहुत स्टेबल टीम की बारी थी, तो तब भी आपकी टीम बहुत तगड़ी थी, बट इस बार आई बिलीव दे हैव समथिंग एल्स इन द माइंड एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। बट अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक नजर गुजरात की टीम के ऊपर डालते हैं, देखते हैं पहले कि प्लेयर्स कौन से, फिर उसके बाद चर्चाएं करेंगे। और लीजिए, गुजरात की टीम आ चुकी है, जेडी साहब, और एक बड़ी बिड तो हमें यहाँ भी दिखी है। सबसे कमाल की बात है कि बहुत देर से शुरुआत की जेडी भाई ने, जब सबने कहा था कि अब तो दिक्कतें हो गई, बट फिर जेडी भाई ने मुझे अपनी लिस्ट दिखाई और जो प्लेयर्स प्लान थे लगभग तो वो ले लिए, एक नहीं आ पाया था। ये देखो ग्रुप है, क्रिएट किया हुआ है 24 तारीख का, जिस दिन स्विस खत्म हुआ था। सिर्फ एक प्लेयर मेरा मिस गया, जेठू भाई, बाकी सारे के सारे प्लेयर मिल गए मुझे। अब मैं नंबर तो नहीं दिखा सकता, बट उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल सच है। पूरा ग्रुप बना हुआ है, प्लेयर्स की लिस्ट डाली हुई है कि कौन से प्लेयर्स आएंगे। और आप सोचिए कोई कैप्टन कितना कॉन्फिडेंट हो सकता है कि उन्होंने जो टीम बनने वाली है उसका ग्रुप पहले बना के रख लिया था, कि बता देता कि भाइयों तुम मेरी ही टीम में खेलने वाले हो। बट चलिए लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं कि अब अगली टीम कौन सी है, और फिर उनके मार्की प्लेयर से थोड़ी चर्चाएं करेंगे। और वो है हैदराबाद राइनोस, यानी हमारे मुकेश भाई की टीम। और देखिए पैसों की चिंता तो मुकेश भाई करते नहीं है, अच्छी खासी टीम इन्होंने बना ली, थोड़ी लेट बनाई है, आखिर तक बिडिंग पे गए हैं पुणे और हैदराबाद। बट मुकेश भाई, जब कहा गया मुंबई की तरफ से कि टीम आपकी थोड़ी कमजोर है, एक तो मैं इसका जवाब चाहूंगा, और दूसरा चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें अपनी इस पूरी टीम का कॉन्सेप्ट। देखो मुंबई का जवाब भी, मुंबई को सचिन चाहिए था, वो जो उन्हें नहीं मिला, तो उनको लग रहा है हमारी टीम कमजोर है, उनको बोलेंगे कुछ और नहीं है करके। तो देखिए अभी तो समय है जीपीएल सीजन 3 शुरू होने में, एक्चुअल जो आप फाइट्स देखेंगे ऑक्शन से मुझे लगता है ऑलरेडी शॉट्स आर टेकन। बट अगर आपको एक सजेशन देना हो मुंबई को कि हैदराबाद के साथ खेलो, तो ये चीज तो सोच के खेला, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अपना रन रेट बचा लेना अपना मैच में। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और पुणे ने लास्ट बिड रोकने का भी ट्राई किया था, ऐसे 5 ऊपर किया था। पुणे को ऑप्शन ही था और कोई 30 के बाद, वो लोग को प्लेयर सही दे, अमित बेस्ट ऑप्शन था। मेरे पास ऑप्शन में रॉय था, अंकित रॉय और अमित था, मेरे को अंकित रॉय नहीं मिला, अमित ले लिया मैंने। See, this is again the mastermind कि आपको पता है कि क्या क्या बाकी और आप क्या क्या कर सकते हो। So again it is all about the strategies, it is all about the planning, and I think सबने अपनी अपनी टीम बना ली है। तो मुझे लगता है कि जब इतनी बढ़िया बात होगी, एक बार तालियां आप लोगों के लिए भी हो जानी चाहिए भाई, इतनी मेहनत आप सबने की, हम बहुत देर से बैठे हैं, सबने टीम्स बनाई अपनी। बट एक नजर डालते हैं सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, एक ग्राफिक वो भी देखते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है और खर्चा किसने सबसे ज्यादा करवाया है। तो जी हाँ, ये हमारे एक्सपेंसिव प्लेयर्स हैं। जेठा राम मुंबई के पास वो गए हैं 3.5 लाख में, सागर अंजना फॉर 3.4 लाख। अगेन एक और बहुत ज्यादा हेवी बिड गई थी यहाँ पर, पुणे की तरफ गए हैं सचिन चवन जो गए हैं राइनोस के पास हैदराबाद। एंड देन इसके बाद वी हैव गोल्डन कुमार, वी हैव सौम्य अधिपता, और साथ में उसका फिर आपको देखेंगे फनीकरण। तो ये वो कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत खर्चा करवाया हमारे इन सारे के सारे मार्की प्लेयर्स का। बट आई थिंक विद दैट हम बात करते हैं कि हमारा क्रिकेट है, ये नई जनरेशन का क्रिकेट है, और ये हमारे नए जनरेशन के स्टार्स हैं। ये सबसे बढ़िया खेलने वाले वो प्लेयर्स हैं जिनके लिए बिड्स भी बहुत हाई लगी है। बट चलते एक बार जल्दी से और ओवरऑल ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे इस पूरे ऑक्शन के दौरान। और अगर आप देखें तो 56 प्लेयर्स वर सोल्ड एंड टोटल स्पेंड हुए हैं 62.75 लाख। खर्चा तो बहुत हेवी हुआ है यहाँ पर। एंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर श्योर इज जेठाराम विद 3.5 लाख। अमेजिंग, एक बार तालियां भाई जेठाराम के लिए भी और आप सबके लिए भाई, बहुत ज्यादा खर्चा किया आप लोगों ने। मैं सोच रहा हूँ कितना कट मुझे मिलने वाला है इसमें से। बट विद दैट बीइंग सेड आई थिंक इट्स टाइम टू रैप द शो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, क्योंकि ये है जीपीएल सीजन 3, इट्स बिगर एंड बेटर देन द प्रीवियस वन, और ये बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है व्हेन वी आर स्टार्टिंग द मैच। बट बिफोर दैट थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, ऑल आवर पार्टनर्स। जेट सिंथेसिस presents GPL Season 3, official partner BY Lenscard, paid on Real Cricket, strategic partner Sky Sports and Global Music Junction. Thank you so much everyone for tuning in. ये हमारा क्रिकेट है
और ये नई जनरेशन क्रिकेट है, ये नई जनरेशन रेडी है. चैट पे आप में से बहुत सारे लोग आए थे एंड वी वांट यू गाइस टू बी देयर ऑन द प्लेइंग डेज आल्सो सो दैट यू कैन सी ऑल दिस एक्शन. बट आज के लिए इतना ही. मिलेंगे आपसे बहुत जल्द सीधा एक्शन के साथ, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्शन टू बिगिन. गुड नाइट, शब खैर. जितना जल्दी हो सके आउट करना पड़ेगा, बट ये ऑफ लेके इस दूसरे ओवर को, बट अगली गेंद हवा में गई है, गेंद दूर गई है, गेंद